Om Hu Akbar, Om Hu Breaking Akbar. live of Maulana and Mufti on my channel, ExMuslim Sahil Official. Stay tuned. अस्वीकरण डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए ताकि आज का सिलसिला हम शुरू कर सके। ट्रीना जी ने कंफर्म किया है, आ रही आवाज। साहिल जी, थैंक यू सो मच। प्लीज परपिकेशियस माइंड, थोड़ा डिफिकल्टी होती है आपका नाम लेने, सो मच। और कबीर साहब भी है, भोसले फैमिली साहब भी है, सलमा गिलानी जी भी है, राधिका जी भी है, सचिन मेहता कह रहे हैं वॉइस आ रही है बॉस। श्रेयास भाई कह रहे हैं आवाज क्लियर है साहिल भाई। थैंक यू सो मच एवरीवन। जुम्मे की रात है और न्यू ईयर भी आने वाला है। ये साल खत्म होने वाला है और आप लोगों ने देखा कि ये जो पूरा मंथ है हमने मोस्टली मुर्तदों की कहानियों को कवर किया है। और जो इस साल की लास्ट स्ट्रीम है, इस साल की लास्ट स्ट्रीम, उसमें भी हमने एक मुर्तद को दावत दी और वो मौजूद है। इनको हिंदी नहीं आती है, हिंदी इनकी लैंग्वेज नहीं है, तो हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हम अलग अलग रीजन से अलग अलग एक्स मुस्लिम्स को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी का जो मकसद है वो एक ही है कि इस्लाम की हकीकत लोगों को बताना। और सबके नज़दीक ये एक चीज़ मुसल्लम है, कॉमन है, कि इस्लाम जो है वो इंसानियत के लिए नहीं है। अगर दुनिया में तो इतने सारे लोग जो इस कल्ट को फॉलो कर रहे हैं जाने अनजाने में, जिनको इस्लाम की हकीकत नहीं पता है, उन तक ये पैगाम पहुंचाना है भाई कि तुम्हारे मुल्ला मौलवियों ने तुमको किस तरीके से धोखा दिया हुआ है और तुमको जानवरों से बढ़कर वो नहीं समझते। जैसे जानवर को जो चरवाहा होता है वो जानवरों को अपनी मर्जी से जहां लेके जाना चाहता है उस डायरेक्शन में लेके जाता है, उसी तरीके से मोमिन हजरात को इनके मुल्ला मौलवी इस्लाम को ढाल बनाकर अपने यानी अपने तरीके से उनको लेके जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो भाई लोग, पहली बात तो ये कि चूंकि ये स्ट्रीम इंग्लिश में होने वाली है और इंग्लिश मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, हर किसी को मालूम है, तो आप में से कोई जो, इंग्लिश तो मुझे भी समझ में आती है, लेकिन वो जो बाहर वाले होते हैं ना, उनकी इंग्लिश इतनी स्पीड में होती है कि कभी कभी मेरे दिमाग के ऊपर से निकल जाती है। ठीक है, तो आप में से कोई अगर स्ट्रीम में आना चाहता है, यानी अगर मुझे कभी इनकी बात समझ में नहीं आई, तो आप मुझे हेल्प कर सकते हैं कि भाई बंदा बोलना क्या चाह रहा है। तो कोई आना चाहता है तो मुझे फटक से यहाँ पे बताएं। आपको बस स्ट्रीम में रहना है, मैं जब आपको बोलूंगा तब मुझे आपको जो है मुझे हेल्प करना है। कोई है, कोई एक जन जो अच्छे से इंग्लिश समझ सकता है, यानी फास्ट, जो कोई अगर जो वेस्ट वाले जिस तरीके से बोलते हैं वो कोई समझ सकता है? ओके, कोई एक जल्दी से, किसको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है? हुज्जत अल काफरीन साहब, आप आना चाहते हैं? ठीक है, मैं लिंक दे रहा हूं आपको, और कोई नहीं जुड़िएगा। हुज्जत अल काफरीन साहब, यार सब लोग, मुझे पता है बहुत से लोगों को अच्छी इंग्लिश आती है, लेकिन स्ट्रीम में मैं एक ही को ले सकता हूं, तो हुज्जत अल काफरीन साहब को मैं ले लेता हूं। लिंक शेयर कर रहा हूं, सिर्फ हुज्जत अल काफरीन भाई जुड़े, बाकी और कोई नहीं जुड़े। ठीक है, ये मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, जल्दी से आ जाए, फिर मैं गेस्ट को भी ले लेता हूं। ठीक है, बल्कि मैं ले ही लेता हूं गेस्ट को। लिंक आया क्या आप लोगों के पास? ये लीजिए, फिर से मैंने शेयर किया है, आ गया लिंक। हुज्जत अल काफरीन भाई, आप जुड़ जाएं। ठीक है,
और कोई ना जुड़े तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द स्ट्रीम. So today we have with us a very dynamic, young and handsome Murtad, Apostate Aladdin with us on our channel. Welcome to our channel, Apostate Aladdin. Thank you very much. Thank you for having me here. Aap kaise ho? Are wow. No, I'm messing with you. I do not understand That's so the language, good. but yeah, no, thank you for having me. I'm happy to be here. And as you've told the audience, of course, I speak English as a second language, Arabic as a first language, so it's difficult for me to follow some of your videos or the comments. But I'm looking forward to this opportunity to get to know you better. That's good. So first of all, what you ask, आप कैसे हो? That means how are you? So Yeah. I'd like to answer. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चंगा हूँ, मस्त हूँ. Apostate Aladdin, since English is also not my first language, I do understand English. I can speak English, but since this is not my first language, and possible that I may not be able to comprehend some of the things which you may say. So for my help, I have one more person who is joining with us. He'll be with us only when I ask him, what exactly you said, which I did not understand. That time he'll help me. I hope it's fine with you. Sure. Yeah, that's fine by me. Okay. हुज्जतुल काफिरीन साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका. अनम्यूट कर ले. थैंक यू साहिल भाई, जब भी आपको आवश्यकता होगी आप मुझे बोलिए. Thank you so much. Thank you so much, हुज्जतुल काफिरीन साहब, for joining. नोटी राजेश साहब और कुंगफुंग पांडा साहब, आप लोग अभी छोड़ दीजिए. हुज्जतुल काफिरीन साहब मेरे साथ है. अच्छा हुज्जतुल काफिरीन साहब, अगर मुझे नहीं समझेगा ना, तब मैं आपको बोल दूंगा, तो आप मुझे बता देना फिर. ठीक है? Sure. Cool. Okay. So, Apostate Aladdin, once again, welcome to our channel. And I would request all my viewers who are watching now to subscribe to Apostate Aladdin's channel. He's doing a very great job. And the best thing about him is Arabic is his first language. Okay. So, no mullah, no maulvi, no mumin can trick him on the meaning of the verses of Quran. We have already seen, हमने सबने देखा है कि बहुत से बार जो मुल्ला मौलवी हजरात होते हैं वो किस तरीके से हेरा फेरी करते हैं माने में, मीनिंग में. तो जो अरेबिक जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है उनके लिए ये इशू नहीं होता, उनके सामने ये चालाकी नहीं चल सकती है. उनको कॉन्टेक्स्ट और वहां पे क्या लिखा है, उस वर्ड का क्या मतलब है, उनको बहुत अच्छे से पता होता है. ठीक है. अच्छा, एक चीज ये यार, देख रहे हैं सब लोग, जरा वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, और अपोस्टेट अलादीन के चैनल को भी शेयर कर ले आप लोग, ताकि आप जैसे इससे पहले जितने एक्स मुस्लिम्स आए हमने उनको प्रमोट किया, एंड दे गॉट अ वेरी गुड सब्सक्राइबर बेस थ्रू आवर चैनल. जैसे लास्ट टाइम पे अवेज भाई आए थे, उनके कुछ 11,000 सब्सक्राइबर हो गए 6,000 से. सो ही गॉट सम 5,000 सब्सक्राइबर फ्रॉम आवर चैनल. Similarly, Apostate Aladdin has come to our channel, and wait, I want to make something clear before people go and subscribe. I would actually advise them to wait wait till the end of the conversation and see if they would like to subscribe before going now, because I just want to make sure that they understand where I'm coming from, and they do to some extent want to see more of that before they decide to follow. That's so kind of you, Apostate Aladdin. Thank you so much. Okay, अच्छा, कोई लिंक पूछ रहा है तो भाई पिन कमेंट में लिंक आपको मिल जाएगा अपोस्टेट अलादीन का, वहां से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. सो अपोस्टेट अलादीन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, in the sense, how was your family, how you were raised, what is your qualification in if you want to share with that, and especially how much you learned about Islam, and till the time you were in Islam, what was your life? How was your life? So I'll try to answer some of these questions, but feel free to highlight a specific question if I forget it. So I want to emphasize that I think throughout my journey as an ex-Muslim YouTuber, what has been more important to me, that I think gives more value to my channel, even more important than my understanding of the Arabic language, which is important,
is my intention and ability to listen to people I disagree with. And I think that has gotten me much further than just my understanding of the Arabic language. But to answer your question about my background, I am from an Arabic speaking background. I'm from an Arab country. I don't specify which one for safety reasons, of course. But I grew up in Saudi Arabia. I grew up surrounded by Islam. I learned Islam from a very young age because my family cared about the religion, and so did I. I don't have any special qualifications to criticize Islam per se, but I don't think that anyone needs special qualifications to criticize Islam. I think, or to have a discussion about it. I think that I was in a unique position to be able to soak in the religion for many of my formative years and live through it. Apostate Aladdin, Yeah. is it okay if I interrupt you in between? So, let me tell you one thing. All our audience, all our viewers are, not English speaking Sure. viewers. So what I'll do, whatever you say, I'll try to also summarize that, in short, what you're Mhm. trying to tell the people so that even they can comprehend what you're telling. Otherwise, it doesn't make sense, for them to listen to you. So, I'll stop you in between and I'll summarize to them what you are telling. भाई लोग, अपोस्टेट अलादीन भाई कह रहे हैं कि वो सऊदी अरेबिया में पले बड़े हैं, और सऊदी अरेबिया में रहते हुए उनके जो फैमिली वाले थे वो चाहते थे कि ये रिलीजियस रहे, इस्लाम को फॉलो करे, तो उस हिसाब से उनकी टीचिंग हुई है। ये कह रहे हैं कि इनका कोई मदरसे से ऐसा कोई डिग्री नहीं है इस्लाम को क्रिटिसाइज करने के लिए, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं ये कि इस्लाम को क्रिटिसाइज करने के लिए या इस्लाम को समझने के लिए आपको कोई ऐसी फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं है। जितना आप उसको समझते हो और पढ़ते हो उतना ज्यादा आपको उसके बारे में पता चलता है। यस अलादीन, प्लीज गो अहेड। Sure. Yeah. So as I was saying, I grew up with Islam in my life as a very important part of my life. So even though from a very young age I had questions and critical thoughts about the religion, they weren't doubts at the time because I couldn't conceive, I couldn't think that it would be possible for Islam to not be true. As someone who grew up surrounded by it, it was my entire life. So it did cause me a lot of confusion and internal conflict. But it was later in my early 20s, that's when I started to really dig into the religion. And eventually I left it when I realized that it is possible for the religion to not be true. So even though I had doubts from a very young age, it took me a long time to look into them to make sure that I am not misled by some, by shaitan or by someone who's trying to make up things about Islam. So it took me a long time to get to where I am today. ओह दैट्स ग्रेट। ये कह रहे हैं कि भाई बचपन से ही, यानी बहुत यंग एज से इन्होंने इस्लाम का मुताला शुरू किया और इनको काफ़ी सारे डाउट्स भी आते थे, और यहाँ तक इनकी जो जर्नी है पहुँचने के लिए उसमें काफ़ी वक्त लगा है। ठीक है अलादीन, माय क्वेश्चन टू यू इज, were you offering, I mean, how seriously you are taking religion? Because if you're following Islam, you have to offer prayer, salah, 5 times in a day. So were you that religious that you were offering 5 times salah on time when you were Muslim? When I was a Muslim, things fluctuated. I tried to stay on 5 prayers a day, and that was my ideal. And in my family, that was what was expected. There were phases in my life where I would not pray on time and maybe pray at the end of the day, or maybe skip prayers for a day, for like half of the prayers for a day because I was busy with school, and then feel very guilty about it. But it was always very important in my life. So even when I wasn't praying every prayer on time, I felt the need to be praying every prayer on time. So that guilt feeling was always there whenever you used to miss the prayer on time, and you used to, do it on the later part of the day. Yeah, I mean, that was ideally what I would do, is pray it on time, but if I can't, then pray it later in the day. But there were times in my life where I didn't catch up to these prayers, and it felt like a huge debt that I eventually would have to pay. So I was always terrified of dying before I can pay off my debt of all the prayers that I didn't pray. This is the problem with
the all religious Muslims, they have the fear of punishment in barz, qabr, and after that in akhirah, Allah will ask you take account of all the prayers which you have missed. So that fear is with most of the Muslims who follow Islam and who are religious, right? I mean, I try to not say things very confidently to say that I know most Muslims think one way or another, but I can imagine that most people who are religious, most Muslims who are religious, will have the fear of hell, of course. And if you don't pray on time, you are closer to going to hell. So it makes sense that most religious people are very afraid of what could happen if they don't follow Islam. Can you tell us what is the reason behind this? I mean, why people are so afraid if something goes like they are not able to offer the salah? What is the reason why they are so afraid? What do you think about that? Is it because of the scholars who have put this, or is it because this is how it has been designed by the Prophet? What do you think about this? I don't know to this very day. I don't think anyone can know what the Prophet intended, or if he actually said all of these things, or if he was just a man who said some of these things and then he died and then other people came after him and added to his words. I have no way of telling any of that, but I know that the way that Islam is taught and the way that I mean, it's not just because of how sheikhs teach it or imams teach it to people. Some of the material, like some of the hadiths, they terrify people of missing prayers, and they terrify people of the idea of hell. And I think it makes sense. If you believe in heaven and hell, and you believe in Islam, and you believe that the Prophet said certain things, I think it makes perfect sense that you'd be terrified of hell. And if anything, I feel for those people, because I used to be one of them. And even if you didn't used to be one of them, I still feel empathy for them. So I understand why Muslims are terrified of hell, or a lot of Muslims are terrified of hell. Okay. So this is what your feeling was, and you had the feeling of fear for not offering salah on time. Then what made you think about seeing Islam critically, and what were your thoughts and what you understood from that, and what were the reasons, how it started, and the stage you are, what happened exactly? So there were so many things that seemed suspicious or didn't make sense from a very young age as I was learning about Islam. But like I said, I didn't consider that these things could possibly be wrong. I just thought that I am not understanding it properly. But the thing that really stuck with me from a very young age was how the idea that people who don't believe in Islam are going to hell. They won't be tested on whether or not they're a good person before they go to hell. If they've heard of Islam properly and they don't accept it, they're not convinced by it, then they deserve to be punished. And that never sat right with me, because even from a very young age, I was able to conceive, to understand, to hypothesize that maybe someone might not be convinced of Islam, not because they're a bad person, but they're just not convinced. And Islam doesn't leave much room for people who are not convinced. Islam makes it seem as if, or at least the way that I was taught Islam, and the way that I still, the way that I see the fatwas are today, Islam does not accept that someone can be an honest person or a sincere person and hear about Islam and read about it and not accept it. And that doesn't make sense to me. And I also had issues with the idea of predestination and free will. How can Allah write everything that will happen and determine it and know about it, and also people have free will at the same time? And God knows that most people are going to hell. Most people are not Muslims. So I had issues with a lot of these larger picture questions that did not fit within the Islamic narrative itself. How can Allah be wise and merciful, but also be so vindictive? So yeah, that was just the beginning of it. If I talk to you on behalf of Muslim,
the issue that you had, the understanding of free will and destination. So Muslims say that because we do discussions with Muslims every week. So if we bring this kind of issues, they say that, it's not that Allah has written something and what He has written we are doing. They say that Allah was knowing that we will do this, and that's the reason He has written this. So how you'll answer this question to them? Sure. So it depends. There are Muslims who actually believe that Allah wrote things down and determined them to happen that way. There's some precedent in the hadith for that being the way that it's happening. But even if we ignore that, if it's just about Allah knowing what's going to happen, not determining it, then first of all, then Allah has no control over what happens in that case, because God is just observing what is about to happen outside of His control, which I don't think makes sense. But also, even if it's just knowledge about what will happen in the future, I think God would have more empathy and understanding, especially if He knows the results of this test. If He knows that most humans on earth are going to hell, and He knew that before creating humanity, and He knew what to do to avoid that, then it doesn't make any sense that a merciful and wise God would actually do that. So that's how it works in my head. And again, I'm open to the possibility of it being wrong and Allah being real at the end of the day. But I think that Allah would understand this confusion and would understand why someone might not be convinced by the arguments. And there's no room for that in Islam. Okay. हुज्जतुल काफरीन साहब, अगर मैं थोड़ा समराइज कर देता हूं, अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो आप ऐड कर देना. श्योर, ठीक है साहिल भाई. अच्छा, ये अपोस्टेट अलादीन साहब को जो मेजर डाउट आया था वो फ्री विल और तकदीर का जो मसला था, इन्होंने उस बारे में सोचा. तो इनको ऐसा लगता है कि यार अगर मतलब ये एक कॉन्ट्रडिक्शन जैसा है कि आपकी किस्मत तकदीर लिख भी दी गई है और फिर ये भी कहा जाए कि आपको फ्री विल है. तो इनके नज़दीक ये कह रहे हैं कि ये सेंस नहीं बनाता है. तो मैंने इनको पूछा कि भाई, अगर आप एक मुसलमान अगर इनसे बात करे तो वो ऐसे जवाब देगा कि अल्लाह ने लिखा, इस वजह से मुसलमान नहीं कर रहे, बल्कि इंसान नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह को मालूम था कि इंसान ऐसा ऐसा करने वाला है, ऐसा ऐसा होने वाला है, इस वजह से अल्लाह ने चूंकि उसको पता था, उसकी नॉलेज में था, इस वजह से उसने ये चीज लिखी. ये मैंने इनसे सवाल किया. तो ये कह रहे कि फिर भी ये सेंस नहीं बनाता कि इंसानियत को लाने से पहले, इंसानों को बनाने से पहले, अगर अल्लाह को पहले ही पता था कि उसके बंदे जो है, अक्सरियत मेजॉरिटी जो इंसान है वो जहन्नम में जाने वाले, उसको ऑलरेडी पता था, और उसके बावजूद भी वो दुनिया बना रहा है और उसको सही करने के लिए कुछ कर नहीं रहा है. तो इनके नजदीक ये सेंस नहीं बनाता. ये इनके नजदीक जो है वो एक इलॉजिकल चीज है. हुज्जतुल काफरीन साहब, और कुछ इसमें ऐड करना है? साहिल, मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा. उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी भगवान इतना असंवेदनशील नहीं हो सकता है कि बिना किसी को जज किए सीधे दोज़ख में डाल दे. और उन्होंने ये भी कहा कि यदि इस्लाम का भगवान एग्जिस्ट करता भी है तो उसमें इतनी संवेदनशीलता जरूर होगी कि यदि वो मरने के बाद उनके पास जाता है तो वो उनसे कन्विंस हुआ कि वो उनकी बात मान लेगा कि जो लोग इस्लाम में नहीं आए थे उनके वो इस्लाम से कन्विंस नहीं हुएंगे. तो उन्होंने एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने एक विंडो छोड़ा है. यदि इस्लाम का खुदा होगा भी हाइपोथेटिकली, तो उसमें इतनी संवेदना होगी कि वो जो कुफार के जो डिस आर्ग्यूमेंट्स है वो उसको भी स्वीकार कर ले. हाँ, बट Aladdin, the room that you have left, that maybe even if Allah exists, He will listen to your argument. But is that option available for Muslims? I mean, does Islam give this option that Allah will listen to your argument why you not accepted Him, associated partners with Him, since they did not find it logical? Is there any room for this for Muslims or human in Islam, that they can argue with Allah, this is the reason why I did not accepted Islam? Because as far as I know Islam, you do not have such kind of option. You have to accept oneness of Allah. You have to accept
the prophethood and messengership of Prophet Muhammad? Is there any room as per you? And what basis you have that? No, the way that I understand it, I don't think in the Islamic narrative there is a scenario where I could explain things to Allah and then he would change his mind. I think there might be scenarios where, you know, Islam describes people like me as pleading to God and saying, I wish I did things differently and I please forgive me. But I don't think it ever describes a situation like what I'm describing. But the way I think of it is, for me, it's inevitable. And for many people like me, it's inevitable. Because once I have the realization that Islam doesn't make sense to me, if I were to pretend that Islam made sense to me, if I were to pretend to pray and do all of these things just in case Allah is real, then Allah will not be tricked by that. Allah knows what's in my heart. So at the end of the day, I will be punished because of what's in my heart, which is what I'm telling you right now. So why not be just honest about it? Even if I meet Allah, I will tell him exactly what I'm telling you right now. And he would already know what's on my mind. So there's no way for me to pretend. Allah hates munafiqeen, right? Allah hates hypocrites. So I can't pretend to believe just to appease a God that may exist. Okay. हुज्जतुल काफरीन साहब जरा इसका ट्रांसलेट करें. अच्छा, जो लोग कह रहे हैं कि उनकी इंग्लिश जो है इंडियन जैसी है भाई, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश ही नहीं आती है, तो थोड़ा सा सबर हौसला रखो यार. उन तो वो भी समझने के लिए देख रहे हैं ना कि जो बाहर के लोग हैं उनका दिमाग किस तरीके से काम करता है इस्लाम को लेके, है ना. आप लोग तो समझ जाओगे जिनको इंग्लिश आती है, लेकिन जिनको नहीं आती उनके लिए फिर उनका देखना ही ये स्ट्रीम बनता ही नहीं है ना. तो थोड़ा इसी वजह से हम लोग सिर्फ समराइज कर रहे हैं ताकि शॉर्ट में ये जो कहना चाह रहे वो बात आ जाए. अमित साहब, आपको कुछ ऐड करना था क्या? नहीं, बाहर के लोग नहीं यार भाई, इंडियंस भी मोस्टली हिंदी नहीं समझ सॉरी इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं. और अपोस्टेट अलादीन की इंग्लिश माशाल्लाह बेहतरीन है, इंडियन इसमें एक्सेंट में ही है. पर भाई लोगों थोड़ा सा सब्र करो, ट्रांसलेट करने दीजिए. हाँ, और वैसे भी हम सिर्फ समरी दे रहे हैं, एग्जैक्ट जो है पूरा का पूरा नहीं कर रहे ताकि ज्यादा वक्त जो है इसमें ना लगे. जी हुज्जतुल काफरीन साहब. अच्छा, एक आपने पीछे ट्रांसलेशन में गलती कर दी थी साहिल भाई. इन्होंने अरब से बोला था, सऊदी अरेबिया बोल रहे थे, तो सऊदी अरेबिया नहीं अरब से है. नहीं, उन्होंने बोला था सऊदी अरेबिया में वो पले बड़े हैं. वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताना चाहते कि वो कहाँ पैदा हुए थे, लेकिन सऊदी अरेबिया में उनका काफी वक्त गुजरा, ऐसा कहा था उन्होंने. राइट ना हुज्जतुल काफरीन साहब? जी जी बिल्कुल जी. अच्छा, अभी जो उन्होंने कहा हुज्जतुल काफरीन साहब फटाफट समरी दे दे हमारे दर्शकों को, फिर आगे बढ़ते हैं हम. उन्होंने ये कहा है कि जितना तक उन्होंने इस्लाम को समझा है, तो बेसिकली कुफार जब जाएंगे तो इस्लाम ये क्या उनके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो गिड़गिड़ाएंगे अल्लाह के सामने कि माफ कर दो फलाना टिमकाना. और फिर उन्होंने फर्दर ये भी कहा कि यदि हर चीज प्री डेस्टिन्ड है कि मैं धरती पर अल्लाह के आर्गुमेंट्स को नहीं मानूंगा, तो वो यही चीज जाकर के अल्लाह के सामने भी बोलेंगे, जो बात ऑलरेडी अल्लाह को मालूम रहेगी बिकॉज ऑफ दिस लॉजिक ऑफ प्री डेस्टिनेशन. सो एट द एंड ऑफ द डे दिस थिंग डजंट मेक सेंस, और इस्लाम में इसके लिए कोई खास जगह नहीं है. जी, थैंक यू. So one issue, the major issue was with predestination and free will, Apostate Aladdin. So apart from that, what were the major problems you have seen in Islam before leaving Islam? So that was one of the issues. I could get into specifics, but what I think mattered more than the specific instances of certain battles, for example, where the Prophet and his Sahaba were too brutal. Aside from these examples, or the Prophet's marriage to a child and certain scandals like these, even if you push all of these aside, it was mostly the realization that if I were to introduce this religion to a non-Muslim, or if I wanted to convert someone or convert myself, how would I go about doing that? And I tried to reach out to so many Muslims, some friends, some sheikhs, and just try to understand, why do they believe? How can I distill that into kind of like a sales pitch? Like if I were to introduce someone to Islam, what would I tell them to convince them? And I realized that there's nothing inherently that convincing about Islam, or nothing that proves Islam in the way that it should be proven. There's nothing that's worthy of punishment
and torture to that extent, Allah didn't make a good case for himself. So if I were to try to introduce someone who's not a Muslim, even as a Muslim, I realized they're totally within their right not to believe me, and I don't even blame them. And I don't think it makes sense that they should be tortured for that. And I realized that a lot of the arguments that Muslims used when I wasn't even arguing with them, but when I was trying to understand from them why they believe or what makes Islam true, a lot of what they were saying applied to other religions as well, or it was the same kind of thinking that believers of other religions have used, including religions that Muslims consider polytheistic. So it wasn't just about the idea of monotheism. So it made me realize that people believing what they believe has nothing to do with how good of a person they are, or at least it's not just about how good of a person they are, maybe not at all. It's about where they were born, it's about their situation, it's about their life circumstances, and the fact that Islam is practically a game of it's based on geography. Where you were born determines what religion you have for the most part. It doesn't make any sense that that's the criteria that God uses to judge people. So, like I said, there are many specific suspicious instances in Islam of things that Muhammad did wrong. But if you're a Muslim, you can dismiss any of them. But that wasn't the main issue for me. हुज्जतुल काफिरीन साहब, इन्होंने ये कहा कि जैसे इन्होंने सहाबा की जो खूंखार जंगे के बारे में जाना, तो इनके अंदर एक द्वंद पैदा हुआ कि यदि मैं किसी गैर मुसलमान को इस्लाम की दावत देता हूं, तो मैं उसके सामने क्या केस रखूंगा? बिकॉज एक खूंखार जंग में देयर इज नथिंग गुड टू इनवाइट समवन टू द रिलीजन। फिर उन्होंने जब इसके बारे में लोगों से जानने की कोशिश भी की, तब फिर उनके पास भी कुछ खास आर्ग्यूमेंट नहीं था। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ने इस्लाम के पर्सपेक्टिव से अपना केस अच्छा नहीं रखा है, दैट इज दीन इस्लाम में ऐसी कुछ अच्छी बात नहीं डाली है जिसकी वजह से ये गैर मुसलमान के पास जाए और उनको दीन की दावत दे। और उनका लास्ट स्टेटमेंट ये था कि इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें सस्पिशियस है विथ रिस्पेक्ट टू द हॉली प्रॉफिट, और यदि आप इस चीज़ पर क्वेश्चन करते हो तो आप ऑटोमेटिकली इस्लाम से खारिज हो जाते हो। ओके, प्लीज गो अहेड अपोस्टेट अलादीन। Yeah, I think that was most of it. I can't remember anymore what the question was. Okay, so if I ask you specifically about Quran, since you are, Arabic is your first language. When you read Quran, the entire Quran, what is your thought about Quran, the language, and can it be something from the God if he exists? What is your thought about Quran? How you take it? So I learned Quran from a very young age. I didn't memorize the whole Quran, but I memorized a big amount of it. And I remember that the standard Arabic that we use today and the Arabic dialects in the country that I'm from and other countries is a bit different than how the Quran is written. So it is written in an older style. It is written in a way that people don't speak today. So even Arabs don't quite understand the Quran when they read it for the first time. And there's a lot of context missing. It doesn't read like a book where if you start to finish, you could just start reading and you'd know what the author is talking about. The author would switch the topics. It would switch the tense. He might be addressing Muhammad and then he's addressing all the Muslims without making it clear. It's very messy and put together in such a messy way. But I didn't accept any of that as a child. I just saw Arabic words sang in a certain way, and I had to memorize them in a certain way. And even when I noticed something that looked like could be a grammatical mistake or a grammatical oddity that didn't conform to what I expected Arabic would look like, I would be told that Allah uses this grammatical exception for emphasis or something like that. So Arabic was built on the Qur'an. So there's no way that a Muslim can say the Quran is mistaken grammatically in this part or that part, because they're basing Arabic on the Quran and they make a lot of exceptions for the Quran specifically. But so I always thought that there was something special about the Quran because I was told that it was special from a very young age. But frankly, I can see a lot of things in the Quran that could be written better, could be written simpler, could be written more elegantly and with less room for misinterpretation.
And I don't think that the way that the Quran is written is proof that it is divine. So, are you trying to say that being an Arabic speaker, you're trying to tell us that there are many things in Quran which are not grammatically correct, but the Muslims, they are taking it as an exception, and they are trying to show that, since it is spoken by Allah, you need to consider it as right. Are you trying to say that? I know there's several instances of that in the Quran, yes. That Can you grammatical, give some example? I can't recall at the moment off the top of my head. Hmm. So what I care more about, like, it wasn't just that there were grammatical mistakes. That part, I can ignore that part altogether. It was that the book could be written better. There are many things that even Muslims argue among themselves today about what they mean, that if I just add one word or remove one word, it would make a lot more sense. Or if I give a little bit more context, it would make more sense. But the Quran on its own is not enough. Like, Muslims with the Quran alone cannot be Muslims. Most of it doesn't make sense if you don't have the backstory, if you don't have the hadith, the seerah, and all the opinions of all the sheikhs. On its own, it doesn't hold up. But and I know that a lot of people say that there's a linguistic miracle, that the Quran is written in such a beautiful, linguistically miraculous way. I think it's written in a unique way that we don't see very often, except in old poetry and prose. And just because nobody has written a book that big with the same style doesn't mean that this one is special because it's in that style. And I like to remind people, if the proof for Islam is that the Quran is linguistically miraculous, then that proof only works for a very small percentage of Muslims, because most Muslims are not Arabic speakers, and most humans on earth are not Arabic speakers. So it doesn't make any sense for God to have the proof for his religion only be possibly understood subjectively by a fraction of the population of the earth. Okay. हुज्जतुल काफरीन साहब, थोड़ा सा समराइज कर दे. इन्होंने बेसिकली ये कहा कि कुरान किसी विशेष भाषा शैली में नहीं लिखी है. भाषा शैली में विशेष ये है कि जिस किस्म की जो पुरानी शायरी लिखी जाती है, कुरान उसी में लिखी है, लेकिन वो भी कुरान को यूनिक नहीं बनाती है, क्योंकि आपके पास पुरानी बहुत सारी कविताएं और शायरी हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं. उसके बावजूद भी कुरान जिस भाषा में लिखी है, वो भाषा एक स्पेसिफिक फ्रैक्शन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन बोलती है. सो इट डजंट मेक सेंस कि जो जिसने कुरान लिखी है वो एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन की भाषा में कुरान लिख रहा है. हाँ, वो ये कहना चाह रहे थे कि भाई अल्लाह को ये एक तरीका कौन सा अपने आप को सही करने का, साबित करने का था कि वो कुछ लोग जो अरबी बोलते हैं उनके लिए दे. तो ये कह रहे कि ये इट डजंट मेक सेंस, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं है कुरान को एक्सेप्ट करने के लिए कि खुदा की तरफ से है. इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि भाई, जब मैंने इनसे पूछा कि कुरान जब आपने पूरा पढ़ा तो उसके बारे में आपकी क्या राय है, तो ये कहते हैं कि कुरान में जो है ना कोई सेंस नहीं बनता है. अल्लाह कभी एक चीज बताता है, फिर इमीडिएटली जो है वो स्विच करके किसी और तरफ चला जाता है, फिर उसके बाद किसी तीसरी जगह पे चले जाता है. यानी उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है. और जब तक आप अलग अलग तफसीर नहीं पढ़े, आप हदीसों का मुताला नहीं करे, कुरान आपके लिए सेंस बनाएगा ही नहीं. और यही चीज हम हमेशा से कहते हैं कि कुरान से बड़ी एम्बिगुअस किताब दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती. इसमें तो खुद उलमा कंफ्यूज है. आप सोचो कि एक ही आयत को लेके जो है वो एक आलिम कुछ अलग बोलेगा, दूसरा आलिम कुछ अलग बोलेगा, एक की इंटरप्रिटेशन कुछ अलग रहेगी, दूसरे की इंटरप्रिटेशन अलग रहेगी, क्योंकि कुरान को अल्लाह ने आसान भाषा में लिखा ही नहीं, ना उसको एक कॉन्टेक्स्ट दिया कि एक आम इंसान अगर उसको पढ़े तो उसको समझ में आए कि भाई ऑथर बोलना क्या चाह रहा है. तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस्लाम का है. Apostate Aladdin, next question to you is, have you seen different versions of Quran? Because we have done stream where we have shown people there are different versions of Quran. People like Zakir Naik and other scholars previously used to tell, I don't know about Arabs,
but in India and especially Hindi and Urdu speaking people, they used to tell that no word of Quran has changed, not even a letter. If you go from India to America to any part of the world, the Quran is same. But later on, many people shown to others that there are different versions of Quran. Mostly what we are reading in India, Pakistan and other parts are that is the Hafs Quran. Then you have verse, then you have Kalun, then you have some other this and that. What is your thought about that? So this is a topic that I'm not an expert on this topic by any means, but I'll give you my thoughts anyway. There are different versions of the Quran in the sense that they're called ahruf and qira'at. They're different books that, like you mentioned, the Hafs version. There's Warsh. There's other ones. There are minor differences. I mean, when sheikhs say that there's not a difference of a letter, that's not true. There are differences of letters and words sometimes. And those sheikhs argue that the differences are not significant enough to be considered different, meaning that the meaning is the same, whether you read it this way or that way, or you write it one way or another. I think there are examples where the meaning changed. Like there's I can't remember the specific verse or the versions, but one would say qatilu, one would say iqtulu, which is fight versus kill. And I would consider that to be different. But all of that pales to the, I mean, you could push all of that aside when you think about how we don't even know what the original Quran looked like, if anything at all. I mean, we have hadiths about how there were other verses and surahs that are no longer in the Quran now. Hadiths about how people said we used to read this verse differently than we do now. That's in the days of the Prophet. So we have no idea how the Quran was when the Prophet died. It wasn't even fully compiled. All we have is like the oldest version of the Quran is not even close to Muhammad's death. So to say that the Quran is very well preserved, even if it were, which it doesn't seem to be, but even if it were preserved letter for letter, it doesn't prove anything. This is, it's as if these sheikhs or the promoters of the religion, they select one criteria where Islam excels. They select this criteria being how many people memorized it, the Quran, and how little variation there is in the copies of it. And then they use that criteria as proof. But if you were to assess any other religion or any other text in any context, you would never say, just because it has not been changed in 1,000, 2,000 years means that it is from God. That is not a criteria for divinity. ट्रू. हुजैतुल गाफिन साहब थोड़ा सा समराइज कर दे इसको. इन्होंने बेसिकली ये कहा कि जब इन्होंने शेखों से बात की तो शेख ने अगर ये माना कि कुरान के वर्जन्स में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हैं, बट वो इस बात पर बल देते रहे कि थोड़ा बहुत ही डिफरेंसेस हैं. लेकिन इनका ओपिनियन ये है कि वो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस नहीं है, बल्कि डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि कुरान का मतलब ही बदल जाता है. फिर उन्होंने फाइट और किल वाला एग्जाम्पल दिया. फिर उन्होंने ये कहा कि उनको कि इससे सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम ये आती कि अब ये नहीं पता है कि पैगंबर साहब के ज़माने में कौन सा कुरान रिवील हुआ था. फिर उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि यदि मान भी लेते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, तो इससे साबित भी कुछ नहीं होता है. इस्लाम इज नॉट प्रूफ बिकॉज ऑफ दिस. फिर उन्होंने फर्दर ये बात बोली कि जब ये दूसरे मजहबों को आंकते हैं तब फिर वो बताते कि इतना सारा डिफरेंसेस हैं, लेकिन कुरान में सिर्फ इतना माइनर डिफरेंसेस हैं, फिर भी इस्लाम का अल्लाह इससे साबित नहीं होता है. एग्जैक्टली कि वो अगर ये कहना चाह रहे कि वो अगर प्रिजर्व भी है तो भी इससे ये साबित नहीं होता है कि वो अल्लाह का कुरान है. यानी कोई चीज को आप प्रिजर्व करके रख लो तो उससे ये थोड़ी ना साबित हो गया कि वो खुदा की तरफ से. जैसा मम्मी, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मम्मी को प्रिजर्व करके रखा गया कितने सालों से, तो क्या इसका क्या मतलब हो गया खुदा है या अल्लाह ने किया? तो किसी चीज को पहली बात तो प्रिजर्व है ही नहीं. इन्होंने ये भी कहा कि भाई वो जो हमको सबसे पुराना जो कॉपी मिलता है वो भी मोहम्मद साहब के मौत के कई बाद का मिलता है. लेकिन अगर उसको थोड़े देर के लिए छोड़ भी दे
और ये मान भी ले, हालांकि उसमें डिफरेंसेस भी है, उन्होंने जैसे कि काफरीन भाई ने बताया, वर्ड्स का डिफरेंस है, लेटर्स का डिफरेंस है, उसके बाद लेटर्स मिसिंग है, तो उसमें तो एक ये हो जाता है कि भाई अल्लाह ने क्या बोला था, इन्होंने जो लिखा वो तो अलग है, अल्लाह ने क्या बोला था, लेकिन अल्लाह ने जो बोला था वो तो एक ही बात बोली होगी ना, क्या वो 7 अलग अलग तरीके से अल्लाह बोल रहा था, या 30 वर्जन जो है वो अलग अलग तरीके से अल्लाह बोल रहा था? ये भी एकदम पहली बात तो इलॉजिकल बात है कि अल्लाह किस तरीके से बोल रहा था। अल्लाह तो एक ही बार बोला होगा जिब्राइल को, कि जिब्राइल ने आके उसको 7 वो दे दिया, भाई नहीं ये ले, इस तरीके से भी ले, उस तरीके से भी ले, ऐसा नहीं होता, ये इलॉजिकल है। लेकिन ये कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए उसको हम छोड़ भी दे और मान भी ले कि इसको, इस कुरान को प्रिजर्व किया गया, उसकी प्रिजर्वेशन हुई यहां तक लाने में, तो उससे ये साबित नहीं होता कि ये का कलाम है या कोई ऑलमाइटी गॉड का कलाम है। अपोस्टेट अलादीन, the next wait, question. before we move on to the next question, do you mind if I ask you a few questions about your journey out of the faith? Yes. So is it okay if we complete your story and then you can ask me whatever you want to ask, so that Sure. we have that flow? I Sure. have only 2-3 questions remaining for you. Okay, if 2-3 questions, that's fine. Yeah. So Apostate Aladdin is more interested in knowing my journey, because since our channel is not in English, and he tried watching our videos but he was not able to comprehend what we are saying, and possibly he's seeing that our channel is growing and lots of people are watching us live. He is interested in knowing what we are telling, why I left Islam, especially someone from India. So I'll definitely fulfill his क्या कहेंगे, वेली बोलेंगे ना, your choice. So the next question to you is, what you think about the character of Prophet Muhammad when you read Quran and when you read hadith, when you read tafsir? What is your thought about on his character? So again, I'll try to answer this question in as nuanced of a way as I can, because I don't want to simply say I think he's a good man or I think he's a bad man. I think it depends on it depends on many things. First of all, what did Muhammad say or do? That is not clear. Some hadiths, some Muslims take some hadiths, they don't take other hadiths. It depends on which ones you believe are actually him. And for me, there's no way to verify that any of them were actually him. And then secondly, it depends on what was the situation like. What would the average person do in that situation? What is the best that would be expected from him in that situation? So that makes it very difficult to assess him as a man and say he's good or bad. But I can certainly say that the measure that the benchmark or the goal that Muslims are trying to prove or trying to compare against is perfection. So the important question is, does Muhammad seem to me like a perfect role model? I don't think he does, because there are many situations that, despite the times being different, despite it being 1400 years ago, Muhammad could have done things better. And I could have done things better in that situation. I mean, I'm saying that with hindsight now, but if I can conceive of a way that Muhammad could have behaved better, then Allah would also have seen that way. For example, the obvious classic example is his marriage to a child. The bigger problem than the marriage itself is how it allowed so many other people in the future, so many young women or young girls to be harmed by similar marriages, and the justification being that Muhammad did it. If Muhammad was the perfect man and he knew what was going to happen in the future, or Allah knew what was going to happen in the future, he would have advised him, maybe, don't marry this one, or wait till she's a bit older, or something else. But this is the classic example that everyone cites. But there are other examples from the Qur'an, not from the Hadith, or mostly from the Qur'an, like the time where one of Muhammad's older wives, Sauda, was afraid that he would leave her because he was paying too much attention to Ayesha, because he was, enamored by his young wife, which is problematic. And she offered to give him some of her rights, like her night with him, because Muhammad spent one night with every one of his wives. She offered to give her night away so that he can spend it with Ayesha.
And as a human being, it's very sad to hear how a desperate woman is telling her husband, you can go sleep with your younger wife, just please don't kick me out. And his reaction wasn't to say, I am sorry that you feel this way. Because Muhammad, let's remember that Muslims say you have to be fair to all of your wives. That is one of the conditions. And if Muhammad was being fair to all of his wives, she would not have sensed that he likes Aisha more than her. But he always said that he likes Aisha more than her. So instead of telling her, I'm sorry that you feel this way, and I'm sorry that I made you feel this way, and I will change my behavior, he says, yes, I will take your offer. And then he makes it into a verse where he tells people, tells women, if you're afraid that your husband's going to leave you, it's okay to give up some of your rights. He could have behaved better in that situation. I don't think that's the perfect husband. And that's just one of many, many examples. So to summarize the answer, I will not judge him and say that he was a good person or a bad person, but I can easily say for the purposes of assessment of whether or not he is a perfect person, he was definitely not a perfect person. That's great. उज्जैदुल गाफरीन साहब थोड़ा सा समराइज कर दे। इन्होंने ये कहा कि मोहम्मद साहब के बारे में आप एक सिंपल यस और नो या सही या गलत नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो इसका एक ज़्यादा विस्तृत आंसर देंगे। उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब को समझने के लिए जैसे ही हदीस पे जाते हैं, तो हदीस मोहम्मद साहब पर बहुत ही कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ देता है। लेकिन वो फिर भी मोहम्मद साहब को इस बात पे जज करना चाहते हैं कि वेदर ही इज़ अ गुड रोल मॉडल और नॉट, बिकॉज़ मुसलमान जो हैं वो खुद को परफेक्ट करना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब हैज़ नॉट डन अ गुड जॉब, उन्होंने एक अच्छा काम नहीं किया है एज़ अ रोल मॉडल के लिए, क्योंकि यदि वो खुद मतलब अपोस्टेट अलादीन साहब वहाँ पे खुद होते, तो वो उनसे ज़्यादा अच्छे एक्शन कर सकते थे। तो उन्होंने एज़ अ रोल मॉडल एक अच्छा एक्शन नहीं किया है इनके हिसाब से। फिर उन्होंने उसके 2 एग्ज़ाम्पल दिए। पहला एग्ज़ाम्पल था आयशा के साथ जो उनका बाल विवाह हुआ था। फिर वो जाते हैं बीबी सौदा के पास कि भई कि बीबी सौदा को जब ये खौफ आया कि मोहम्मद साहब मुझे छोड़ देंगे, तो उन्होंने अपने कुछ राइट्स सरेंडर कर दिए। इन्होंने फिर एक बहुत ही न्यूएंस टॉपिक रेज़ किया था विक्टिम शेमिंग का, कि मोहम्मद साहब ने उस प्रकरण को ऐसे प्रस्तुत किया कि भई मैं तुम पर उपकार कर रहा हूँ कि यार मैं तुझे छोड़ नहीं रहा हूँ। और यहाँ पर जो विक्टिम थी बीबी सौदा, शी वाज एक्चुअली फेल्ट ग्रेटिफाइड कि यार कम से कम ये मुझे छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि मैंने अपने कुछ राइट्स एज अ वाइफ मैंने सरेंडर कर दिए। फिर उन्होंने ये कहा कि ये दोनों एग्जाम्पल खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि आगे जाकर के प्रेसिडेंट सेट करते हैं। बाल विवाह का भी मतलब एक छोटी उम्र की बच्ची का शादी एक बहुत ही बड़े बाबा के साथ कराने का, और इसका भी कि आप कैसे एक वाइफ को कोर्स कर सकते हैं इन फ्यूचर टू अपनी बात मनवाने के लिए। बिल्कुल, बल्कि इन्होंने ये भी कहा है कि भाई रसूलुल्लाह ने हर वक्त पिंकी को ज्यादा क्या कहते हैं उसको, क्या कौन सा वर्ड है यार अपन यूज करते हैं, ज्यादा अहमियत दी, ज्यादा प्यार किया है, ज्यादा अहमियत दी, पिंकी से ज्यादा प्यार करते थे क्योंकि वो छोटी उम्र की थी पिंकी, तो और रसूलुल्लाह उनको पिंकी बोलना पसंद करते थे। पिंकी मतलब ऐसा इंग्लिश में पिंकी नहीं बोलते थे, हुमैरा कहते थे उसको। तो एक मौलवी का मैं रील देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि पिंकी का सॉरी हुमैरा जो है उसका अगर आप ट्रांसलेशन करो तो वो पिंकी होता है। तो रसूलुल्लाह जो है वो पिंकी को ज्यादा पसंद करते थे, और हजरत सौदा जो है वो बूढ़ी थी और हट्टी कट्टी थी वो, और हजरत सौदा के साथ क्या क्या हुआ आप सबको मालूम है, हमने यहाँ कई बार कवर किया है। तो जब हजरत सौदा को जब ये खौफ हुआ कि भाई रसूलुल्लाह मुझे तलाक दे देंगे, तो उन्होंने रसूलुल्लाह से कहा कि मैं अपना जो रात का वक्त है, रसूलुल्लाह हर रात जो है अलग अलग वाइफ के साथ रहते थे, उनको टाइम देते थे, हर एक रात एक एक के लिए फिक्स थी। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना वक्त दे देती हूं, आप पिंकी के साथ रहो। तो रसूलुल्लाह ने, अलादीन साहब ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह को यहाँ पे एहसास नहीं हुआ कि भाई मेरी वाइफ ये शिकायत मेरे सामने ला रही है, यानी उसको इस बात का खौफ है कि ये मुझे तलाक दे देंगे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो मैं सौदा को कह देता हूं कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं मेरी बात जो है आपको गलत लगी है तो मैं इसको वापस लेता हूं, मैं आपको भी वक्त दूंगा। क्योंकि सबसे पहली चीज जो है,
आपको जो इस्लाम कहता है वो ये है कि हर राइट देना है आपको, हर एक वाइफ को। तो वहां पे उन्होंने वो नहीं किया, बल्कि ऑफर एक्सेप्ट कर लिया सौदा का। तो ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी मोहब्बत सबसे ज्यादा जो है वो पिंकी जी के साथ थी। तो ये एक बेस्ट रोल मॉडल तो नहीं हो सकते। मैं उनको सही या गलत नहीं कहूंगा, कैरेक्टर वाइज मैं जज नहीं करूंगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं होता तो बेहतर इससे कर सकता था। मेरे लिए रसूलुल्लाह जो है वो एक बेस्ट रोल मॉडल नहीं हो सकते। Thank you so much, Apostate Aladdin. What is the message that you want to give to the Muslims who are listening to us? So it's hard to summarize it. A short message. What do you expect from Muslims? Oh, that's a different question. So I'll start with the message that I hope to give to Muslims is to hear us out. Try to have conversations with people who don't believe and try to understand why they don't believe, and then try to explain to them why you believe. Because I think that a lot of conflict happens because we're not listening to each other. And that's what I try to do on my channel. I have call-in live streams every week, and I focus less on debating people because I feel like debating doesn't help me and doesn't help some of my audience in the way that I want it to. I already have my conclusions. I don't need to change the other person's conclusions. I think there's more value in trying to understand why people believe and why people don't believe. So my message to Muslims is, if you actually want to understand, then try to listen to some of us who want to tell you why we don't believe, and try to listen with an open mind. And I promise them the same thing, that I am listening to them with an open mind. And that's what I hope to achieve. One of the things that I hope to achieve with my channel is to have better representation for ex-Muslims than just what we look like in conversations that are debates. I think we will have better representation if we start talking to each other like humans instead of trying to win a fight against each other. Great. प्रिंस साहब, इन्होंने जो मैसेज दिया है मोमिनों को जरा वो भी बता दे, ताकि जितने मोमिन हजरात हमको सुन रहे हैं वो इनकी बात को समझ सके, जिनको इंग्लिश नहीं आती है। जी जी बिल्कुल। सो उन्होंने ये कहा, मोमिनों से ये कहा कि भाई आप पहले खुले दिमाग से हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए कि हम क्यों इस्लाम से डिसएग्री करते हैं, और फिर आप खुले दिमाग से ये भी सोचिए कि आप इस्लाम को क्यों एक्सेप्ट करते हैं। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि उनका जो फोकस है वो डिबेट पर नहीं है, रादर वो कॉन्वर्जेशन पर है। वो समझना चाहते हैं कि मोमिन हजरात के दिमागों में क्या चल रहा है, और वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि आप हमको समझिए कि हम इस्लाम से डिसएग्री क्यों करते हैं, क्योंकि जब तक हम इंसानों की तरह एक मुहज़्ज़ब तरीके से एक दूसरे से जब तक बात नहीं करेंगे, हम किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। सो थैंक यू सो मच अपोस्टेट अलादीन, accepting our invitation and speaking to us. We are thankful to you. Now it's your turn. You wanted to know something from me. Please go ahead. Sure, and I appreciate the chance for us to talk. It's been a long time that I've received a lot of comments and messages, people telling me, you have to speak to ExMuslim Sahil. And I haven't done it for a while. I haven't reached out to you because I was busy with other things. But now I felt like it was the right time to try to learn more about your perspective. We had a very short chat before this private chat where you told me that what happened to you was you were criticizing Islam, and then you were doxxed. Your identity was leaked by Muslims that you know, and then you got on the news because of that, and you were in a lot of danger because of your identity being leaked, and that has affected your life very much. So I would like to know a little bit more about that. First of all, what motivated you to first start talking about Islam before your identity was leaked? Okay, so the reason why I started my channel is you need to go before that I was a practicing Muslim. I used to offer salam, and apart from that, I was also inviting people
to Islam. I was having conversation with non-Muslims, Hindus, Christians when I was working in office, call center. So I was doing that because I was listening more to Dr. Zakir Naik. So, I wanted to invite people because Allah says, there is one verse, invite people to the way of the Lord. What is that verse? Uh, Udu ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hi ahsan. So it was my duty that, I understood Islam. I have accepted Islam. Then it's my duty to tell others, non-Muslims, that what is Islam. Since if they do not understand Islam, they do not accept Islam, they'll go to hell finally. So I was doing that. But later on, when I critically analyze Islam from out of the Islam, when I analyze it out of coming out of Islam, then I understood there are many problems in Islam. Everything, the philosophical things that Islam says about the life, for me, everything was illogical. And apart from that, when I saw the character of Prophet Muhammad, and which was told to us before, that was very different. The main reason for me to leave Islam was, as you said, the marriage of Prophet Muhammad with a small girl, Ayesha. He married her at the age of 6, and he consummated the marriage. He had intercourse with her when she was only 9. So for me, a best role model and a role model till the day of judgment, it's not only for that period. See, if he was a role model only for that period, then maybe we can give some scope, or we can give some room that it's okay. That time maybe it was a normal thing. People were marrying small children. But since he is a role model till the day of judgment, how can we accept him as a perfect role model in our life? And as you said, many people marry small children in different parts of world, quoting Prophet Muhammad that he did. So even we are allowed. So that was one of the thing. Then secondly, the concept of slavery, that was very wrong to me. How a person who is a prophet, who is a role model, making someone slave and then having sex with the female slaves, and even they were selling them in the market. So for me, this was very wrong. It cannot be human. So how a role model, a prophet, a messenger who is sent from God, selected by God, can do such kind of thing? So that was other thing. Then apart from that, the concept of test, Allah has sent people to test whether they are good or bad. That was very illogical to me. Then uh, the concept of punishment, that if you do not accept the divinity of God, and not only divinity of God, you cannot associate partners with God. So if you do shirk, if you associate partners with Allah, and even if you do all the good things in the world, still you will go to Jahannam, and you will be burnt forever. So that was very illogical for me. And on the other side, if you are a Muslim, if you have Iman, you do everything. You rape someone, you kill someone. There are two options. Allah can forgive you without punishing you, or Allah can punish you for your wrongdoings, and at the end you will go to Jannah because you had Iman. So this was very illogical to me, how a merciful God can do such kind of thing. So these were the things which I thought it's not right, it cannot be from God, and that's the reason I left Islam. So after leaving Islam, my family come to know about this, that I have left Islam. So there were a lot of problem in my family. Till that time I had no intention to open my channel. Then after 1 year, I thought, like, when I was in Islam, I was a Muslim and I was preaching others to come to Islam.
Now I understood the reality, and I know what Islam is, and it's not good for humanity. It's not good for the world. Why should I not open a channel, YouTube channel, make use of social media platform, and tell people that this is the real Islam? And my main intention was to engage with Muslims and show them that this is the real Islam. This is what your scholars are not telling you. They are not giving you the perspective why this is wrong, why child marriage is wrong, why slavery is wrong, why the concept of punishment or test is wrong. So that was my intention. So with that intention, I opened my channel. But everyone knows that if you come openly, even in India, it's Pakistan or the Arab country, you cannot do that. But in India also, you cannot openly come and tell people that this is the problem with Islam and this is the problem with Prophet Muhammad. Everyone knows that. So that's the reason I came without my face. I started my channel. I started doing live stream. I started having discussion with Muslims. So my channel started growing. We used to have some starting when I started my live stream, it was only 30, 40 people watching me live. Then, uh, the channel started growing. We had 100, 200, 500, 600, 700, 1000, 1500 live viewers watching our discussion, because we were only discussing with Muslims and not anyone else. So I also had a group when I was Muslim, wherein we had people who were also like me, telling about Islam to others, inviting others to Islam. So they were active on YouTube. So one of my friend who was from this Dawa group, he identified my voice, and then he started checking my activities, at what time I am free, what time I'm going to home, whether this is the same person. When they understood I am the one who is running this channel, they started leaking, they started telling to everyone that this guy is doing this thing, this guy is talking against Islam. So this is how my identity got leaked. Everyone, they shown my face, they shown where I stay, they shown what I did, where I was working, they shown everything to everyone that this is the guy. So after that, I stopped my channel for some period. Then again I started the channel. Then I got invitation from a news channel to come to their show and have a discussion with Islamic scholars. So my first appearance on national news channel was on India TV. Crores of people watched that live, and on their YouTube channel, at least I think some 10 million people watched that show. And from that, my channel started growing more, and finally I'm here with more than 5 lakh subscribers. And one more thing I would like to tell you is that my channel is also banned in India now. So this Muslim organization, they are trying very hard to stop me. They requested the government to ban my channel, and my channel is blocked now. Still, whenever I go live, I also have one of my friend who is also ex-Muslim. His name is Adam. I don't know whether you heard him, Of course, or yeah. you heard about him. So he has English channel also. So we both do these streams together, Tuesday, Friday on my channel, and Saturday on Adam's channel. We do the stream together. So even after ban, when we go live, the average live viewership of our stream or video is around 6,500. In fact, the maximum live viewership on my channel was 23,400. Wow, that is a large number. So basically, this is how the transition has happened. Well, thank you for sharing that backstory, and I'm sorry that your information got leaked. I can imagine that it must not have been easy to deal with the backlash of that. And I'm glad that you are safe today. I can't imagine being in that situation, so I have a lot of empathy for you as well. It sounds like you were coming at this from
I mean, I'm assuming here that you started to inform Muslims about what you found in their religion, that you think their imams aren't telling them. Why did you want to do that? Was it about informing the Muslims about this, or informing everyone else as well? Okay, so as I said, it was the first thing is to inform Muslims that this is the real Islam, and apart from that, it is also for non-Muslims to know what exactly is Islam, because the Dawa gang is very active in India. Lot of conversion happening in India. People like Zakir Naik, and there are a lot of Islamic organizations who go to people and do the makeup of Islam, and they present Islam to them, stating that Islam is the only true religion you have to accept. So it's not only about telling the real Islam to Muslims, but also to non-Muslims, so that they know what exactly is Islam. And in case if someone comes and give dawah to the non-Muslim, and if they have seen our channel, we are 100% sure they will never go to Islam. So it's for everyone, Muslims as well as non-Muslims. So how effective do you think your channel and your approach in general has been in informing Muslims? Or how effective has it been? As in, do Muslims accept what you say? Does it help them in any way, or do you find more opposition than acceptance? Yes. So we have got a very good result. Since you cannot comprehend our channel, what is happening, it's in Hindi Urdu language. If you see my videos, we have so many ex-Muslim stories. People started watching our channel. They used to give bad words to us in the start when they saw that we are criticizing Islam. Then they continue watching our channel. Then they see what we say, because whatever we say, we keep it on the screen, we show the references, and then we keep the argument. And the best part is, we give opportunity to Muslims as well, that this is the reference, this is what our argument is, you have all the rights to counter, to refute us. So Muslims, they are watching that what is going on here, whose side is better, whose arguments are better. Lot of people, they have left Islam watching our channel. We have lot of stories. Every stream, or I'll say most of this stream, we have one new ex-Muslim coming on our channel and sharing the testimony that we watched your channel and this is what happened to us. We understood, we rechecked, because everything is available online, and they say that we left Islam. We have lots of stories on our channel. Then we also have non-Muslims who were who got the dawah from Muslims, that to accept Islam, but when they watched our channel, they understood that they are giving false dawah, they are telling false thing. They also left Islam, or they did not accept Islam. So we have a very good result. Okay. And I imagine that when you were a Muslim, did you face any mistreatment because of being a Muslim? To be honest, no. One thing that I faced, I'll tell you, and that is not because I was a Muslim. When I was working in corporate, my beard was till my chest. Okay. And I was in a corporate, and I was into client servicing department. I was a client account manager. So I was dealing with clients. Okay. So there was one IGP internal job posting for the post of team leader, or I think associate manager. When I went there, they did not select me because I had a big beard. So that was not because of Islam, but because of the presentation and the job profile that I was into. Apart from that, I'll tell you, if you do not know the scenario of India, Muslims are living very freely. In fact,
In fact, they ensure that they get the things what they want. So they have so much power in India. Muslims are very safe. Yes, you may see some incidents where some of the Muslims might have been lynched or killed, but that is very rare. That does not represent the entire India. In Well, India, yeah. Muslims are, I think, have more rights than they have rights in different countries. I'll give one example to you. Okay, do you have any idea about Tablighi Jamaat? I've heard of that before. It's a form of da'wah, basically, right? Yeah. So there is one Tablighi Jamaat which has started from India. In Saudi Arabia, they have banned Tablighi Jamaat. Okay, they have banned Tablighi Jamaat. But in India, Tablighi Jamaat is very free to do the Tabligh. They were involved. They were found involved in so many subversive, but they are still not banned. In Saudi Arabia, you cannot pray namaz, you cannot offer salah on the road outside mosque. But in India, no one will question you. You can see many Muslims offering a prayer on the beach, in the train, outside the mosque, on the road. They are very free in India. They do everything. Well, here's something that I've heard again, because I don't understand the conversations that you have on your channel. So I heard this from someone else, from one of our or several of our mutual viewers, about how you've had people on your show, people who are okay with things like lynching mobs and things of that nature. Do you think that there is a movement that is pro violence against Muslims, and do you think that are you aware of that movement at all in your following or anywhere else in the spaces where you interact? Say this is a propaganda against Indians. This is a propaganda against Indians. We do not, what do you say? We do not support any kind of violence against anyone, be it Muslim or non-Muslim or anyone else. We believe in humanity. Anyone who is against humanity, we do not support that. We condemn that. That's the reason. Before you ask me anything, I told you that you might have heard certain incidents, where the Muslims are lynched, but it has been shown to the world out of proportion. You can see lynching of non-Muslims as well done by Muslims in India. So these are rare incidents, and we say that is wrong. We don't support that kind of thing. Okay. In fact, Mhm. People who had very hard feeling for Muslims that these guys are very bad, when they started watching our channel, when they saw our argument, when we told them, Muslims are the first victim of Islam, their thinking has totally changed. Now they see them as victims, as patients, and they want that they should be educated about Islam. So we don't support any violence against anyone, Uh, and if um, someone is doing that, we condemn mhm. that. We find it wrong. Yeah. Like I said, again, I don't speak the language, so all I have is secondhand accounts. But I remember hearing something about a man called Tufail, something about his involvement with lynching of Muslims for eating beef. Do you think that something like that is inconceivable to happen, or that it only happens in very small amounts, or that it doesn't happen at all? Okay, so as you said, the name of the person that you said, he is one of a supporter, my friend. He is Mhm. like my friend, my elder. So first thing, he is not involved in any lynching. Okay, yes, I'll tell you one thing. In India, for most of the people, cow is something very holy to them. Okay, so if someone says that, if you kill cow, will do something or I'll do something, that doesn't mean that literally they will go and kill someone.
Okay, so I know him personally. He is not that sort of guy. He might have given some certain statements, and the statements can be in anger, and these kind of statements can be heard from anyone. That doesn't mean the person will go and kill someone. Do you feel the same way about angry statements made by Muslims? No, for Muslims, we very well know that if they hear anything about Prophet Muhammad, you can say anything about Allah. They are still okay with that. But if you say anything about Prophet, against Prophet, yes, they can go and kill someone. We have a lot of cases. We have, example people getting beaten, killed in the name of, in the honor of Prophet Muhammad. Oh, So, I'm very aware of that. I've actually made videos about that myself, and it's something, as you could tell, I'm wearing a mask for similar reasons. Because even if I'm not worried about immediately my physical safety, I know that I could be in danger for this, as you were in danger. I understand. right. But don't you think that it's similar if someone says that people who find cows to be holy might make certain insinuations or threats, but they don't actually mean them? One could say similar things about Muhammad, right? Yeah, I'll answer that. See, there's a huge difference between the both. Okay, there may be people, or there are some people, fraction of people who might be doing this. So as I said, we condemn that. Okay, but the major difference between the both is their religion, their books, their scriptures does not tell that if someone says anything to cow or kill cow, go and kill them. On the other hand side, since you know Islam very well, and since I know Islam very well, we know that this killing, the teaching of killing, is coming from the scripture, from the religion. So there is a huge difference. But I mean, I hear where you're coming from. I don't know enough about Hindu scriptures to know if there's any command to harm people who eat beef. I imagine there isn't. So I want to believe you on that. But do you think that it's the person that I mentioned, to file? Do you think that you can excuse someone like him for making charged statements that could be interpreted as hateful or threatening? Yes, I think he should avoid, or he should think before giving such statements. I totally agree with you, but his intention, I told you that he is not that kind of guy. He has not killed anyone. There are many cow slaughters happening, but he has not gone to anyone and killed anyone. Yes, I totally agree with you that being a public figure. You've seen that video of Ali Dawa, right, where he says that he would execute ex-Muslims if the Sharia law was applied, and he's proud of that. But I imagine he hasn't killed anyone as far as we know. But would you extend the same, See, Ali Dawa may not kill, but the people who are listening to Ali Dawa and who have been taught from the childhood that we cannot listen anything against Prophet, they can kill others. So as I said, you need to understand there's a huge difference between both. Yeah, I'm not saying they're the same situations. And again, I have to defer to you knowing a little bit more about this stuff, because you live in India. You are surrounded by people of other faiths, including Hindus. I am not. So all I have is secondhand accounts and reportings by other people. It's not that I think it's an identical situation, but I think that there might be maybe a blind spot to people using hateful speech or threats if they're not Muslim. And I want to make sure. Yeah. See, anyone who is doing that, we are against that. As I said earlier, we do not support any kind of violence against anyone, be it Muslim or a non-Muslim. We have constitution, we have law of the land. If someone is doing anything which is a criminal offense, we have authorities to deal with it. So individuals, they do not have any right to take law in their hand, and we do not support anything like that, be it anyone. Yeah, I'm glad we agree on that. And any such statements given by anyone. Yeah. So I'm wondering,
how has the way that Muslims have treated you, how has that affected your journey with this channel? So when you first started doing this, before you were doxxed, and then afterwards, how has the treatment of Muslims towards you changed how you view them and how you discuss this topic, if at all? See, we see a lot of different type of Muslims coming here. Some are giving threats, some are giving bad words, and who come and talk to us normally. So we have variety of people. We have people who want to kill me, and we also have people who want to speak to me. So there are different varieties of people coming here and talking to us. But yes, I cannot roam openly. I cannot do this activism openly, because that 1% who wants to kill me, it's a good number. So even if 99% does not want to kill me, the 1% is a very big number. Mm-hmm. Yeah, I really empathize with you. I can't imagine, especially in India, a country with so many people, a small fraction, like you said, translates to a lot of people. So it's hard to feel safe in that environment. So I'm sorry that you have to go through that. In fact, you can imagine, Apostate Aladdin, just imagine from this thing. Just try to understand from this thing. I am in India, okay? Majority of people are Hindus, okay? And different faith. Just imagine, we have freedom of speech, right? I am in India with majority of Hindus, but still my channel is banned in India. My mobile number has been blocked. I'm in India. So just imagine how powerful the Muslims are in India. No, I'm well aware of that, and I know that even in the UK, there are instances of, for example, a movie that is a bit too Shia in its retelling of the story of the Prophet's, one of the Prophet's relatives, that could get removed from the theaters because Muslims have protested. So I know that even if the law protects you, sometimes, or often, the angry mob will then still get their way one way or another. I'm aware of that, and I'm wondering if that has affected how you interact with Muslims. Has it affected how you speak with them, or how patient you are with them, or has it been the same since the beginning? I didn't get your question. Can you please repeat? Sure. So the way that you had conversations with Muslims before, you were doxxed, and then today, has it changed? And No, if yes, no, then how? no. See, my intention, my way is very simple. I want to talk to Muslim respectfully, okay? But sometimes what happens is, as I said, we get different varieties of Muslims, okay? So sometimes we get such a Muslim who is so irritating, who does not want to speak with references. On that point of time, yes, we lose our patience, and I get a little bit angry, irritated, and I may use wrong words. But apart from that, any Muslim who comes here, who talks with references, who talks without giving bad words, we try our best to be patient with them, to listen to them, and talk to them. So for me, it's same from beginning till now. There are some exceptions. Apart from that, I'm same. Yeah, I mean, that would be very impressive. I myself struggle. I haven't received, a fraction of the hate that you've received, not to the same extent, and I still had to adjust in how I view Muslims to make sure that I'm not overcompensating for the frustration that I feel when I get threatened or when I have certain conversations that are not pleasant with them. So if you're able to keep your tone consistent, then that is very commendable, and I would love to know how. Apostate Aladdin, since you are from, you have been born and brought up in Saudi Arabia, and possibly you are in West. The Muslims in India, Pakistan, Bangladesh, they are very, very, very different. They Different are in what way? So dealing, their understanding, the way they talk. So dealing with them is very different.
You might get the audience or the callers talking you in a very polite manner or in a, in a different way, but the callers that we get every stream, they are totally different. For that you need to learn maybe Hindi and Urdu, and then you may understand what I'm trying to tell you. So you think that callers who speak Hindi or Urdu who are Muslim are more aggressive than other types of Muslim in the way that they have conversations, right? Yeah, in terms of conversation, yes, because we see that every stream. I cannot say it. I don't want to actually generalize it, but yes, many people who come here are very different, and it's very difficult to tackle. So I'm thinking about two sources, and I'm hypothesizing. So you tell me, what you think it is. Could it possibly be that it's the tone of the previous discussions on the channel, or the tone of the channel itself, that attracts people who love to fight and argue in that way? Do you think that's a factor in it? No, 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 no. See, I was also a Muslim, so I know what we have been taught, and how much patience we can have when we see someone criticizing Islam. So it's not about the tone of the channel. It's because of the content of the channel, and the content of the channel is to speak about Islam. So for them, it is against Islam. We are talking something which is not Islam, but for us, it is the true Islam that we are showing. So, but I mean, we talk. There are other channels that talk about the same, with the same degree of truthfulness and bluntness. They say it very clearly that Islam is false, and these are the things that are wrong with Islam. So, do you think that specifically yours, because you say things very honestly, you attract a lot of more hateful conversations? So as I said, I don't want to generalize that. As I said, not all callers, give bad words. Yes, there are callers who give bad words. Yes, there are callers who talk to us nicely. The only requirement that we have when someone comes is they need to speak with references. If they do not speak with references, then, and if they don't want to listen, then we have no other issue but to stop the conversation and remove them. Mm-hmm. Yeah, I'm I trying don't to know which understand channel it. you're talking about, because I have not seen many channels having discussion like us. I don't know what kind of people come to there, but yes, whoever comes to us are Muslims, and we try our best to be to be nice with them. It depends on the person as well, how he want, what kind of respect he is giving to us. Mhm. He will get the same thing in return. Well, I was just going off of what you said about how Muslims, like I would need to understand Hindi and Urdu to realize that. And one reason, I'll tell you one reason. Sorry, I'm interrupting you. And I'll tell you one thing. See, what I normally do is when I have conversation with Muslims, so when I give example to them, when I'm speaking about slavery or when I'm speaking about child marriage, what I do, because maybe because of that they get hyper, is I bring their family in that situation. I bring their sister in that situation. I bring their mother in that situation. I bring their daughter in that situation. So that is also one of the reason they get hyper. They start giving bad words to me. So when you bring their mother or sister, you know how they're going to react to that. Do you think that makes it more likely for them to see the problem and change their mind? Yes, because I think is that unless and until you do not give example which is very personal to them, they will not understand the severity of severity of the topic, or what we are trying to tell them, that this is wrong. See, if But I I mean, tell them, is you're this saying right that or wrong? I hear where you're coming from, but you're saying that they lash out and they get angry when you say that. So do they understand and they change their mind, or they get angry? Yes. See, Apostate Aladdin, you need to understand one thing. Whenever a callers come, a Muslim come, he comes with the intention that he has to win the debate. Okay. So
So at that point of time, it's very natural and very normal that he will not listen to me. But what happens is we have many examples where Muslims came to us, fought with us, didn't listen to us. But But on the is latest, intention as well to win the debate? whose? I mean, you're saying when a Muslim calls, their intention is to win the debate. Yes. But that would also be your intention, right? See, I am very open. I have told this on so many TV channels. Anyone who will prove me wrong and who will prove Islam true, I'll accept Islam. So my intention, yes, my intention is to win the debate, but that winning the debate is that they should understand the reality of Islam. If they understand that, then I have won the debate. So my intention about winning, or my what do you say, meaning of winning debate is that the person should understand the truth. Okay. So we were talking about You got a lot of things from people about my channel, and no, I'm thankful that's the that- thing. I'm trying to not believe what anyone says about your Yes, channel. yes, yes. That's why I'm talking to you. अपोस्टेट वन सेकेंड साहिल, हम यहाँ डिबेट करने के लिए नहीं बैठते ना, हम तो यहाँ नहीं, नहीं। डिस्कशन करने के लिए बैठते हैं. Ha, and secondly, Apostate Aladdin, when we speak to the callers, we say to them that we are into discussion and not debate. So that is also one thing. But good that you had so many questions about me and my channel, and I'm sure you got the answer. And this answer is for everyone who took our channel in a negative way. But they need to understand one thing: if they understand Hindi, they understand Urdu, they should know the impact that our channel is having on Muslims. Many Muslims are coming out of Islam. So if they understand Hindi and Urdu, they might not agree with some or the other thing. That is fine. But yes, we have the impact, and our intention is not wrong. Right. No, I hear you there, and I have gotten some answers to the questions. But as you can tell, I'm a very curious person. I like to ask follow-up questions so that I make sure that I'm not misunderstanding you. For example, like you said, there are a lot of ideas about your channel, and I know what those ideas are. But I don't come here and tell you, defend yourself. You are so and so. I don't think that's productive. I'm curious about what you're telling me, and that's why I'm asking questions mostly about that. So Absolutely fine. Yeah, like the last thing And we I were was talking about slavery. Aladdin, Yeah. I was expecting this because when you posted on your community tab, and yesterday when you were live, I saw people writing to you telling, ask Sahil about this, ask Sahil about this. He is more into hate. I've seen that. So I was expecting this, but that is absolutely fine, because we want people to know that, if you have understanding, which is, if you have any negative understanding, then come and take answers from us. Of course, and I appreciate the chance to do that. I can assure you that pretty much I've gotten some input from people who don't agree with your channel, but I've put that aside, and I want to satisfy my own curiosity about it, because again, as someone who doesn't speak the language, I don't understand as much as you do about the nature of life in India and life as a Muslim or ex-Muslim or otherwise in India. So that's why I'm trying to get your input there. But even setting aside setting aside that, I wanted to just finish the last thing we were talking about slavery and child marriage and so on. Like you said, that whenever you bring people's family into it, that's why they get aggressive and that's why they act more aggressively. But you also said that that's what gets them out of the religion, like that changes their mind. So do you think that they change their mind but they act aggressively, or that they aren't changing their minds? No. See, as I said, when they are into the discussion, when they come first, definitely they will not accept that. But on the later stage, or when they go and think while sleeping that, this is what I said, this is what I accepted about my sister or my daughter, then they realize that, it's not correct. So we have many examples wherein, as I said, people came, tried to defend Islam.
They were harsh, they fought with us, but later on they came again, and then they said that you were right, and we understood and we left Islam. So we have examples like that also. Well, साहिल, यहाँ थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है पब्लिक में भाई। ये डेविल्स एडवोकेट नाम की भी कोई चीज होती है, इनको सवाल करने तो साहिल भाई जवाब दे रहे हैं क्यों? हाँ, टेंशन नहीं लेने का, मैं बता देता हूँ सारे लोगों को कि हुआ क्या है। देखो, प्रॉब्लम ये है कि इनको आती नहीं है हिंदी और उर्दू, ठीक है, लेकिन इनके कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बारे में नेगेटिव चीजें बताते हैं कि भाई ये जो चैनल है ये प्रोपेगेंडा चैनल है, हेट फैलाता है, मुसलमानों के खिलाफ है, ऐसा है वैसा है। तो अब इनको तो समझ में नहीं आता है, इनको ये सुन रहे हैं किसी और से, तो अब इनको आंसर भी करना है, क्योंकि वो सवाल करते कि तुम ऐसे चैनल पे क्यों जा रहे हो, ये तो ऐसा चैनल है क्यों जा रहे हो। लेकिन इनकी बेस्ट बात ये है अपोस्टेट अलादीन की, ही स्टिल एक्सेप्टेड आवर इनविटेशन, ही केम, और ये सोच के आए थे, इसी वजह से इन्होंने बीच में भी बोला कि नाउ आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चंस, क्योंकि इनके दिल में पहले से था कि मुझे ये क्लैरिफिकेशन लेना है भाई कि क्या है, कहीं मुसलमानों के खिलाफ तो हेट नहीं फैला रहे हो आप। तो हमने तो भाई पहले से बोल के रखा है, हमारा इंटेंशन बिल्कुल साफ है, हम तो मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं, वी लव मुस्लिम्स, we want them to understand what is wrong with Islam. We know, and we try to tell them that you are the first victim of Islam. तो भाई हम उनसे हेट कैसे उनके खिलाफ पहुंचाएंगे? हम तो चाहते हैं कि वो निकले, और यही हमारे चैनल का है। तो कोई ऐसा आता है, सवाल करता है, बिंदास करने दो। देखो, एक चीज तो ये है कि मेरी इंग्लिश इतनी ज्यादा फ्लुएंट नहीं है, इतनी ज्यादा सही नहीं है, इस वजह से मैं इनको जो मेरे दिल में चल रहा है, दिमाग में जो चल रहा है, जैसा मुझे आंसर देना चाहिए, पॉसिबली मैं उस तरीके से जवाब नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन यही सवाल अगर कोई दूसरा चैनल वाला आके, जैसे अपने ध्रुव राठी साहब है, या फिर वो राना अयूब है, या फिर कोई और है, अगर वो लोग आके हिंदी में मुझसे उर्दू में इस तरीके के सवाल करे, तो बहुत अच्छे से उनको जवाब दे सकता हूँ। मैंने पूरी कोशिश की इनको भी जवाब देने की कि भाई क्या सीन है, और मेरे ख्याल से उनको समझ में आ गया होगा। तो रिलैक्स गाइस, नो नीड टू वरी। हमेशा हम दूसरे को इस पे लाते हैं ना, आज अपना भी क्वेश्चन होने दो, सेशन होने दो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अपोस्टेट अलादीन को बता दो क्या बात हुई अभी। I was telling people that that you listen all these things from different people, and since you do not understand Hindi or English, Urdu, you cannot yourself comprehend what is going in our channel. So obviously, when you heard something from them, it is your duty, and you should be asking these kind of questions, and we are absolutely okay with anyone asking us any question. We will answer that, and whatever is truth, we'll tell that. Yeah. So I was just telling my audience that this is what was going on. No, I appreciate your openness about this, and there wasn't some kind of truth that I was trying to uncover that I thought you were hiding. I do think that you're answering me very honestly. So I will believe what you tell me as that is so kind of you. ये कह रहे हैं कि इनको ऐसा लगा था कि मैं कुछ छुपाऊंगा, मतलब साहिल कुछ छुपाएगा, लेकिन ही इज कन्विंस्ड कि मैं ऑनेस्टली आंसर दे रहा हूं भाई। तो देखो, ऐसे लोगों के माइंड को जो नेगेटिव फीलिंग के साथ आते हैं, इस तरीके से चेंज किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि मैं कन्विंस हूं कि भाई आप कुछ छुपा नहीं रहे हो, मतलब वो क्या कहते हैं, मेकअप आर्टिस्ट नहीं बन रहे हो, बल्कि आप ऑनेस्टली आंसर दे रहे हो। थैंक यू सो मच अपोस्टेट अलादीन। And I mean, if you don't mind, if you want to ask me some questions, so it's fair. I feel like I've monopolized the conversation a little bit, because I still have a lot that I would like to know from you. So feel free to ask me some, in return. No, absolutely fine. The intention of calling you, because this entire month I was trying to cover stories of ex-Muslims, and 4 ex-Muslims from Pakistan. We gave them this platform. We gave platform to ex-Muslims of Bangladesh also. So our intention is very
pure. We want as many ex-Muslims as possible from different region to collaborate with us, so that everyone knows that these are the people working relentlessly to educate Muslims what is the true Islam. So our intention is very, very pure, that we want every ex-Muslim channel to grow. 4 नहीं एक्चुअली साहिल 5 है, और इंक्लूडिंग अपोस्टेट अलादीन 6th इंटरव्यू है ये. You are the 6th person this month, we are interviewing. Otherwise, mostly we do discussions with Muslims. We are celebrating apostate month this month, Aladdin. Yeah, I always forget to do something about that. So thank you for remembering that ex-Muslim month. Yeah, and again, I appreciate you having me here because, as I understand it, because most of your conversations are with Muslims, the other side of ex-Muslim, ex-Muslim groups, the side that doesn't speak Hindi or Urdu, they are very curious and they want to know more. And if you think that you're being unfairly represented, I want to make it clear to them, what you believe and why you believe and behave in ways that you do. So that's why I ask a lot of questions. So do you want to take some of the questions from our viewers through Super Chat? Sure, yeah, I don't mind. I still have some questions I want to ask later, but feel free. भाई लोग, अगर अपोस्टेट अलादीन के लिए किसी के पास कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं. इंश्योर ही इज आवर गेस्ट. सो और मैंने ऑलरेडी बता दिया है, उनको हिंदी और उर्दू नहीं आती है, इस वजह से उन्होंने जो सुना था उसको उन्होंने क्लेरिफिकेशन लिया. सो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. आप उनसे जो भी सवाल करना चाहते हैं कर सकते हैं. बी रिस्पेक्टफुल. ही इज आवर गेस्ट. ही इज एक्स मुस्लिम. उनका कोई प्रोपेगेंडा नहीं है. वो I don't get my feelings hurt very easily, so feel free to ask questions in any way. I'm fine. तो किसी के पास अगर कोई अपोस्टेट अलादीन के लिए सवाल है तो they can send it to super chat. Meanwhile, I'll just check if the existing super chat has any question for you. Sure. Okay, let me check. साहिल भाई, मैं स्ट्रीम में रहूं या फिर मैं YouTube से देखूं? थोड़ी देर रहो. ठीक है. ओके. अच्छा अमित, जरा फटाफट सुपर चैट में देखना कुछ सवाल है क्या अलादीन के लिए. बारबेरी का स्मृति तो कह रही है अबाउट द एग्रेशन, सुगर कोटेड ट्रांसलेशन ऑल्सो वाइडन्स द कॉग्निटिव डिसोनेंस दैट अ टिपिकल मुस्लिम फेसेस व्हेन दे आर प्रोवाइडेड विद एविडेंस. सो दिस इज अ मैसेज फ्रॉम बारबेरी का स्मृति. Sure. What is the question in the message? It's not a question. It's just that she's highlighting something. Okay, we have holy humanist Nuria Khan as well. We interviewed her as well. Hey, she's telling, I hope you know her. Yes, of course. We've spoken before. Okay. She's telling, so good to see this crossover. Thanks Sahil and Apostate Aladdin for sharing your experience with the Hindi Urdu audience. English मस्त है आपकी Sahil. Thank you so much holy humanist जी. मुझे नहीं लगा था और मुझे अभी भी नहीं लगता कि इतनी अच्छी है. हाँ, लेकिन काम चलाओ उतना इंग्लिश में बोल लेता हूँ. थैंक यू सो मच. नूरिया जी अगर फ्री है तो साहिल भाई इनको भी लिंक भेज दीजिए. अगर नूरिया जी 5-10 मिनट के लिए अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ के you can also share your thoughts about me to Apostate Aladdin, because you were also part of the discussion we had I think before 2 years on this channel. आप लिंक भेज दीजिए उनको. ने पहले वो कंफर्म करेगी ना तो फिर उसको लिंक देते हैं. मेरे पास अलग से आई एम नॉट इन कॉन्टैक्ट विद हर. अच्छा. हाँ. लुकस कह रहे हैं थैंक्स साहिल, यू आर आल्सो सपोर्टिंग मातृभाषा इवन इफ एवरीवन अंडरस्टैंड, लेट देम बार्क. थैंक यू सो मच लुकस भाई. राघोजा काइंडली डिफाइन जिहाद बाय लुगत एंड if you can define, since you are an Arabic speaker, this guy wants to know, can you define jihad by lugat? Word jihad. Like you mean like the meaning of the word? Yeah, meaning in Arabic. In Arabic and the terminology in Islam. So the way that I understood it, even from a very young age, is jihad could be many things. It could be, it basically means struggle. So you could have jihad in the way that you conduct your life or do your work, or the way that you study, or the way that you pray.
basically jihad is a struggle. But of course, in the mainstream, it's been used, and actually even in older sources of Islam, it's the same word that is used to talk about fighting and talk about dying and martyrdom and things of that nature. So it's used in both ways, but in an Arabic context, like in the Middle East, for example, it is a bit easier to understand which meaning it is depending on the context of the sentence. So jihad could mean a struggle and a strife for something better, or it could mean, the kind of jihad that we think of when people say jihad. Contractor is asking, is exam a jihad, Aladdin? I think it depends on how you view it. I mean, I didn't view my exams as a jihad to be a better person or to do something. But if you want to view studying or exams as jihad, I think according to the Islamic definition, you could. Okay, KK is telling specifically to you, trying to give you what happened in India. He's telling there is Aurangzeb Mazar, Mazar is shrine in India, who massacred, enslaved, destroyed temples. That should tell you about our tolerance. Muslims want exclusive lands. I would disagree with the last part of that Muslims want exclusive. Like, it's hard to say that Muslims in general do, but of course there are Muslims in India and in many parts of the world that want their area to be more exclusive. I can't say that that I'm denying that happens. Yeah. So, in fact, I would like to add here, Aladdin, the entire concept of Islam and what Rasulullah Prophet intention was to spread Islam, and not only spread Islam, but the rule of Islam. The constitution of Islam should be imposed on all the parts of the world. So you need to keep in mind that the basic ideology of Islam is Islamic constitution on all parts of the world, and you can find verses in Quran stating this. Yeah, I'm well aware of that side of Islam. I just don't like talking about Islam as if all Muslims know or apply this. Yeah, I agree with that part. Yeah. And unfortunately, many people would know about this and then they would justify it. But it's similar to what you said about how some people get heated up and they don't actually mean what they say. I think that a lot of Muslims don't rationalize it or don't think about it realistically. They're just trying to justify what the Prophet said. Richa Shivastav is telling that very clear and insightful mindset of the guest tonight. It was a pleasure listening to such clear thoughts and rational thinkings. Kudos, Sahil and Adam. Thank you so much for the appreciation. Acha, Lucas bhai keh rahe hain, tell him about Nupur Sharma, BJP government, and in fact, I will also add this comment of our one more supporter. His ID is Gangadhari Shaktiman hai. Is telling Sahil, you made everything about yourself. Tell him about Nupur Sharma case and Kanhaiya Lal murder. How Muse are targeting only majorities and murdering them. It's not what he thought. So, have you heard about Nupur Sharma by any chance, Aladdin? Yes, and I made a video about it as well. Yeah, I am aware of Nupur Sharma. Just because. Taylor Kanhaiya Lal. Have you heard about Kanhaiya Lal? No, I haven't. But I mean, even if I have heard about it, what would knowing about this add to the discussion, or what did I say that would imply that I don't know about this, or if I knew about it, my opinion would change? No, they are just trying to tell you that this is what happens in India. This is how the mindset of Muslims can be twisted by the scholars through Islam. They are trying to tell you, and we have seen so many cases like that. This is what they are trying to tell, and they are trying to tell, as I already said, that Muslims are very free in India. In fact, they, as I said, they ensure that they get things which they want. So this is the position of Muslims in India. I think I understand what the super chat is trying to say and your position here, but what did I say that implied that I don't think that's the case, or that I'm not aware of these things?
Like, I'm trying to understand of what motivated that kind of comment. Because you thought, like, you have been told, like, the Muslims in India are getting beaten, people are the non-Muslims are क्या कहते हैं यार उसको, उस पे जुल्म कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे हम लोग, they are Ostracized. harassing them, क्या कहेंगे उज्जतुल काफिन? But I didn't say any of that today, though. No, they are getting the feeling that you might have that kind of thinking, that this is the position of Muslims in India. No, I don't really have a position, or like I said, I don't even have enough information to tell you how Muslims are treated in India. I'm just confused by how I'm getting a lot of examples about things that Muslims have done to harm others in India. But again, I'm not seeing the relevance to anything I've said in this conversation. Prakash Singh is asking what kind of Muslim Aladdin gets on his channel. All sorts, to be honest. I've had Muslims who argue with me. I've had Muslims who send threats, but I've also had a lot of Muslims who are everyday people who tell me what they believe, and then in that conversation, they could be stubborn, they could be open-minded. I've had all sorts of Muslims, and I have to say, in the beginning, I've received a lot more opposition than I do now. I still receive as many callers as before, pretty much, but I think that they come to me expecting, or some of them come to me expecting a fight or expecting a certain kind of tone. But then once they start talking, even the most aggressive ones, they can be disarmed. And not just Muslims, people of all faiths or positions that they're stubborn about. And I've spoken to all sorts, but I have my fair share of very funny and very absurd conversations with people who believe things that I don't agree with. Varun is telling difference is that for cow case there is no Salman Rushdie, whereas for blasphemy there are many Salman Rushdis. How so? Oh, I mean, okay, sure. Okay, it's okay. Contractor Apostate replace the word cow with dogs, and you have your answer on why people hate it. No, I never questioned why people don't like other people eating beef, but I understand that to some extent there are a lot of people in India who view cows the same way that other people view dogs. But I don't think that anyone should be harmed for disagreeing. HS is telling your view on Sharia law. I don't know where to begin to answer that question, because Sharia means law, basically. So this means Islamic law. What is my view on Islamic law? It depends on which expression of it is, but in general, I don't think that any religion should play a part in governing people. I believe in secularism in the sense that religion and state should be separate to ensure the rights of everyone, including religious people. Yogi ji, take a cow and eat it even if it's illegal. They are mocking Hindus. Easy to judge from outside. They literally burn train consist of Hindus. योगी भाई देखो, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो मतलब इन लोगों को पता नहीं होता है, क्योंकि इनको इंडिया का पता ही नहीं होता है. द प्रॉब्लम इज दैट, और मैंने पहले ही इनको बोला था कि जितना प्रोपेगेंडा इंडिया के लिए या नॉन मुस्लिम के लिए बाहर परोसा जाता है, उस हिसाब से इनकी अंडरस्टैंडिंग बनती है. तो मेरे हिसाब से इन लोगों का प्रॉब्लम नहीं है ये. इनको जो फीड किया जा रहा है यहाँ पे, हमारे वहां पे जैसे लोग है, ये क्या नाम है उसका, जुबैर, कौन सा, जुबियर, हाँ, तो ये लोग जितना फीड करते हैं ना प्रोपेगेंडा, बाहर के लोगों को उतना ही मालूम होता है भाई. तो उस हिसाब से इनकी फीलिंग, मतलब इनकी सोच वैसी बनती है, अंडरस्टैंडिंग उनकी उस हिसाब से बनती है. इनकी इतनी इसमें गलती नहीं है. अच्छा साहिल, अपोस्टेट अलादीन अगर यूएस में होंगे तो इनको पता होगा कि अमेरिका में डॉग को मारना बैन है. तो अगर मुस्लिम सिर्फ अमेरिकन्स का दिल दुखाने के लिए वहां डॉग को काट के खाएंगे तो कैसा फील होगा उनको? हाँ ठीक है, लेकिन डॉग उनके लिए होली नहीं है ना. होली नहीं है, फिर भी अगर बैन है और उनको सिर्फ चिढ़ाने के लिए खाते हैं तो गलत है ना. हाँ वो भी गलत ही है, लेकिन थोड़ा सा ये है अपना, थोड़ा डिफरेंस है दोनों में. बट एनी विच वेज
Rabindra keh rahe Muslims may be good but not the Islam. Muslims are just the puppet of Islam. Ignoring words of Islam is not an Muslim at all. So something I noticed, like when you call people, puppets of Islam or victims of Islam, do you think they would be likely to listen, even if you do have the truth about Islam? Do you think that they would be likely to listen to what you're saying, or have an emotional reaction and act angry, and then, they play into the stereotype that they are angry? Karna Talks is asking, does Aladdin believe Gangadhar hi Shaktiman tha? So he's trying to ask, do you also believe that Allah is actually Muhammad and Muhammad is actually Allah? I mean, Prophet Muhammad has Fake ID. Allah is the fake ID of Prophet Muhammad. He invented that there is someone called Allah, and it was actually Muhammad who was speaking on behalf of Allah. There is no Allah. It was Muhammad only who was telling things in the name of Allah. What do you think about that? I mean, of course, I don't believe there is an Allah. So is the question, did Muhammad believe that there was an Allah telling him things? No. Like, was he delusional? मैं आपके लिए क्वेश्चन ये पूछ देता हूँ, ठीक है? No, I think I understood the question. I mean, my question to myself would be, did Muhammad lie about the presence of Allah and say that, right, this verse is from me instead of Allah on purpose? Or was he delusional about it and it somehow made its way into his delusion, including in some verses where it was very convenient for him to have these verses? I'm not sure which one it is, because we haven't been there to observe Muhammad. All I know is Allah is not real, and there are a lot of verses that serve Muhammad that are said as if Allah, said them, but it was obviously Muhammad was saying them. So whether he intentionally designed it that way or if he was delusional about it, I cannot tell. Right. KK is telling Muslims in the West should shout about Hindutva India, never utter a word about the plight of all kafirs in Pakistan. Women forced to marry off old babas every day. Have you ever heard people telling what the minority is going in Pakistan? Have you ever heard? Yeah, my experience hasn't been that no one utters a word about it. I mean, I have had many callers who talked about it. In fact, Pakistan has banned my channel, and every now and then they ban another video from being viewed. So I'm very well aware of Pakistan's censorship, but I don't think that this is a case of people only talking about issues in India and not Pakistan. I've been exposed to many of these complaints as well. No, but we have not seen people coming out on road, how they are coming out for Muslims. We have not seen people coming out on road for the non-Muslims who are tortured in Pakistan. We have not seen that. So there's a difference. I think I have an explanation for that. If there's a minority, you need to have another group outside of that minority that supports them to a large extent, or people of the same group that support them. So it's hard to find support for minorities, but when you have issues where there's a large enough number to go out and protest who aren't being persecuted, then you'll see more protests. Jai Bholenath is telling Muslims steal cows and livelihoods, sow the tension, also beheadings. Yeah, I don't know what to say to that, really. Yeah, but that doesn't mean that people can take law in their hands. I don't agree with that. Arun Bhatt, Aladdin sir, my community was exiled in Kashmir. I am very sorry for your community and yourself. Kashmiri Pandits, I'll suggest you to read something about the Kashmiri Pandits and the genocide that happened with them, done by Muslims. I think people are talking to me as if I'm ignoring wrongdoings, done against anyone who's not Muslim. That's not the case. Okay. No, but they are just also, telling you to read about the other things as well. Maybe this is what their intention is. Mm-hmm. Okay, Nidhi is telling him about privilege, about Hajj subsidy, etc. Nidhi ji, ये तो Hajj subsidy तो अभी मेरे ख्याल से बंद हो गया ना? अमित बंद हो गया ना? हाँ, खत्म हो गया. अभी खत्म हो गया. पिछले 70 साल से दी जा रही थी Hajj subsidy. Exactly.
Jansen, your patience explaining your approach very well, Sahil. I don't speak Urdu, so I was curious. Thanks, Apostate Aladdin, for the questions. Keep up the good work. Stay safe. From a Dutch ex-Muslim. Yeah, thank you, Jansen. I recognize them from my channel as well. Thank you. Oh, thank you, Jansen, and welcome to our channel. Acha, Vijay bhai keh rahe, what did God Allah mean when his interpretation varies? Then God did not do a good job of sending his message. Yeah, I think I say that all the time, that the method of transmission in general, not just in Islam, but the idea that God spoke to people through texts that don't change, I don't agree with that, with any religion, because people will misunderstand. So it's the author's responsibility to write it in a way that is clear and flexible and can be changed later or can be clarified. So I think the best method of transmission for God would not be through texts, whether it's Islam or otherwise. ओके भाई लोग थोड़ा सा हाथ अभी हल्का रखो, क्योंकि अलादीन साहब को भी इतनी लंबी लंबी स्ट्रीम करने की आदत नहीं है. आई एम जस्ट टेलिंग देम दैट यू नो एज ऑफ नाउ स्टॉप सेंडिंग क्वेश्चंस बिकॉज यू डू नॉट हैव हैबिट ऑफ doing lengthy streams. We have the habit, but I'm sure I'm okay with that. I've done a stream as long as 6 hours before. Then that is fine. Is fine. Okay. But I might not be here for the call section, but I still have time. Okay. Rebirth is telling, I eat pork, beef, pigeon, dog, and fish. I'm not a Christian or Muslim or Buddhist. I'm a Hindu who does not worship anything. Trust me, Muslims are safe. Only request is please don't cut cow in Hindu majority area. If I am not Hindu, then what am I? I have a question. There's a recurring theme that I see here of comparing Islam and Hinduism, or having Hinduism in the conversation about Islam. Why do you think that there's such a big overlap? So you have this question for the audience? No, for you, because I notice a lot of the audience are talking about conflict between Hindus and Muslims and things related to Hinduism and beef, for example. Why is the main conflict here related to, or why does the topic of Hinduism come up so often? I think they want to show that Hinduism has been misrepresented to the non-Hindu audience outside India. Maybe they are trying to tell, we have a very different concept, we have a different understanding. So possibly because of that, they are trying to compare it. I think so. I don't know exactly how to answer on behalf of them. Yeah, so far they haven't spoken much about Hinduism necessarily, but just about the conflict between them. And I'm curious why. From the conflict, they are trying to show the difference. I mean, yeah, I don't know if the conflict would show the difference that way, but I'm asking you, aside from the super chats, just in general, have you found? Sorry, I'm straying a little bit away from the super chats, but I think it's related. Have you found community with? Obviously, Muslims have not been welcoming, and they've been hostile to you. Have you found community with Hindus in India? I mean, those who left Hinduism and people are against them, something like that. No, I mean, for you, when the Muslim community obviously rejects you, and they reject me as well. Were you able to find community somewhere else? No, everyone else, they are with me. So everyone who is not, like, you found community in everyone who is not Muslim? Yeah, the non-Muslim communities, they are with me. They are not against me. Mm-hmm. Okay. Hujjat al-Kafirin is telling why translators are not honest. They change the original text the way they want. Example 3340, translating Arabic word kan as is while it means was.
माँ का ना मोहम्मद वाली जो आयत है 33-40 और 3 की 60 माँ का ना जो इब्राहिम है उसके लिए पूछ रहे। So he's trying to ask they translate the meaning as per their need कन्वीनियंस or as per their convenience. Mhm. So what is the reason for that? Why they are not honest? I can't speak for their reasoning, but I can tell you that yes, I've seen many translations where the translation was incorrect. I don't know if it's because of actual ignorance or because of intentionally misleading people, but I know that these mistranslations often serve to make Islam seem a little bit better than it actually is. So that's what I can say. Okay, iQuick is telling Gangadhar asked Apostate Aladdin need to explain his thoughts in Nupur Sharma and Kanhaiya Lal's tragic incident because he has asked so many questions about Tufail. So they want to know what is your thought about Nupur Sharma since you know about her and the killing of this tailor named Kanhaiya Lal just because someone from his house kept the post which was supporting Nupur Sharma. He was brutally killed by two Muslims. So what is your thought about that? The Like killing I said, in the name of Islam. I even had a video about Nupur Sharma talking about how she was within her right. She didn't say anything wrong. I mean, everything she said is stuff that, at least in that clip, that she got in trouble for. What she said about the marriage of Muhammad is what most Muslims believe. So I don't think she should be in trouble, even by Muslims' own, beliefs. She didn't say anything that is wrong. So I certainly don't think she deserves any backlash for that. And as for the person who was murdered, I certainly don't think that was a good thing. Of course, I'm very sorry for their loss and their family around them. And I've spoken about cases like these, not specifically just in India, but all around the world. So I'm very, very aware of them. Still, In fact, Sharma can't make public appearance. She is hiding from Muslims. Mm-hmm. Yeah, and let me also tell you, Aladdin, that what Nupur Sharma told was in response to the Muslim speaker who was calling her on her belief about Mocking. her God. Yeah, I know that it was a response to a provocation, but it didn't matter to me whether she was provoked to say it or whether she said it just during a conversation. Either way, she had the right to say it, and I don't think she did anything wrong. And I think she's getting a lot more backlash than she deserves. Chetan Gopal is telling, hi, Apostate Aladdin. I have noticed that young Muslim men in the UK and US seem to be more fundamentalist than the average Muslim. Why do you think that is, if you think it is? I don't know. I think the statistics are difficult to find, if even non-existent, about that kind of thing. We can hypothesize that people who are isolated from their communities, or that live in insular communities away from home, or that are ostracized by the countries that they live in, tend to become more radicalized and tend to romanticize their belief or their homeland. So that's as much as I can say about that. I don't know if it's actually true that Muslims on average in the US or the UK are more fundamentalist, but I know that there could be a trend that way because of these factors. Perth is telling, do Arabs carry guilt for promoting this religion? I don't think so, because if someone is promoting this religion, I believe that they genuinely believe that they're doing it for good reasons. And I think they think that they're saving people by making them join Islam. Just like people who proselytize for Christianity, they think that they're saving you. So I don't think they would feel guilty for inviting you to Christianity or Islam. Okay, Tech Decipher is telling, hi Aladdin, people are trying to express their feelings about what has been happening to us. Sahil emerged to be our voice and we respect you, Aladdin. Sure, thank you for the comment. Similarly, Perth is telling Hindus are skeptic because Islam is responsible for major genocides in history and the Nupur Sharma case is the reality of the divide. Okay. KK, don't fall to Mojab and company propaganda in the West. Mojab ko Mohammed Hijab. Acha. Yeah, who's
Like, are they saying that to me, that I shouldn't fall for Muhammad Hijab and his company's propaganda? Bhakti Vedanta philosophy. Would you like to visit and volunteer in any Gurudwara Langar or ISKCON free food program? So it's a question for you. Maybe the place where you live, there may be Gurudwara, and every day they feed people. It's called Langar. Free of cost. So she was asking, would you like to visit and volunteer in such places? I'm not sure. I haven't heard of these places. I think I volunteer enough for the time being, but if I ever have the chance to volunteer in the future, I will consider what is around me. Lucas is telling Nupur is from majority BJP, so-called anti-Muslim. Still, her future is destroyed. FIR, and she was threatened to be raped and murdered. Bharat is more Islamic than Hindu. So this is also true. She was, suspended, removed from the party, and her future is destroyed. There were cases in the court against her, and she was threatened to be raped and murdered. Everything happened to her. Satyen Velankar is telling, in a speech at Jeddah in the year 1986, Maulana Abul Hasan Ali Nadwi said that banning cow slaughter just because Hindus feel bad about it is haram. Reference Fatawa al-Rizviya, Urdu, Volume 6, page 149. Satyen Bhai, see, he is actually true. In perspective of Islam, it is true that just because certain community does not eat something or it's holy for them, you cannot make it haram. So in fact, if you read Quran, Surah Tahrim, the first verses talks about that, and it says the Allah is telling to Prophet that how can you make something haram which Allah has made halal for you. So no one can make anything haram which Allah has made halal. So as per Islam, slaughtering cow is halal. So even if it hurts anyone's sentiment, Allah doesn't care. Islam doesn't care. Mm-hmm. So we've answered a bunch of super chats. Do you have any other questions for me yourself? Because I have some follow-up questions that I'm curious about. No. Apart from super chat, I don't have any question from you. Okay. Yeah, I'm happy to take some more of these super chats. Sorry? I don't have any question for you. Okay. So a lot of the super chats that you've been receiving are trying to show me examples of how of the conflict between Hindus and Muslims in India. And a lot of them, I'm aware of many of these examples, but I feel like they're treating me as if I am a Muslim who's trying to prove a point for some reason. So yeah, I just want to clarify that. That I am not a Muslim, but even if I were a Muslim, I don't think that these super chats or these questions have anything to do with what we're talking about. But I understand where they're coming from. But I am very curious, how come there's a huge overlap between, talking about Islam critically and also talking about not just Hinduism from a theology point of view, but the political climate in India and Hindus in general. Why is there that overlap? यार उज्जैदुल काफरीन भाई, ये समझा सकते हो ओवरलैप का इसमें क्वेश्चन का मतलब क्या है? श्योर। ये बेसिकली सवाल पूछ रहे हैं कि जब भी आप इस्लाम के बारे में बात करते हैं तो उस कॉन्वर्सेशन में हिंदुइज्म एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया भी साथ में क्यों शामिल हो जाता है? इस्लाम की बात करते हैं तो हिंदुइज्म और पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडिया क्यों आ जाता है? यार इसका जवाब कैसे दो? आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट. तो जनरली अवॉइड ही करते हैं ना साहिल भाई इस चीज को, बिकॉज Aladdin, see, on our channel we don't talk about any religion, so we talk only about Islam. We do not promote any religion, we do not criticize any religion, we talk only about Islam.
So I don't know how your question is relevant about my channel. I don't have any idea, but maybe because of the super chats, you're asking this. But if you're talking about my channel, then we do not promote any channel. Sorry, we do not promote any religion. We do not criticize any religion. Okay. अच्छा साहिल भाई इनको बोलो फर्स्ट Apostate Aladdin, can you read the private chat? I see that there's someone trying to troll in the private chat. Yeah, I've first had so many issues with the private chat on StreamYard on this platform that I actually had to completely abandon it because some people were sending very horrible things. So, yeah. And I would like to tell Muslims, and in fact all non-Muslims also, that see, even being an ex-Muslim, and we all have the same feeling. We are not against Muslims. We have problem with Islam. Just imagine he is an ex-Muslim and he is talking about the rights of Muslims in India. I mean, if something is going wrong with the Muslims in India. So Muslims, just imagine, you want us to kill, but we still care for you. Take example, Apostate Aladdin. He's ex-Muslim, and I mean, from my interactions with that, Aladdin, they want us to kill, but still we want, we think about them. We think about their rights. I don't think that they is that generically applicable. I mean, I've spoken to so many Muslims, and yes, I get examples like the person in the private chat. But I think that the tone that you approach the conversation in will determine what kind of caller you receive and what kind of language you hear from those people. So I'm not saying that you haven't received a lot of hate from Muslims, but I think that eventually it starts to feed into a cycle. Like, you get a lot of hate from them, you respond to them, and then they give you more hate. Have you ever thought about ways to break that cycle? Okay. So, Aladdin, any more question for me? I think उन्होंने आपसे सवाल ही पूछा था, मैं ट्रांसलेट कर दूं आपके लिए? हाँ. एक्चुअली उन्होंने पूछा था कि इन्हीं कमेंट सेक्शन के लिए उन्होंने पूछा था कि ये जो हेटफुल कमेंट आ रहे हैं ये बेसिकली एक साइकिल में चल रहा है, मतलब यहाँ से हेट आया, फिर और हेट यहाँ से हुआ, फिर और हेट हुआ, तो ये जो पूरा जो हेट का साइकिल है कि मोमिन हजरात ने यहाँ पे थोड़ा बहुत हेटफुल कुछ बात की, फिर थोड़ा आपने भी आपा खोकर उनको कुछ बोल दिया, फिर वो उसी माइंडसेट के साथ वो फिर से आ गए और नफरत के साथ, तो ये जो पूरा साइकिल है आप इसको आप कैसे तोड़ सकते हो? No, see, we don't hate Muslims. We don't hate Muslims. That's not what I mean. But I think that, like, for example, what you mentioned earlier about how you said that sometimes they act aggressively, the people who call, because you mentioned their family members being in a position of slavery or so on. But then you also say that that gets them out of the religion. So do you think that the way that you talk to them or the examples that you bring up might be causing them to act in hateful ways, or might be attracting the more hateful people? No, I don't think so. I think, this is a good way to let them think and ponder what is right and what is wrong. If someone has some other way, through which they can bring or tell them the truth of Islam and let them think, then it's up to them. We find this way a good way that, they think about that. But is it really a good way if, I mean, you're telling me that they're acting aggressively. So is it a good way to demonstrate to other people that the religion is false, or to demonstrate to the caller why they're wrong? I think that is a good way, because I think that, it makes them think. So for me, it's a good way. For others, it may not be a good way. So others can work in ways they find it good, and we will work in ways that we find it good. Yeah, no, of course. I mean, that's another thing that I learned. I've only been doing this for a couple of years, and I realized that people should have different approaches to conversation, and I shouldn't think that people need to have conversations the way that I have conversations.
But I'm trying to think of why people behave the way that they do, like why your experience of callers is very different than my experience. You say that, you know, it has to do with them being from India or them speaking Hindi or Urdu. I don't think it's specifically the language or the region. I think it's also has to do with the climate, the political climate, and it has to do with how you're having conversations with them. So if you say things that are more antagonizing, that are, you know, maybe it'll shock them more if they think of their sister or mother as a slave, but it's not going to achieve the goal that you claim you want to achieve, right? But Aladdin, as I said, we have seen the result, and the result is good. Maybe different for you. You are getting some different kind of callers. I don't know how you conduct the discussion, what questions, what topics you talk to them. I don't know how many callers you have spoken about slavery or child marriage, but we are dealing with people, who understand basic things, not very technical. So we need to bring them topics which are more easier to understand, which we can, show them the examples in their own family and something like that. So we have a different kind of people coming to us and talking to us. As I said, Muslims in India, Pakistan and Bangladesh, they don't know much about Islam. It's the major need to honor the prophet, and they cannot listen anything against prophet. Apart Mhm. from that, most of them, they are not aware about Islam. Most of the people that I speak to also aren't very well educated in Islam. But I found very early on that if I start by telling them the examples of all the bad things in Islam, it might make for an entertaining conversation, or might make for an animated conversation. But at the end of the day, they don't change their mind anymore. They just get more aggressive. So what is your view? I mean, how you want to deal with that? You want to say good thing about Islam, and then maybe you start with the bad thing about Islam. No, no, How? I never lie to anyone. I mean, obviously everybody lies, but I mean, as much as possible, I try to be honest, especially when I'm talking to people online. So I don't try to lie to them and say that Islam has good things and bad things, and this is what I like about Islam, or I don't try to deceive them in that way. I tell them very clearly some of the issues that I have, especially things that are more relevant to them and to me. So, slavery, I'm not saying that slavery did not happen and it didn't harm so many millions of people, but it's hard for them to understand it. Like maybe you can throw their sister into the equation, but it's still going to be hard for them to understand it. So I try to focus on topics that affect them and me, and to understand why they believe, and then we can go from there, instead Okay, of so kind of trying to just show them all the wrong things in the religion. what kind of topic you cover mostly? Like I start, for example, by asking them, what makes you a Muslim? Why do you consider yourself a Muslim? What do you find compelling about Islam? And then we can talk about those things. And I tell them very honestly, I don't agree with you. I don't believe these things. But in that way, at least they don't get, like, sometimes some of them still get angry, but most of them don't get really upset the same way that they would if I told them, what if I took your sister as a slave? Though it does happen sometimes that we get to that point in a conversation as a hypothetical, but usually they don't feel as emotionally charged about it. Okay, so that is your approach, Apostate Aladdin, but we have a different approach. And, let me also tell you that every week when we do a stream, we have a topic about Islam. So it's not all the time, it's not about slavery or child marriage. We have covered so many topics, so many different topics, the test concept, free will, and, hidayat and gumrahi, guidance and misguidance. So every week we select a topic and we talk on that. So we have a different approach. We don't keep the stream an open stream all the time. It's a topic specific stream. People have to come and talk about the topic on which we have kept this stream. Mhm. So we have a different style of running the stream.
So something that really worries me, as you know, again, someone who's not familiar with the concept, is or the Mozzarella cheese. Yeah. Mozzarella cheese is telling Sahil, get some collars for him, and then he's gonna know. I mean, The problem I do is- get callers every week, but the thing No, is, what are they callers that expecting? take- You know, The I mean, collars yeah, that take- you know, you and I get different callers, but I mean, why is that? But something that I could tell you that makes me nervous back when I was a Muslim and when I left Islam is seeing a lot of people who aren't, you know, a lot of unfamiliar faces and a lot of people who seem to really, really dislike me. So that makes it a very hostile situation. So it's hard to have a good conversation with someone when they might come and see, you know, all the chats are telling them mean things and you know, pointing at them. So maybe that's part of it. No problem. So thanks a lot. Sanatan Sena ka Sipahi is telling Aladdin, read our last 1100 years history. Then you will know how our questions come. Similarly, okay. Mrutyunjay is telling Aladdin there are two ways to do it. Either you state the facts and move on, or engage further and trigger them to that extent that they go into self-analysis, which forces them to further study the nuances of Islam, which in turn gives them reason to live. So Mrutyunjay is telling you why we do in this way. And Nation First, the answer to bring Hinduism in discussion is because when question asked to Muslim about Islam, they bring other religions' teachings in it. Muslims bring government in it with false allegation of atrocities by government. Yeah, this is also a common problem that we face. Whenever we show them anything about Islam, the first thing that they do is they bring other religion, though we do not believe in any other religion. So this is what happens most of the time. सेकेंडली साहिल भाई वेस्ट में फ्री स्पीच है और ये जो अपना स्पीकर्स कॉर्नर टाइप का एंगेजमेंट होती रहती है. यहाँ इंडिया में बिल्कुल एंगेजमेंट नहीं है मुस्लिमों के साथ में, और यहाँ छोटी छोटी बातों में ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सर तन से जुदा और इस टाइप की चीजें होती है, तो करना पड़ता है अपने को यहाँ पे इस तरह से. Right. To be clear, I wouldn't participate in the same kind of conversation. Because Muslims bring up other religions, then we need to talk about other religions. But I get where you're coming from. And I have a question that is about nothing related to any of this, if you would like to hear it. Yeah, please go ahead. So I would like to know, I know about your faith before you left Islam. Do you believe in anything about God or the reality that we live in now? Anything spiritual or religious? What is your what is your belief now about the world? I am trying to form a new religion. I'll be the founder. I told it a couple of times to Muslims as well and to my audience. It's in progress. It will be called Sahilism. In Sahilism, we don't care whether God exists or does not exist. What it cares is, what we think about others and how we can be good to others. So we don't care whether God exists or not exists. It will not make any difference in our life. So this is what Sahilism is, and I am the founder. And let me also think on writing book about this. Oh, like you're serious? Like you're actually starting a religious movement? Yes, I'm not that serious, but yes, little bit seriousness I have about Sahilism. Yeah, like I'm wondering if it's also part of the persona. Is that why you have like an S, like a Superman S? Yeah. Yeah. Okay. So to be honest, I don't care whether God exists or God does not exist. I don't care. Okay. But I mean, aside from whether or not, so you don't care whether God exists or not. Again, this has nothing to do with anything we were talking about earlier. I'm asking you because I am also someone who has left Islam. I'm curious, what do you think? That's a question that I get all the time, and I'm sure you get it too. What do you think is the purpose of existence, and how do you think we came to be? You get this kind of question? Yeah, I get it all the time. Do Muslims not ask you what you believe in and how to explain the world? They ask me the same question, whether God exists or not. What is your belief?
I tell them the same thing which I told to you. साहिल I भाई, इनका don't. सवाल थोड़ा अलग था, दूसरा सवाल अलग था। हाँ. इनका सवाल ये था कि इंसान को जिंदगी क्यों मिली है और इंसानियत वजूद में क्यों आई है, मतलब हमारे जीने होने का कारण क्या है? See, not necessary, Aladdin, that we should know answer about all the thing. We don't know why. If there is someone who purposely, created us, he had some, some expectation from us. We don't know. So something which we don't know and we cannot find. Why to यार दिमाग उस पे भेजा क्यों ज्यादा खपाने का, इसको हम लोग इंग्लिश में Why क्या to बोलेंगे? ponder over it? Why to ponder over नहीं, it? पॉन्डर तो एक अच्छा वर्ड है, ऐसा कि अपना दिमाग क्यों खराब करने का उसमें, हाउ टू टेल दैट? Why to torture ourselves over it? या व्हाई टू टॉर्चर आवर ब्रेन इन थिंकिंग समथिंग which we do not know and we cannot know. Yeah, it doesn't have to be a torturous process. Some people enjoy that pondering, but I hear you. I have similar views. I don't know whether there is a creator to all of this or not. I just know with certainty, with relatively high certainty, that I don't believe in the religion's narratives about it. But I was just curious if you had pondered about it, or if you had been tortured internally about it, and what you concluded. So No, I don't. Since the time I left Islam, I don't think about that. Mhm. So I don't want to waste time in thinking such thing. Why we are here? What is the purpose of life? So my purpose of life is I want to be happy, and I want to ensure that the others they are not they क्या करें, अपने तरफ से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए. So Don't harm others. yeah, others should not be harmed because of us. Mhm. So this is what I think. Yeah, that makes sense. Yeah. So the Aladdin, it was nice talking to you, and Likewise. yeah, we want all the ex-Muslims to work like this, and our aim is same, that we want to educate Muslims about the real Islam. Thank you so much for being a part of that. Yeah, I mean, I would say my goal is not exactly that, but part of it is also to educate Muslims about what they believe and find out what they actually believe, if it matches with Islam or not, and how they can, how they can reflect on their beliefs. That's a bigger goal for me. राइट. अच्छा, देर आर मेनी क्वेश्चंस भाई लोग, बहुत सारे क्वेश्चंस है आप लोगों के अपोस्टेट अलादीन के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनके पास इतना टाइम नहीं है इतना रुकने का. ऑलरेडी 2 घंटा 40 मिनट इन्होंने दिया है, तो मैं आपके सुपर चैट्स तो ले लूंगा, और मे बी लेटर ऑन व्हेन अलादीन watches the stream later on, maybe he can see what people had to say about the conversation. You can say that, you can watch that. As of now unko jana hai, he needs to go, because we have already completed 2 hours 37 minutes. तो यार इट्स ओके. साहिल प्लीज दोबारा इसको बुलाना एडम के साथ. चलिए, तो विल ट्राई दैट ऑल्सो. बहुत हीटेड हो जाता था अगर एडम साहब होते, बट दैट इज फाइन. सो वंस अगेन रिक्वेस्ट एवरीवन, भाई लोग देखो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, और मैंने फिर से कहा कि जो बाहर के लोग होते हैं उनको बाहर से जो परोसा जाता है उनकी अंडरस्टैंडिंग वैसे होती है, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव वही है जो बाकी लोगों का है, कि भाई हर कोई चाहता है कि भाई सुकून से रहे, दुनिया एक अच्छी बने, और लोगों को इस्लाम की हकीकत पता चले. तो डिफरेंसेस को साइड में रखते हुए we need to support all ex-Muslims. So everyone who has listened Apostate Aladdin, and those who can understand English, I would request everyone to subscribe to his channel. The channel link is already in the description, and I have also put the channel link in the pin comment. Request everyone to subscribe his channel. Thank you so much, Aladdin. Thank you for your time and for this Joining with opportunity. us. Yeah. Thank you so much. Have a great day. Thanks. Same to you. Bye-bye. Bye. हो
इतनी इंग्लिश तो मेरे ख्याल से जमाने में एक साथ इतनी इंग्लिश मैंने बड़े जमाने के बाद बोली है। 2 घंटा नहीं, बड़े जमाने के बाद क्या फर्स्ट टाइम बोली है 2 घंटा 40 मिनट कॉन्वर्जेशन। अहमद के साथ भी थी ना, हाँ अहमद एक्स मुस्लिम। लेकिन उसके इतना कहाँ था 2 घंटा 40। डिंगी डिंगी। तो डिंगी डिंगी था। थोड़ा पानी भर लेता हूँ मैं। अमित कुछ सुपर चैट्स लो आप, मैं पानी भर के लेके साहिल आता हूँ। भाई मैं अब निकलता हूँ, आप मोमिनों से बात कीजिए। अरे थैंक यू सो मच हुज्जतल काफरीन भाई, टाइम पे आप रहे, नहीं तो मेरी तो और बैंड बज जाती थी जहाँ पे मैं नहीं समझ रहा था। आपने बता दिया, थैंक यू सो मच। जी 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 ये मृत्युंजय भाई बोल रहे हैं, Aladdin is very rational. People should agree that it is his rationality that is causing him to question Sahil by a true open-minded person. और confused बोल रहे हैं, Apostate Aladdin think of Muslim in India is a spoiled child who is being forced to face the real world. Hence the aggressive behavior towards Sahil and others. जी शौकीन काफिर भाई बोल रहे हैं, अलादीन नाइस नेम कम्स फ्रॉम अरेबियन नाइट स्टोरी, वेरी सिमिलर टू स्टोरीज इन कुरान व्हिच आर कंसिडर्ड गॉड्स वर्ड। जीआर भाई बोल रहे हैं, अलादीन हैव यू हर्ड अबाउट गोल्डन रूल, मोस्ट ऑफ द साइंस डिस्कशंस आर बेस्ड ऑन दैट एंड दैट्स व्हाई he has to include family members of Momin in discussion. चलो नेक्स्ट लेते हैं। निशित सिद्धपुरा भाई कह रहे हैं, लुक अलादीन, whatever rare atrocities you heard has been reactionary action in defense, not in offense, else how Muslim population increase in India? Sorry bro, but your point of view is not right way. Thank you so much निशित भाई, but again my view is reaction में भी आप जो है ना वो कानून को हाथ में नहीं ले सकते। हमारे पास आवाज थोड़ी सी कट रही है सर भाई। अच्छा आवाज कट रही थी क्या? हाँ अभी बराबर आ रही है। ARV सम साहब कह रहे यू स्पीक गुड इंग्लिश साहिल भाई, थैंक यू सो मच। लगा था अभी इंग्लिश क्लास लगाना पड़ेगा मेरे को भी। नहीं इंग्लिश काफी अच्छी है यार आपकी। Adams Fangal, you are so genuine, Sahil bhai. We trust in you. Thank you so much, Adams Fangal. Rajan Manjrekar, India's first 6A76 July 23 साहब ने एक लाल नीति दी है। Thank you so much, Rajan साहब। माइक में कुछ इशू है क्या? बीच बीच में आवाज बाकी लोगों को मेरी आवाज सही आ रही है या अमित साहब? अब सही आई है, बीच बीच में इशू हो रहा है लेकिन। ये क्या फालतूगिरी है यार? हाँ अभी फिर स्लो हो गई। हाँ एक मिनट को मैं बढ़ाता हूँ, अभी ठीक है? हाँ अब सही है, अभी सही है, परफेक्ट है। ओके HS अलादीन ब्रो, इज अर्थ फ्लैट और राउंड? ये कैसा क्वेश्चन था भाई? अरे वो पब्लिक थोड़ा उनके व्यू से। अच्छा कि मोमिन तो नहीं है। लुकस जी कह रहे हैं सुपर चैट्स वर जस्ट टू गिव अलादीन सम एस्पेक्ट ऑफ टू हिज। फिर गई आवाज यार ये मेरा माइक जो है ना, एक मिनट रुको, इसको माइक चेंज करो, आवाज आ रही है। लैपटॉप के माइक से आ जाओ। ऑटो नहीं, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? एक मिनट रुको, पता नहीं, आज ही पहली बार हो रहा है। इसको ऑटो लेवल पे रख देता हूँ, रुक जाओ। अभी ठीक है क्या? हाँ अभी ठीक है। ओके लुकस कह रहे हैं सुपर चैट्स फॉर जस्ट टू गिव अलादीन सम एस्पेक्ट टू हिज क्वेश्चन अबाउट इंडियन मुस्लिम सिचुएशन, बेसिकली मुस्लिम्स डू व्हाट दे लाइक इन इंडिया इवन हर्टिंग एवरीवन। ये बात आपकी सही है। सत्यन भाई कह रहे हैं साहिल भाई आपकी अदृश्य आवाज सुनाई दी हमें अलादीन के लिए, चलिए आपकी बात आ गई, वी मिस एडम टुडे। थैंक यू सो मच सत्यन भाई। भैया जी कह रहे हैं अलादीन इज लाइक एक्स मुस्लिम वर्जन ऑफ शेल्डन कूपर। अब ये कौन व्यक्ति है मुझे सही में नहीं पता है। बिंदास बंदा कह रहे हैं साहिल भाई आपने स्ट्रीम से पहले 90 ml लिया होता तो और जबरदस्त इंग्लिश निकल जाती। बाय द वे वेरी गुड डिस्कशन। 90 ml किसका वो नहीं बताया आपने?
इंग्लिश भैया बोलना जी से सीखो 2 घंटे में, वो वाली 90 ml। अच्छा, ये 1-2 सुपर चैट्स आप लो जरा, एक कॉल आ रहा है अर्जेंट, मुझे वो ले लेता हूँ। अलादीन इज लाइक एक्स मुस्लिम वर्जन ऑफ कॉपर शेल्डन कूपर, ये तो ले लिया था। और साहिल, इसके बाद में ये था साहिल भाई आपने स्ट्रीम्स, अच्छा ये दोनों ही ले ली थी हमने। पार्थ भाई बोल रहे हैं आई डोंट थिंक अपोस्टेट अंडरस्टैंड द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, द कॉन्फ्लिक्ट इज 1400 years old। बिल्कुल भाई, ये जो वेस्ट में परोसा जा रहा है अपने इंडियन सेक्युलर्स द्वारा, वही इनके पास में बात पहुंचती है, तो ठीक है, इनकी बात कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे समझ में आएगी इनको भी। आयुक्विक भाई बोल रहे हैं अपोस्टेट अलादीन doesn't even know about कन्हैया लाल was beheaded by Muslim, but he know about lynching of Tufail by being outsider। That's what it shows how lynching news get far further than Muslim beheading Hindus। बिल्कुल, ये कहाँ चला गया? अच्छा, सैब बोल रहे हैं, सैब 1313 बोल रहे हैं गो टू हिज चैनल साहिल, इसकी सब जनता इधर आ गई जी। बिंदास बंदा बोल रहे हैं साहिल भाई आपने स्ट्रीम से पहले, अरे ये ले लिया था वापिस, कैसे हो गया? पार्थ, अच्छा ये भी हो गया, डबल डबल क्यों आ रहे अभी? अरे ये भी लिया था। निधि जी थैंक्स फॉर योर सुपर स्टिकर। प्रकाश सिंह कह रहे बिकॉज ton of kafirs are watching this channel as well. He was criticizing us based on rumors he heard on his channel. हाँ बिल्कुल। Sun Scan कह रहे हैं because of you have started a conversation regarding killing Muslims for killing cows. Thank you Sun Scan साहब, ये सारी चीजें जो है वो अपोस्टेट साहब बाद में सुन लेंगे, देख लेंगे आप लोगों के मैसेजेस। मृत्युंजय कह रहे हैं अमित के माइक से इतना घुसुर घुसुर साउंड क्यों आता है? हाँ यार, कभी कभी आता है, कभी कभी ठीक रहता है। साइंस कैन कह रहे ये तो हमने ले लिया ना अभी। योर थॉट ऑन वुमेन राइट्स गिवन इन अरब वर्ल्ड, ये आप उनके चैनल पे कर सकते हैं क्योंकि वो कमेंट का वहां जवाब देते हैं। JR भाई कह रहे काब बिन अशरफ अलर्ट, थैंक यू सो मच JR भाई। Exposing Islam, Aladdin, what do you think when European countries will become Islamic countries? Because they are growing so fast, especially in Germany, UK and France. Thank you so much, Exposing Islam, sahab. Contractor keh rahe, I think the chat minded your accusatory tone towards Hindus via Sahil, who doesn't represent us. That too, without the background knowledge. Thank you so much, Contractor sahab. मेरा नाम क्या है? भारत में सारे फिरके रहते हैं, कोई इस्लामिक देश बताए जिसमें सारे फिरके रहते हैं, वो भी शांति से। दुनिया का ऐसा कोई धर्म नहीं जो इंडिया में नहीं है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम क्या है भाई? के कह रहे एक्सक्लूसिव लैंड्स बीडी बांग्लादेश पाकिस्तान, क्रिश्चियंस ईट बीफ, व्हाई नेवर लिंच, क्रिश्चियंस डोंट वर्शिप चर्चिल बट मुस्लिम्स डू बाउ टू औरंगजेब एंड प्रेज मुगल्स। थैंक यू सो मच के भाई। The Hunter keh rahe, why ex-Muslim atheists coming from Muslim majority country behave like Mu'min without Allah and Prophet? Thank you, Hunter bhai. Sunflower ji, thank you so much. Satyam Jete keh rahe, Aladdin is most welcome, but why are we explaining so much for the approval from white skin? नहीं यार, ठीक है, it's okay. सारे लोगों को जवाब मिल गया होगा ये कॉन्वर्जेशन के जरिए से। Tapan Joshi keh rahe, why don't all the nice Muslims condemn terrorism and don't accept that there are problematic verses in their book? If your book can't be reformed, then should you be following such a book? बिल्कुल, ये एक अच्छा सवाल है आपका तपन जोशी साहब, थैंक यू। गौरव कुमार कह रहे 5134 कैन गेट योर टॉर्सो फ्लाइंग, दिस इज रियल फ्रीडम। थैंक यू सो मच गौरव कुमार। Sans can ask him about Nupur Sharma, she is still under home arrest being BJP in leading government. ये नुपुर के लिए हमने बहुत सारे सवाल ऑलरेडी कर दिए थे उनसे। और रेड बैरन कह रहे प्रोब्लम इज सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन कैन नॉट फंक्शन इन इंडिया बिकॉज वी आर अ प्लूरलिस्ट सोसाइटी, फोकस इज मेनली ऑन सीकिंग द ट्रूथ rather than claiming that our religion knows the truth. Thank you so much रेड बैरन साहब। कितने सारे लोग ने कितना सारा जवाब दे दिया यार। JR साहब कह रहे कुछ एक्स मुसल्टो का लिटमस टेस्ट होना चाहिए। नहीं यार, वो अरब एक्स मुस्लिम है।
प्रकाश सिंह कह रहे हैं दैट्स West who are more educated. Unfortunately, most Muslims in India are uneducated. Forget Arabic. They argue with emotion rather than logic. ये बहुत अच्छा आंसर है आपका प्रकाश सिंह साहब. Thank you so much. योगेश व्यास abused कहते हैं आहायत. Thank you so much योगेश व्यास. गंगाधरी शक्तिमान भाई कह रहे हैं अलादीन is over justifying that Mews are getting mob lynched here. मतलब Muslims are getting mob lynched, so he should know that what they are doing here and not the other way around. Why he said that they are being mob lynched? Thank you so much गंगाधरी शक्तिमान भाई. एचएस कह रहे एक बार वो सौदा को बुलाने वाला डायलॉग. सौदा, ए सौदा, मैंने तुझे पहचान लिया. ये हजरत उमर साहब ने सौदा से कहा था, जिसकी वजह से टट्टी करने जा रही हजरत सौदा को रिटर्न जाना पड़ा था. अर्श भाई कह रहे हैं साहिल भाई आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि एंगर का रिएक्शन गलत नहीं है. हिस्ट्री क्लियर है कि टॉलरेंस की वजह से ही वी हैड 1000 इयर्स ऑफ इन्वेजन. थैंक यू सो मच अर्श भाई. ए फगुनिया. प्रकाश सिंह भाई कह रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ मुस्लिम्स यू गेट ऑन हिज चैनल. ये हमने उनसे सवाल कर लिया था. देवशीष रॉय कह रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ पॉडकास्ट ऑफ दिस ईयर. हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस. थैंक यू सो मच देवशीष भाई. विटामिन प्रोटीन कह रहे हैं जय हिंद. थैंक यू सो मच. हमीर सिंह गोहिल कह रहे हैं व्हाई अरबी नबी हेट नॉन मुस्लिम सो मच कॉमन अरब. थैंक यू सो मच हमीर सिंह गोहिल साहब. ऑनलाइन लर्निंग भाई ने एक लाल मिर्ची दी थी. कह रहे हैं साहिल भाई, एडम भाई एंड साजिद भाई, यू गाइज आर डूइंग गॉड लेवल वर्क. योर नेम शुड एंड will be written in gold in history, and in few years down the line there will be books written about you guys for sure. God bless you all. Thank you so much online learning भाई. अर्ज भाई कह रहे साहिल भाई आज पहली बार स्क्रीन के नीचे का टिकर पड़ा, मेंबर्स गिफ्ट ना करे क्या? नहीं कर सकते भाई, वो टिकर में से हम हटा देंगे. आप लोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं. आदर्श तिवारी साहिल भाई इसे एडम भाई के सामने लाना कभी. कोशिश करेंगे, एडम भाई के सामने भी लेके आ जाएंगे, एडम जवाब देंगे. कॉन्ट्रैक्टर अपोस्टेट इज अ सेक्युलर. ठीक है, उनको वो दूसरे साइड का नहीं पता है ना, और इंडिया का तो बिल्कुल ही उनको नहीं पता है. एवी कह रहे हैं आई थिंक द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैनल इज टू एनकरेज क्वेश्चनिंग एंड रीजनिंग एंड साहिल योर रिस्पॉन्सेज सपोर्ट जस्ट दैट. अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी. थैंक यू सो मच एवी. Rebirth, we have best debaters like Imad and Zulfikar. Thank you so much Rebirth भाई. जुल्फिकार कहाँ डिबेट में आता है? अब वो हम उनको लेके आ जाते हैं ना. मार्किंग भाई थैंक यू सो मच. अभी कॉलर्स लेना भी स्टार्ट कर देंगे दोस्तों, टेंशन ना ले. JR भाई कह रहे भाई if he is ex-Muslim then doesn't know the basic thing that whatever M do is based on divine decree whereas H is emotionally triggered. Isn't there a difference? वो मैंने डिफरेंस उनको बता दिया था वहां पे. ब्लैक पिंक भाई थैंक यू सो मच. और ब्लैक पिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन. प्रिंस क्रिश्चियन कह रहे हैं साहिल ये आपके गेस्ट अंग्रेजी समीर है, बी केयरफुल. नो प्रॉब्लम यार, हमको तो जिसने इस्लाम छोड़ा उससे मतलब है. पॉपुलर बडी बाई गुड लक ब्रो. थैंक यू सो मच पॉपुलर बडी. हजारी प्रसाद जी बहुत बहुत शुक्रिया. पॉपुलर बडी कह रहे हैं कीप अप द गुड वर्क. थैंक यू पॉपुलर बडी. अच्छा, हजारी प्रसाद जी का बर्थडे भी है आज, उन्होंने सुपर चैट किया था एक. ओ तो तपन विश भी कर लेंगे. स्टार्ट हुआ है, वो सुपर चैट आ जाएगी तब कर दीजिएगा. ठीक है. पॉपुलर बडी कह रहे फॉर यू ब्रदर इट इज गुड टू हैव योर ओन थिंकिंग अबाउट समथिंग. थैंक यू सो मच पॉपुलर बडी भाई. नाखून से खतना भाई कह रहे साहिल आपने अलादीन को क्या कंफ्यूज करके भेजा है? अरे थैंक यू सो मच नाखून से खतना भाई. ब्लैक पिंक भाई थैंक यू. कंफ्यूज होके जाते तो अलादीन भी बेचारा कंफ्यूज हो गया. अलादीन भाई का पूरा जो उनको भड़काया जा रहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉपरली फीड किया जा रहा था मैसेज के द्वारा कि भाई अब उसने इस तरीके से बोल दिया है ना, अब ये वाला उससे सवाल कर, उसको छोड़ना मत, उसको ये वाला सवाल कर. तो मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो दी फैक्ट, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा हुआ होगा. हाँ, वापस से वो रिपीट में वापस सवाल किए थे, वहाँ लगता है वापस से सवाल आए होंगे कि ये और पूछ. दैट इज फाइन, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं या सोचते हैं कि भाई इसको किसी तरीके से बदनाम किया जाए,
बाकी लोगों के सामने, तो पॉसिबल नहीं है ना। अपनी नीयत एकदम साफ है भाई। लोग जो अपने खिलाफ भी है या अपने को गलत समझते हैं, हमारे ही गैंग वाले, ग्रुप वाले, अपनी नीयत बहुत साफ है भाई। तो तुम कुछ भी कर लो तो नहीं कर पाओगे। ब्लैकपिंक भाई थैंक यू सो मच। एक और थैंक यू सो मच ब्लैकपिंक भाई। राजन मांजरेकर भाई थैंक यू सो मच फॉर वन मोर लाल मिर्ची। पता नहीं अनस्टार कर रहा है नहीं कर रहे हैं हमारे अमित साहब। कर रहा हूँ कर रहे हो ना। साहिलिज्म सुन के शॉक में आ गया अलादीन ब्रो। ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एक्चुअली साहिलिज्म। रॉन्ग आंसर कह रहे हैं बोको हराम हैज किल्ड 200 क्रिश्चियन इन नाइजीरिया ऑन क्रिसमस बट होल वर्ल्ड मीडिया इग्नोर्ड इट एंड इंडियन मीडिया टू shows the discrimination by media and politicians against non-Muslims. लेकिन ये कौन से क्रिसमस की बात कर रहे हैं आप? ये वाले क्रिसमस या कौन से वाले क्रिसमस दैट वर्ल्ड हैज इग्नोर्ड? आप थोड़ा स्पेसिफाई कर दिया करो यार। अनाहक अप्रिसिएशन फॉर अमित भाई आईटी सर्विसेज। थैंक यू सो मच अनाहक भाई। थैंक यू नाग जी। गंगाधरी शक्तिमान भाई कह रहे हैं साई लव्ड यू टुडे दैट यू पोस्टेड मोस्ट ऑफ आवर हिंदू क्वेश्चंस टू हिम। दिस शोज योर अनबायस्ड नेचर। आई टेक प्राउड फॉर सपोर्टिंग दिस मूवमेंट नाउ फॉर 1 ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड अमित। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल। और सबको हम हैप्पी न्यू ईयर विश करेंगे जाते वक्त। गंगाधर भाई आपको भी। नाखून से खतना कह रहे हैं वेस्ट में हंसने पर टैक्स है क्या? ये अलादीन इतना कम क्यों हंसते हैं? मैं तो 2 से ज्यादा सीरियस बातें नहीं कर पाता। हाँ ये बात तो है कि बहुत सीरियस इंसान है वो। समर कुमार डोंट वरी साहिल भाई ऑलवेज विथ यू। थैंक यू सो मच समर भाई। राघोजा कह रहे हु वाज गाजिया एंड हाउ हर मैरिज गॉट कैंसल्ड। थैंक यू सो मच राघोजा भाई फिर से एक प्रश्न सोचने के लिए देने के लिए। शिव भाई कह रहे गुड गोइंग। थैंक यू सो मच शिव भाई एंड वेलकम। आज बहुत जल्दी पधारे आप। योगेश व्यास आई सैल्यूट साहिल एंड एडम स्वच्छ समाज। योगेश भाई स्वच्छ समाज अभियान। स्वच्छ। हजारी प्रसाद भाई कह रहे 30 दिसंबर माई बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर हजारी प्रसाद। हैप्पी बर्थडे टू यू। खूब क्या कहते हैं उसको, फूलो फलो खुश रहो हजारी प्रसाद साहब। लाइफ को एंजॉय करिए, लाइफ में खूब आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। सत्यन भाई कह रहे हैं आपका अंदाजा बिल्कुल स्पॉट ऑन है साहिल भाई। सीम्स लाइक ही वाज फेड विद स्पेसिफिक क्वेश्चंस फॉर यू बट यू डिड वेरी वेल। थैंक यू सो मच सत्यन भाई। आई मे बी रॉन्ग एंड आई एम सॉरी इफ आई एम रॉन्ग। JR भाई but if he is ex-Muslim then doesn't he know all this by himself? Why need to explain? And if he considers Islam just like another religion, what's the point of activism? हाँ ये बात आपकी I agree with you JR साहब। कुरान रॉन्ग नंबर है कह रहे साहिल भाई। एडम भाई आएंगे नहीं क्या स्ट्रीम में? एडम भाई अभी सीधा अगले साल आएंगे भाई, अगले साल आएंगे। वेकेशन पे बोला तो था। राघोजा विरुलेंट आइडियोलॉजी ऑफ जिहाद हैज कैरी फॉरवर्डेड और बैन। थैंक यू सो मच राघोजा भाई। चलो लिंक शेयर कर दो अमित ताकि कॉलर्स जो है ना किया हुआ है। हाँ, तो सिर्फ मोमिन हजरात ही जुड़े, नॉन मोमिन हजरात बिल्कुल ना जुड़े। ये इस साल की लास्ट स्ट्रीम है तो इस साल में मोमिन हजरात आपको जितना बोलना है बात करना है आप आके कर सकते हैं। उसके बाद सीधा अगले साल आपसे बात होगी। मछली की तरह तड़पेगी भाई ने 29 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया। थैंक यू सो मच। काश आज एडम वैक्सीनेशन पे नहीं, वैकेशन है भाई, वैक्सीनेशन नहीं, वैकेशन पे नहीं होता। अरे बाप रे। गायतोंडे कह रहे हैं साइंटिस्ट एंड साइकोलॉजी एक्सपर्ट शुड रियली कंडक्ट द स्टडी ऑन द ब्रेन्स ऑफ द मोमिन्स। थैंक यू सो मच गायतोंडे भाई। मृत्युंजय भाई कह रहे भाई don't need to address all comments. There will never be a consensus regarding is there a need for translation summarization. Therefore carry on with your set of format. ये बात आपने बिल्कुल सही की है। थैंक यू सो मच SVCN, बहुत बहुत शुक्रिया। और हजारी भाई गिफ्ट की है। थैंक यू सो मच। ब्लैकपिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ले रहा हूँ अब्दुल्ला मेरानी भाई, मोमिन को ले रहा हूँ, जुड़ने तो दो उनको। ट्रिपल एस कह रहे हैं मुस्लिम 1745 एक कहता है रेड जंग में औरत बच्चों भी मारे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ये फिलिस्तीन सपोर्ट क्यों बोलते हैं बच्चे मारे गए? बिल्कुल सर आपकी बात सही है, लेकिन वहां पे जो बात कर रहे हैं आप वो रात की बात हो रही है, तो यू नीड टू इंश्योर कि रात में अलाउ किया है रसूलुल्लाह ने।
कि मर भी गए बच्चे अच्छे औरत उरत तो उससे फर्क नहीं पड़ता। हजारी प्रसाद, थैंक यू सो मच। ऑनलाइन लर्निंग कह रहे हैं आई कैन हेल्प विद इंग्लिश टू, बट सिंस यू ऑलरेडी हैव अ पर्सन टू हेल्प आई कैन बी अ बैकअप जस्ट इन केस। अब तो खत्म हो गया ऑनलाइन लर्निंग साहब, नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा कॉलर आएगा तो आई विल कंसिडर यू एज वेल। पी बाबू राव, थैंक यू सो मच। हुज्जतल काफरीन भाई कह रहे हैं अपोस्टेट अलादीन इज अमेजिंग अमेजिंग, प्लीज वॉच गाइस, फ्यू रोज फॉर मी प्लीज। अरे हाँ यार, हुज्जतल काफरीन भाई ने इतना अपना समय दिया, वक्त दिया और मुझे सपोर्ट किया। हुज्जतुल काफरीन भाई के लिए एक गुलाब हो जाए यार। सारा अली जफर कह रहे हैं अमित अमित आई लव यू, विल यू मैरी मी। देखो सारा अली, आपकी फीलिंग के साथ मैंने बोल दिया। ये लो हमारे भाई के लिए गुलाब आ गए, हुज्जतल काफरीन साहब के लिए। थैंक यू सो मच हुज्जतल काफरीन भाई। ऑफ द रिकॉर्ड, मेरा बर्थडे है 1 जनवरी के, सबको मेरी तरफ से पार्टी, पास के लंगर में खा लेना भाई लोग। हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम सौरव श्रीवास्तव जौनपुर वाले। थैंक यू सो मच ऑफ द रिकॉर्ड भाई, आपका जो है ना बिलेटेड हैप्पी बर्थडे हम नेक्स्ट स्ट्रीम में मनाएंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा साहिल भाई 2024 देखना आपको कि नहीं देखना? हाँ देखना है ना, क्यों, सरतन से जुदा होने वाला है। हाँ देखो नीचे आया है सरतन से जुदा करने वाला। चलो ले लेंगे ना, उससे भी ले लेंगे फटाफट। अच्छा ये हमारी लैला जी क्या कह रही है, लैला एक्स मुस्लिम। साहिल उसके चैनल पर ठंडे इंग्लिश कोटेड कॉलर्स आते हैं, 300 लोग सुनते हैं, आंखें फट गई 1000 देख के। ठीक है यार, तो हम तो चाहते हैं कि हमारे जैसे कॉलर्स भी अलादीन साहब के पास आए, ताकि उनको भी थोड़ा एहसास हो कि क्या होता है झेलना। साइंस स्कैन करे साहिल भाई, ये अलादीन 200% वो आपको घेरने के कारण से आया था, आप उसका क्वेश्चन पैटर्न से आया था, आप ये वापस टीम दे। कोई बात नहीं ना, हमने तो जवाब दे दिया ना उनको। हिंदू सनातनी भाई कह रहे बच्चा रोता है तो मुंह में निप्पल देते हैं, एक आदमी के मुंह में 11 जोड़ी निप्पल, लेकिन फिर भी रायता फैला के गया। थैंक यू सो मच हिंदू सनातनी भाई। जेआर भाई कह रहे भाई ओपन स्ट्रीम कर दो, हिंदू लोगों को भड़ास निकाल। अरे नहीं यार, इट्स ओके, चलता है। अपन तो हिंदू जो लोग हैं वो कितना सहते हैं, कितना सुनते हैं, ठीक है ना, कोई मुश्किल नहीं। Online learning, happy new year to all of you. This is just to let you know that we are with you and Adam all the way. I will support till I die and possibly find a way to do it post my death too. ये तो ऑप्शन सिर्फ पोस्ट डेथ का इस्लाम में ही है भाई। हाँ, दुनिया में अगर आप कुछ ऐसा रिकरिंग पेमेंट का कुछ सिस्टम लगा के जा सकते हैं तो पॉसिबल है ये। ऑफ द रिकॉर्ड, मेरा बर्थडे है 1 जनवरी को, सबको मेरी तरफ से पार्टी। ये तो हमने ले लिया ना, ये हो गया था। विजय भाई कह रहे ही स्ट्रिक्स वेरी क्लियर लॉइंड स्लो। क्या लिख रहे हैं भाई विजय भाई, नहीं समझ में आया। राघवेंद्र, बाहरों फूल बरसाओ, अमित आया है, क्या बात है। राघवेंद्र कंडपाल साहब कह रहे हैं एडम भाई की आवाज आज सुनाई देगी क्या? सर आज नहीं पॉसिबल है, नेक्स्ट ईयर में। जेआर साहब भाई आपके यहाँ आके बहुत सारे नॉन पीसफुल्स इंक्लूडिंग बहुत सारी आयत लाइक सूरह फातिहा सीख गए हैं, इसके आपको सवाब मिलेगा कि? सर नहीं मिलेगा ना जेआर भाई, क्या करे। जो भी सवाब है वो आप लोग जो है सुपर चैट्स के जरिए से ही पहुंचा सकते हैं, अल्लाह की तरफ से तो कोई सवाब नहीं मिलने वाला। और ये वाला सवाब जो है ये काफी सारे मोमिन और कुछ कुछ नॉन मोमिन हजरात के लिए भी अजाब बन जाता है जब आप लोग सुपर चैट्स भेजते हैं, तो इस तरीके से सवाब आप पहुंचा सकते हैं बस। Sunflower J, Sahil and Amit, Happy New Year to you. Adam needs to mentor Aladdin. Adam is amazing in understanding the position of Hindus. Thank you so much, Sunflower भाई। एंड पंकज रावत भाई, हजरत आयशा जर्मनी को बुलाओ प्लीज। आ जाएंगी वो कुछ दिनों में। साहिल तेरा सर तन से जुदा होगा। साहिल तेरा सर तन से जुदा होगा भाई, बोलिए। अरे बोलोगे? अरे मियाँ बोल दो, चला गया। भाग गए, मैसेज देके भाग गए। है कोई निक कैफे भाई, स्टूडियो छोड़ दो यार। डीके साहब, जी बोलो साहब। सर मोमिन है अरे आज का
इसराइल और फलस्तीन पे चल रहा है क्या टॉपिक? नहीं, इजराइल और फलस्तीन में नहीं है सर। मोमिन है आप? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन हूँ, इससे पहले भी आया था। अच्छा, पहले भी आए थे? कभी आए थे? हाँ, कभी आए थे? हाँ, हाउ हाउ हाँ, हाउ? हाँ, आया था। ओके, आयतुल कुर्सी सुना दे। गैस बार भी यही पूछा था तुमने। आपने सुनाया था? हाँ भाई, आधा सुना था ना। क्या बोले साहब? आधा सुनाया था ना भाई, उस वक्त भी मैंने आधा सुनाया था। अच्छा, फिर से एक बार सुना दो आधा। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मनज़ल लज़ीना यशफ़उ। इतना ही आता है। अच्छा, दरूद शरीफ आता है? हाँ, आता है। सुनाओ दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ओके। भाई ये अच्छा सब क्यों प्यारे, पूछ रहे हो? पता लगना चाहिए ना मोमिन है या नहीं है आप। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये आपका जो खुदा है, इस्लाम वाला खुदा, ये इतना गुस्सैल खुदा क्यों है? जी, ये समझ में बात नहीं बात आया। पे ये बात बात पे नाराज क्यों हो जाता है? कौन सी बात पर नाराज हुआ भाई? अगर उसको कोई नाराज करने वाली बात करोगे या उसको नाराज करने वाली हरकतें करोगे तो हर कोई नाराज होगा ना। मतलब आपका जो खुदा है ये एक इंसानी फितरत रखता है। नाराज होना क्या जो हुआ? है, नाराज हो जाना, ये तो इंसानी फितरत है। अच्छा, और जो बार बार हर शुक्रिया। बात पे नाराज हो जाए उसको तो हम मेंटल समझते हैं, दिमागी कुछ दिमाग में उसका स्क्रू ढीला है ऐसा समझते हैं जो बार बार नाराज हो जाए। तो आपका अल्लाह भी बार बार नाराज हो जाता है, तो ये कैसे इंसानी मुझे फितरत बताओ वाले अल्लाह किस खुदा बात को पर आप नाराज मानते हैं? हुआ? हाँ भाई, मुझे बताओ अल्लाह किस बात पर नाराज हुआ है? अभी आप बोले ना नाराज होता है, अभी आप सीधा इनकार कर दिए नहीं नाराज होता। हाँ, हाँ, अब मैं कह दिया, अब नहीं कहूंगा। बताइए कहाँ नाराज होता है? अरे क्यों नाराज बाप हो? रे बाप यार, कितना जल्दी लोग अपना स्टैंड चेंज कर लेते यार। अभी बोला नाराज होता है, तुम्हारे अब बोलते नाराज नहीं तुम्हारे होता। जैसा तो धोखा नहीं देता ना भाई मैं। ओके, तुम्हारे जैसा तो भक्तों को अनभक्त नहीं बनाता ना भाई। मतलब सुपर चैट ओके। तो नहीं खाता ना भाई। अयो अयो अयो, भाई को सुपर चैटा से तकलीफ हो गई। अयो भाई, अयो अयो, लियो भाई सुपर चैट खाइयो भाई। अयो, भक्तों सुपर को चैटा अनभक्त से बनाओ तकलीफ भाई। हो गई। बेवकूफों को और बेवकूफ बनाओ भाई। तुम्हारे से बड़ा बेवकूफ दुनिया में, मोमिनों से बड़ा बेवकूफ कोई हो सकता है? अच्छा ये तुम बताओ, लोग है चलो ना भाई सबसे अभी बड़े बेवकूफ। कंप्लेंट। सबसे बड़े ठीक है साहब, बेवकूफ यहाँ स्ट्रीम अरे में रुक बैठे से रे लोग हैं। भाई। अच्छा रुक जाना, बोल रहे इतना भाई क्यों? तू। बोल बोल। इतना इतना क्यों तवे पे, गरम तवे पे बैठा हुआ है? सुन, अच्छा अरे बोल रहे भाई, तू तो अंगार पे बैठे हुआ है। बोल। अल्लाह नाराज नहीं होता ना? नहीं होता। जा। मतलब नाराज होना जो है ये कोई खुदा की सिफत नहीं हो सकती, राइट? यस, राइट। अगर मैं आपको बता दूं कि अल्लाह नाराज होता है तो आप इस्लाम छोड़ देंगे फिर? नहीं छोड़ूंगा। हाँ, अरे आपने कहा नहीं नाराज छोड़ूंगा। होना ये खुदा की फितरत नहीं हो सकती, अगर अल्लाह नाराज होता है तो फिर वो खुदा कैसे हो सकता है? तू गू खाता है या नहीं खाता है? तो तू गू खाता है तो इंसान कैसा हो सकता है? बता। पागल इंसान। ठीक है सुपर भाई, चैट आप खाने वाले, इतना सुपर चैट ठीक खाने है भाई। नहीं वाले में फर्क होता है मेरे भाई, दोनों में अच्छा फर्क ठीक, होता है। ठीक है भाई, सुनो ना, आप कितना पढ़े बोल लिखे हैं? बोल। मैं इंटर पढ़ लिया हूँ डिग्री में। डिग्री में है?
अभी आपने थोड़ी देर पहले ये कहा कि खुदा की सिफत ये नहीं हो सकती कि नाराज हो, तो जो नाराज हो वो खुदा नहीं हो सकता। तो अगर साबित कर दूं कि अल्लाह नाराज होता है तो फिर उसको आप खुदा कैसे मान सकते हैं? कई को सो मान सकता हूँ मैं, कई को ना मानूं मैं। मतलब मुझे एक अल्लाह बात नाराज बताओ, होता है? तुम खुदा को खुदा क्यों नहीं मानते, मुझे बताओ। अरे डीके साहब, मतलब आपका जो खुदा है वो नाराज होता है, राइट? राइट। नहीं होता है था। नाराज? नहीं। नहीं होता? अगर अभी बोल रहे हो होता मतलब नहीं होता, नाराज पहले करने डिसाइड वाले कर लो। हरकतें करोगे तो भाई नाराज होगा वो। मतलब होता है ना अल्लाह नाराज? हम्म, होता नहीं होता? होता है मेरे भाई, अगर उसको होता। नाराज करने वाले हरकतें करोगे। भाई, भाई लोग जितने लोग देख रहे हैं, अभी सेकंड टाइम इसने पार्टी बदल लिया, रुको। एक मिनट रुको। ये देखो, पहले बोला नाराज, इनका खुदा नाराज होता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट। फिर कहा इनका खुदा नाराज नहीं होता क्योंकि ये नाराज होना इंसानी फितरत है। तो इन्होंने कहा नाराज नहीं होता। फिर मैंने कहा अगर आपको बता दूं नाराज होता है तो आप इस्लाम छोड़ोगे? इन्होंने कहा नहीं छोड़ूंगा। फिर हमने कहा कि आपने खुद अग्री किया जो नाराज हो वो खुदा नहीं हो सकता। तो इन्होंने कहा अभी नहीं नहीं, नाराज होता है। मतलब एक बार स्टेटमेंट बोला, फिर पलटी मारा, फिर उसके बाद इन्होंने फिर अपना स्टेटमेंट चेंज किया। तो आप ये मानते हैं कि आपका खुदा नाराज होता है? जी हाँ, होता है। होता है। तो ऐसे नाराज, बात बात पे नाराज होने वाले खुदा को क्यों मानते हैं आप? ये तो बात इंसानी बात फितरत पर है। कोई नाराज नहीं होता, अगर उसे नाराज करने वाले हरकतें करोगे तो नाराज। ओके, मुझे ये बताओ कि ये नाराज होना तो इंसानी फितरत है ना, लेकिन कौन बोले? अच्छा पागल है आप क्या? बताओ कि आपकी गर्लफ्रेंड अकल अगर है? बार 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 अकल है? बार 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 हर बात पे अकल आपसे है? नाराज हो जाए तो मैंने आप उसके लिए अकल क्या है? कहेंगे? अकल है नहीं है? तुम्हारे से पूछ रहा ज्यादा हूँ, है अकल है कि? नहीं है? इंसानी फितरत में है, इसमें इसमें अकल है नहीं है, पहली बात। अच्छा क्या, अभी अच्छा हाँ एक ले बात बताओ, एक बात बताओ डीके साहब, मुझे ये बताओ कि इंसान के कुछ करने से या नहीं करने से अल्लाह को कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं फर्क पड़ता। तो नाराज क्यों होता है? उसको नाराज करने वाली हरकतें करोगे तो नाराज होता अरे जब फर्क पड़ता है इंसान को तभी तो नाराज होगा, अगर फर्क ही नहीं पड़ता तो नाराज होने का सवाल ही नहीं उठता। है। नाराज होता है इंसान तो अल्लाह नाराज होता है। मतलब अल्लाह की फीलिंग डिपेंडेंट है इंसानों के अमल से। तो क्या हुआ? तो आपका अल्लाह जो है वो डिपेंडेंट हो गया ना इंसानों की किस फीलिंग पे का। डिपेंड हुआ है? आप देखो, नाराज इंसान होता है मतलब किसी को किसी से फर्क पड़ता है तभी वो नाराज होता है। अगर उससे फर्क ही नहीं पड़ता तो नाराज होने का सवाल नहीं उठता। अगर आपका अल्लाह नाराज हो रहा है मतलब ही इज डिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट है इंसानों की के अमल से, उसके बिहेवियर से, उसके एक्शन से। तो आप ऐसे अल्लाह को क्यों मानते हैं जो डिपेंडेंट है? अल्लाह किसी पर डिपेंडेंट नहीं है मेरे भाई। तो फिर नाराज क्यों होता है? नाराज होने में डिपेंडेंट में फर्क है मेरे भाई, कैसा? वो तुझे समझ में नहीं आती। तो समझा दो। नाराज होने में फर्क है मेरा भाई, अगर उसको नाराज करने वाली हरकतें करोगे तो भाई वो नाराज हो।
हाँ हर कोई ना, तो नाराज वो होगा। अच्छा, ये नाराज होना ये फीलिंग है ना? नहीं, नाराज होना फीलिंग नहीं है। वो हमारे लिए फीलिंग है, खुदा के लिए फीलिंग नहीं है। खुदा के लिए क्या है नाराज होना? नाराज होना मतलब नाराज होना है, उसका कोई एक्स हाँ, नहीं, क्या है जिसम वो? नहीं, कुछ फीलिंग नहीं। है, क्या है वो? नाराज नहीं होगा। भाई लोग, बुरा ये ना भाई, है नाराज। मोमिनों का, सुन रुक यार, ये है मोमिनों का दिमागी हाँ 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 अपंगता, हाँ, और उनकी हाँ, और सोच के हम्म। कितने कितने गए गुजरे होते हैं। मतलब आप सोचो कि ये बिल्कुल सोच ही नहीं दिमाग से, इनके दिमाग में लॉजिक नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। हाँ, बहुत से लोग बोल रहे हैं अलादीन के पास भेजो। ऐसे ऐसा इस्लाम जो है वो दिमागी अपंग कर देता है। तो जितने मोमिन हजरात सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, आप खुद इस बात पे गौर करो कि इस्लाम आपको क्या बना देता है। आप अपने अल्लाह को भी डिफेंड नहीं कर सकते। नाराज होना ये फीलिंग है, और अल्लाह जो है अगर नाराज हो रहा है तो वो किसी पे डिपेंडेंट है। उसकी नाराज होने वाली फीलिंग जो है वो किसी पे डिपेंडेंट है, बंदों पे डिपेंडेंट है। तो ऐसे ऐसे खुदा को आप कैसे अल्लाह, या ऐसे अल्लाह को आप कैसे खुदा मान सकते हो? इट्स सो इलॉजिकल। स्पेशली जब आप ये कहते हो कि इंसान के कुछ काम करने से या ना करने से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर इसी से अगला सवाल आएगा कि भाई, ऐसे काम जो उसने अपनी तारीफों के लिए लगाए हुए हैं, उसके ना करने से वो उनको सजा क्यों दे रहा है? कोई मोमिन अगर आके बता सकता है तो प्लीज आके बताए। और उससे पहले हमारे साथ जॉली एलएलबी साहब जुड़े हुए हैं। जॉली एलएलबी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया साहिल भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? बस बढ़िया भाई। भाई बहुत बड़ा डंगर आया था भाई। हाँ। इसको स्कूल में इसके पूछते होंगे ना पेरेंट्स मीटिंग में, ये तुम्हारे अब्बा हैं नक्को? अरे फिर बोलता हाँ, फिर नक्को। अरे एक पे तो रहा हाँ या ना, दो पे ये यहाँ पटरी वहां पटरी। इसको जाना कहाँ है, इसको खुद को नहीं पता। तो कौन से, ये हमारे अभी जो डंगर आए थे डीके साहब, उनकी बात कर रहे हैं ना आप? हाँ हाँ, डीके की, हाँ डीके की बात कर रहा हूँ। हाँ। और साहिल भाई, ऐसा कौन सा खुदा है जिसने इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा क्रिएशन किया है, और एक इंसानी फितरत नाराजगी की, वो कैसे हो सकता है? बुरपरस्ती किया, नाराज हो गया। तुमने इस दूसरे रिलीजियस वाले से कुछ दोस्ती रख लिया तो नाराज हो गया। अरे खुदा है कि गर्लफ्रेंड है, बात बात पे नाराज हो रहा है। हाँ, वही तो। भाई कोई किसी का रेप करे, मर्डर करे तो भी अल्लाह का नाराज होना समझ में आ रहा है। अल्लाह में शिर्क कर दिया तो नाराज हो गया। शिर्क कर दे रहा है तो नाराज हो जा रहा है। देखो, अभी मैं आपको एक वीडियो बताता हूं। ये देखो, एक मिनट रुको, ये जरा, अरे रुक जा रे भाई, रुक जा रुक जा। ये मैं शेयर करता हूं। ठीक है, स्क्रीन को छोटी कर दो अपना, अमित साहब। ओके, सब लोग सुनो अच्छे से, गौर से क्या कह रहे हैं। The anger of Allah subhanahu wa ta'ala and his curse is real. अल्लाह का गुस्सा और उसकी लानत, कर्स, ये हकीकत है, ये रियल है। पहले इसने क्या कहा था? नाराज होता है, फिर कहा नहीं होता है, फिर कहा होता है। ये देखो इनके आलिम क्या कह रहे हैं, ये रियल है।
It happens and it comes. And Allah subhanahu wa ta'ala becomes. अल्लाह आती है, ये अल्लाह का कहर, अल्लाह की लानत होती है और अल्लाह गुस्सा होता है। कभी होता है angry. As much as we've learned that he is extremely merciful, the most merciful. और जैसे कि हमने पढ़ा है या जाना है कि अल्लाह मर्सीफुल है, रहम करने वाला है, बहुत ज्यादा रहम करने वाला है, द मोस्ट मर्सीफुल। There are sometimes certain actions that we. लेकिन हम बहुत सारे ऐसे कुछ एक्शंस होते हैं जिसमें हम मुलव्विस हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, that earn the wrath of Allah subhanahu. जिसकी वजह से हम अल्लाह के गुस्से का हिस्सा बन जाते हैं या उसके गुस्से को पा लेते हैं। The Qur'an has addressed us as well. कुरान हमें एज अ मैनकाइंड एड्रेस कर सकता है, all mankind regarding the anger and wrath of Allah subhanahu wa ta'ala. अल्लाह के गुस्से से, अल्लाह के कहर से कुरान सारी इंसानियत को आगाह करता है। The idea of that is for us to take heed. We must make sure we are not engaged. और उसकी वजह ये है ताकि हम सोचे इस बारे में, गौर फिक्र करें और इससे बचे, इसमें मुलव्विस ना हो। Those type of deeds, because believe me, if you know, may Allah protect us, that a very very powerful human being is extremely angry with you. क्योंकि आपको ये बात सोचनी चाहिए कि एक बहुत ज्यादा पावरफुल आदमी अगर आपसे बहुत ज्यादा गुस्से में है, I think it would give you sleepless nights. तो वो आपको बिना नींद वाली रातें देगा। More so if we are to give you even a cheaper example. अगर मैं आपको और थोड़ा हल्का सा एग्जांपल दूं, if you witness an angry lion outside there, आपने एक गुस्से वाले शेर को देखा बाहर, nobody will leave this masjid. May Allah protect us. तो ये मस्जिद जो है वो कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा। ये है ना मुफ्ती मेंग की आवाज है ये। We are ready to fear an animal. हम जानवर से डरने के लिए रेडी है, and we are not prepared to fear the creator of the entire. और हम जिसने पूरी क्रिएशन को बनाया है, जो क्रिएटर है, हम उससे डरते नहीं है। Creation, may Allah subhanahu wa ta'ala save us from hypocrisy. अल्लाह हमें जो है इस मुनाफिकत से बचाए। We need to realize and understand that Allah subhanahu wa ta'ala declares his anger. हमको ये समझना चाहिए कि अल्लाह अपने गुस्से को बता रहा है, शो कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है against certain people कुछ लोगों के लिए and against certain actions, and और कुछ कामों के लिए। This is why I have chosen to speak about the anger and the curse. इसी वजह से मैं आप लोगों के सामने अल्लाह के गुस्से और अल्लाह की लानत के बारे में आप लोगों को बताऊं। Allah subhanahu wa ta'ala tonight, taking the verses from the Qur'an. आइए कुरान की वर्सेस देखते हैं, which have made mention of the anger and the curse. जो अल्लाह और उसके लानत, अल्लाह की कहर, अल्लाह का गुस्सा और अल्लाह की लानत के बारे में बताता है। Allah subhanahu wa ta'ala clustering them together as one subject, one topic. The idea is for us to learn, to take. ठीक है, वो इसलिए बताता है ताकि हम उससे जो है ना समझ सके, उससे आइडिया ले। heed, to weep for the sake of Allah. अल्लाह के लिए रोए। ये कैसा खुदा है भाई, क्यों रुलाना चाहता है इंसानों को? ये कौन सा खुदा है भाई? क्या मजा आता उसको इंसानों को रोता हुआ देखने में? वो क्यों खुश हो जाता है जब कोई इंसान उसके सामने रोता है? ऐसी शख्सियत को क्या टर्म देते यार, जो दूसरे के रोने पे जिसको खुशी मिले, जो खुश हुआ, ऐसे लोग को क्या बोलते हैं भाई लोग? बताओ जरा, क्या वर्ड है इंग्लिश में उसका? जो दूसरे की तकलीफ देख के वो खुश होते हैं। नार्सिसिस्टिक, सैडिस्टिक। कैसा सैडिस्ट, कैसा साइकोफैंट, कैसा खुदा है भाई? ये देखो, आगे देखो। Subhanahu wa ta'ala, and to mend our ways before it is too late. The first issue we need to remember is in Surah Al-Fatiha. सबसे पहले जो है वो सूरत फातिहा में हमें देखना है, which is the opening surah, जो कि कुरान की सबसे पहली सूरह है। of the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala makes mention of a अल्लाह जो है एक दुआ के बारे में बताता है, and I've mentioned this dua where Allah subhanahu wa ta'ala says
इहदिना सिरातल मुस्तकीम. सूरह फातिहा में आयत है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, Guide us to the straight path. हमें That is by सीधे रास्ते पे चला. far the most important prayer that anyone could make. Now the rest of the surah is connected to what the straight path इसके बाद ये जो सूरा है वो स्ट्रेट पाथ क्या है वो बताता है. is. Ya Allah, grant us the path of those whom you have favored. हमें उनके रास्ते पे चला जिन पर तूने एहसान किया, जिन पे तूने नेमतें बरसाई. And do not grant us the path of those उन लोगों के रास्ते में नहीं who have earned your anger. जिन्होंने तेरे गुस्से को पाला है, गुस्सा लिया है उन्होंने तेरा, तुझे गुस्सा किया, गुस्से में डाला. That shows already that Allah subhanahu wa ta'ala has. इससे साबित होता है कि अल्लाह जो है वो गुस्सा होता है, नाराज होता है. इससे साबित होता है Anger. And we may sometimes be engaged in deeds that will earn or ask for the anger of Allah. तो ऐसे कुछ अमल है, कुछ काम है, कुछ एक्शंस है जिसकी वजह से हम अल्लाह के गुस्से को जगा सकते हैं, उसके गुस्से को पा सकते हैं. Subhanahu wa ta'ala. What is referred to as the anger here? They are humul ladhina arafu al-haqqa wa tarakuhu. They are those who knew the truth but left. ये वो लोगों के लिए है जिनको सच्चाई मालूम थी लेकिन उन्होंने छोड़ दिया. That is who is being referred to by those who have earned the wrath of Allah subhanahu wa जो अल्लाह के गुस्से को जिसने पाया. ta'ala. The people of the book as well as all. अच्छा, अहले किताब और दूसरे लोग भी. अहले किताब कौन है? ईसाई और क्रिश्चियंस और जूस. Others who have known the truth. They knew what the truth was. They knew that उनको पता था कि सच्चाई क्या है. this is what we are waiting for. We are waiting for this sign and that sign. When the messenger came to them with all those signs, they उनको क्या क्या निशानियां आने वाली थी वो सब पता था. और जब रसूलुल्लाह उनके सामने निशानी लेके आए, preferred to cover their book and turn it and twist it and hide it. लेकिन उन्होंने अपनी बुक को कवर कर लिया, उसके अंदर जो है वो मैनिपुलेशन कर दिया, उसको ट्विस्ट कर दिया. And they preferred not to accept the message. और उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया. Solely because of the fact that he was from amongst the Arabs. इसी वजह से, बस इसी वजह से कि वो जो रसूलुल्लाह है वो अरब में से He was थे, not from amongst them. उनके कबीलों में से The same नहीं थे. applies to every single one of us. If we know the truth, we know the Qur'an, we claim to believe it, we claim to accept it, we know the messenger, we know the messengers, we know the revelation, we know the sunnah of the Prophet. अच्छा, ये सब बंकस है, ये मालूम है, वो मालूम है, रेवोल्यूशन मालूम है, मैसेंजर मालूम है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत मालूम है. Sallallahu alayhi wa sallam. If we then reject it and उसके बाद भी अगर हम उसको रिजेक्ट turn करते away हैं from it, we will earn the wrath of Allah. तो अल्लाह के गुस्से को हम पा लेते हैं, अल्लाह के आजाब को हम पा लेते हैं. Subhanahu wa ta'ala. And if Allah is angry with us, और अगर अल्लाह हमसे गुस्सा हो believe जाए, me, it spells doom for us. हाँ, फिर अगर ऐसा हो जाए तो ये हमारे लिए एक डूम है. May Allah subhanahu wa ta'ala अल्लाह हमारी हिफाजत करे. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Iblis, for you, इब्लीस के लिए अल्लाह कुरान में कहता है कि तेरे लिए अल्लाह की तरफ से लानत है, is the curse of Allah until the day of Qiyamah. कयामत के दिन तक के लिए May Allah लानत है. subhanahu wa ta'ala save us. One might ask that what were the details of what shaitan did in order. ओके, ठीक है, ये आगे इस पे नहीं जाते. बताने का मकसद ये है कि ये कैसा खुदा है जो गुस्सा होता है, लानत भेजता है अपने बंदे पे, उसको अच्छा लगता है जब उसका बंदा रोता है, उससे गिड़गिड़ाता है. ये कैसा खुदा है? इतना क्या शौक है उसको अपनी तारीफ करवाने का, उसको बड़ा मानने का. आप सोचो कि जो एक इंसान बड़ा है, उसको कोई बड़ा नहीं भी माने तो उसकी बढ़ोतरी में, उसकी बड़ाई में जो है कुछ कम नहीं हो जाएगा, वो बड़ा ही रहेगा. ये इनका खुदा कैसा है? इस पे आपने जवाब देना है. दीपक मल्ला साहब, स्टूडियो छोड़ दीजिए, आप नॉन मोमिन स्टूडियो छोड़ दीजिए. जी, उमर रियाज साहब.
हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से है जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये साहिल भाई, आप बार बार ये कहते हैं कि मोमिनों की जो है दिमागी अपंगता है, दिमागी अपंग है ये लोग। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो है मैंने अपनी पूरी लाइफ में साहिल भाई आपसे बड़ा जो है, सॉरी इसके लिए, दिमागी अपंग नहीं देखा मैंने अपनी लाइफ में। रे 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 रे, कितना प्यारा भाई है कि मेरे से बड़ा दिमागी अपंग कोई देखा ही नहीं चलिए है। क्वेश्चन रख ये दीजिए, यही आप जो ये है शैतान क्वेश्चन। की फोटो क्या कर रही है आपके डीपी में? आप क्वेश्चन लिख दीजिए, क्वेश्चन लिख दीजिए अगर पूछना है। नहीं नहीं, अरे पहले ये तो पूछू, ये इसकी फोटो क्या कर रही है? ये देखो। अरे आपको फोटो से सवाल लेना है, क्वेश्चन से लेना अरे मेरा सवाल ही इस फोटो पे है, क्या फोटो है ये? है? भाई हाँ जी, आवाज ब्रेक हो रही है। अल्लाह डर गया भाई इनकी फोटो देख के और इनका गला फोटो पकड़ देख लिया। के खत्म, इनका इंटरनेट ही गया है। क्वेश्चन। जाओ हेलो पहले अच्छा इंटरनेट ले लो यार। हेलो, हाँ भाई, आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है, ब्रेक हो रही थी। जी भाई, ये फोटो में कौन है? अरे आपको पूछना है, फोटो देखना है, बताइए। हाँ, फोटो में आप एक मुसलमान है आप या नहीं है अभी तक? जी जी है मुसलमान? जी। अरे प्राउडली बोलो, है क्या नहीं है? अरे हैं भैया हैं, आप क्वेश्चन रखिए ना नमाज अपना, यही पढ़ते जो हैं? पूछ रहे थे कि। नमाज नमाज हाँ पढ़ते हैं? नमा हाँ, नमाज पढ़ते हैं। आयतुल कुर्सी सुना दे। अरे आप, हाँ आप सूरत हमसे मत पूछिए, क्योंकि जो आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको जो आंसर दूंगा आपको पता चल जाएगा मुसलमान हूँ या नहीं हूँ। आप क्वेश्चन अपना रख लीजिए। भाई आयतुल कुर्सी सुना दे ताकि आगे बात हो सके। अगर आयतुल कुर्सी नहीं आती है तो कोई दूसरा सूरा सुना दे जो आपको आती है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। चलिए क्वेश्चन रख दीजिए आप। माशाअल्लाह। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि ये फोटो में क्या है? अरे आपको फोटो से, मैंने जो है जल्दी जल्दी में वो जो है, जो मुझे फोटो लगा वो मैंने लगा दिया। ओके। ये इस्लाम में अलाउड है ऐसी फोटो लगाना? अरे यार, ये पता नहीं किस इंसान बना है यार ये। आपको इस भाई चीज इस्लाम, फोटो पे स्ट्रीम करनी है? बिल्कुल, क्योंकि आप ये मानते हैं कि ये हराम है या नहीं है, मालूम तो पड़े। अरे मैंने स्ट्रीम पे 2 मिनट लग दिया है, मैं तौबा मैं कर लूंगा, अगली बार नहीं लगाऊंगा, मैं खुदा से तौबा कर लूंगा, अल्लाह ताला माफ कर देगा मुझे। ठीक है, अब मतलब नहीं ये इस लगाऊंगा। तरीके की फोटो लगाना हराम है ना? जी जी। ओके भाई, खुद ही पहले हराम काम कर रहे हैं और बाद में अल्लाह से तौबा इबा कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। जी, आपने कहा कि आपने सबसे बड़ा दिमागी अपंग जो है मुझे पाया। जी जी बिल्कुल। ओके, दिमागी अपंग आप किसको कहते हैं? आप अपना सवाल लिख दीजिए, अभी मैं तो आपको बता दूंगा सवाल से। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है, चलिए सबसे इजी सवाल आपसे करता हूँ। नमाज पढ़ने या नहीं पढ़ने से अल्लाह को कुछ फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो अगर नमाज कोई पढ़े या ना पढ़े, अल्लाह की वहदानियत में कोई असर पड़ता है? कोई नहीं। कोई नहीं पड़ता। तो नमाज नहीं पढ़ने पे अल्लाह पनिशमेंट क्यों देता है? पनिशमेंट इसलिए देता है कि जो है अल्लाह ताला का हुक्म, जैसे कि जो है आप कोर्ट में जाते हैं, जो जज होता है वो जज जो है बैठा होता है सजा देने के लिए। अब जो है किसी ने जो है, आपने जो है किसी का जो है रेप किया, तो जो है जाहिर सी बात है आपने जो है जज की बेटी का तो रेप नहीं किया। जज जो सजा देगा वो अदल की बुनियाद पे देगा कि आपने जो काम किया है वो अदल के खिलाफ किया है, उसके हुकूक के खिलाफ किया है, लॉ और ऑर्डर के खिलाफ किया, तभी वो सजा देगा। इसमें उसकी कोई जाती राय नहीं कि आपने उसकी बेटी के साथ किया। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया, अल्लाह ताला ने हिदायत दी, अल्लाह ने एक हुक्म मिनट दिया एक मिनट अपना। एक मिनट, अरे रुक जा भाई। अरे देखो भाई, सवाल मेरा इंटरप्ट ना करें, इंटरप्ट ना भाई, करें। भाई तूने जो जवाब दिया है ना, उसी पे मुझे बात करनी है ना।
अरे तो मेरा जवाब तो पूरा होने दे। अच्छा कर ले भाई, पूरा कर ले, चल। हाँ, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है और अल्लाह की जब हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अल्लाह ताला जो है जो हमको सज़ा देगा वो इंसाफ की बुनियाद पे देगा, अदल की। कि जैसे कि टीचर कहता है कि दो लड़के खड़े हैं, टीचर ने कहा कि दोनों बैठ जाओ, एक नहीं बैठा, एक बैठ गया, तो जो बैठ गया उसको टीचर सजा नहीं देगा। बहुत सिंपल लॉजिक है, जो खड़ा रहेगा उसको सजा देगा। इसीलिए अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, और जो नमाज नहीं पढ़ेगा तो उसको सजा देगा, जो पढ़ लेगा उसको नहीं देगा। जैसे कि जज होता है, वो जो रेप करता है उसको सजा देता है, बल्कि अब वो उसकी रिपीट मोड बेटी पे का आ तो रहा है, रेप किया नहीं है। ओके, नहीं अभी मैंने रिपीट मोड। सारे एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, अरे सारे रिपीट एग्जांपल मोड आपको ये दे रहा हूँ। बोल दिया था, बेटी का जब रेप नहीं किया है करके बोल दिया था भाई तूने, क्यों रिपीट में चल रहा है? मैं वही कह रहा हूँ कि जो टीचर ने जो है दो बच्चों से अरे कहा तू बैठ बोल जाओ। दिया, रुकेगा? जी जी। मेहरबानी। और तेरा माइक जो है ना, थोड़ा उसका सेटिंग को चेंज कर, ऐसा लग रहा है कि गुटखा खा के बात कर रहा है, फा 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 आवाज आ रही है। ठीक है, म्यूट कर लो। अच्छा, अभी देखो कि भाई जो है कह रहे थे कि भाई तुम्हारे से बड़ा दिमागी अपंग नहीं देखा, और भाई का आर्ग्यूमेंट देखो कि कितना दिमागी अपंग वाला आर्ग्यूमेंट है। भाई ने कहा कि कोई जज है, वो क्या करता है, कोई बंदा रेप करता है तो उसको सजा देता है, ठीक है, उसकी बेटी का थोड़ी ना रेप किया उसने, लेकिन उसको सजा देता है। अरे मेरे भाई, जज जो है वो रेप करने पर सजा दे रहा है। रेप आप एक गलत काम कर रहे हो, आपको जज इस बात पे सजा नहीं देगा कि मेरी तारीफ करो, मेरे लिए 5 टाइम की जो है वो पूजा करो, मेरे तराने गाओ, वरना मैं आपको जो है सजा दूंगा। आप गलत काम करोगे, रेप करोगे किसी का, धोखा दोगे किसी को जो है वो मौत, अपना क्या कहते हैं वो, कत्ल करोगे, उस पे आपको सजा देगा। यहां पे आपका अल्लाह जो है वो अपने लिए नमाज नहीं पढ़ने पे सजा क्यों दे रहा है? अगर कोई मुसलमान रेप करे उसको सजा दे, नो प्रॉब्लम, फेयर इनफ, लॉजिकल, कोई मुश्किल नहीं। अगर कोई मुसलमान जो है वो किसी का कत्ल करे उस पे सजा दे, नो प्रॉब्लम, फेयर इनफ, लॉजिकल। उसकी तारीफ करवाने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, ना पढ़ने के लिए क्यों सजा दे रहा है? सवाल ये था। आपका आर्ग्यूमेंट जो है वो, जो आप एग्जाम्पल दे रहे हो, बिल्कुल मैच ही नहीं करता, फॉल्स इक्विवेलेंस कर रहे हैं आप। अनम्यूट करे और फिर से अच्छी कोशिश करे कि आप जब अगर गधे के ऊपर लकीरें डाल दे तो वो जेबरा नहीं बन जाता, वो गधा गधा ही रहता है। अनम्यूट करे और बेहतर कोशिश करे एक प्रॉपर आर्ग्यूमेंट देने की, कि अपनी तारीफ करवाने के लिए अल्लाह, और हालांकि उसको नमाज पढ़ने या ना पढ़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो वो नहीं पढ़ने पे सजा क्यों देता है? देखिए भाई, मैंने आपको जवाब दे दिया है। उसका जवाब बहुत सिंपल है। आपने कहा कि रेप करने की सजा जो है वो क्यों देगा, क्योंकि वो किसी ने और का रेप। अरे उमेर, गुटखा खा रहा है क्या? हेलो, गुटखा खा रहा है, गुटखा? अरे उस चूत क्या हुआ? पैदाइशी तोतला है। मैं जो है आपसे बात कर रहा हूँ, तो कृपया जो है उनसे कहिए, उनसे बात अच्छा, आप मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। अच्छा, आपने हेडफोन लगाया हुआ है क्या उमर? जी जी, तभी ऐसी आवाज आ रही। निकाल दो ना प्लीज, नहीं तो हमारे कानों से खून निकल जाएगा। ये शुद्ध प्लस क्या है भाई? विमल, रजनीगंधा, आरएमडी, ये सब सुना है, ये शुद्ध। अरे यार, आपको बात करनी है यहाँ पे, ये रजनीगंधा का प्रमोशन करना है। ओके, हेडफोन निकाला आपने? जी ओके जी, मैंने आपके आर्ग्यूमेंट को तोड़ दिया, मरोड़ दिया, नहीं कर दिया। अच्छा, आप फिर से अच्छे से ट्राई करें कि जब अल्लाह को नमाज पढ़ने से या ना पढ़ने से फर्क नहीं पड़ता, तो वो सजा क्यों दे रहा है? सजा इसलिए दे रहा है कि जो है मैंने जो एग्जांपल आपको दिया है कि जो है उसने जो है किसी का जो है वो किया है, रेप किया है, तो उसको सजा क्यों देगा? करने पे सजा है ना, जो नमाज नहीं पढ़ रहा वो रेप थोड़ी ना कर रहा है।
इंटरप्ट मत कीजिए, मैं आपको बोलने दे रहा था, अगर आपको सुनना है मेरी बात सेम पूरी चीज करने रिपीट मत दीजिए। करो फिर, अगर आप चाहते हो कि इंटरप्ट नहीं करूं तो सेम चीज रिपीट मत करो। अल्लाह इसलिए सजा देगा कि जो है अल्लाह ताला की जितनी सिफातें उसमें से एक सिफात अदल भी है। अदल जब होगा जब मतलब कुछ लोग जो बिना है, किसी गुनाह अरे के। यार बोलने दोगे नहीं बोलने दोगे? अरे तू अदल की बात किया ना। अरे यार कैसा इंसान है यार, तो किस चल मिट्टी बोल का बोल बना है, बोलने तो दे। बोल 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 बोल। अल्लाह ताला की जितनी सिफात है उन सारी सिफातों में एक सिफात है अदल की। अदल जब हम्म होगा जब शर भी हो और खैर भी हो, और शर और हम्म खैर के लिए अगर कोई जो इबादत करेगा उसने खैर की, और जिसने इबादत नहीं की उसने शर की। तो अब अल्लाह ताला के अदल के लिहाज से उसको सजा दी जाएगी, और अल्लाह के ही अदल से अदल के हिसाब से उसको सजा दी जाएगी। अगर उसने नमाज पढ़ी होगी तो उसको जन्नत दी जाएगी, और अगर उसने नमाज नहीं पढ़ी होगी तो उसको सजा दी जाएगी अल्लाह के अदल से। उसकी मर्जी, उसकी जो है खुशी ना खुशी से नहीं, उसके इंसाफ की, जो कि उसकी एक सिफत है। समझे भाई थे पागल? हो गया, पर्सनल अटैक कर दिया, हाँ दिमागी बोल। अपंग। अरे तू है दिमागी अपंग भाई। हाँ, तेरे दिमागी अपंगता तो अभी हमने यहाँ पे निकाल दी, तेरा तू कितना बड़ा अरे दिमागी अपंग है। मैं तुझसे फिर से ये कहना चाह रहा हूँ, तू कह रहा है कि अल्लाह जो है वो अदल करता है, इंसाफ करता है। ठीक है, इंसाफ तो ये होगा कि उसने अगर कोई गलत काम किया है, उसने रेप किया, उसने कत्ल किया, उसने कुछ दूसरा काम किया, तो उसको सजा दे। ये खुद की तारीफ करवाने, नमाज पढ़वाना, इसको नहीं पढ़ने से क्यों सजा दे रहा है? उसको क्या फर्क पड़ रहा किसी के नमाज पढ़ने या नहीं पढ़ने से? अल्लाह को क्या फर्क पड़ रहा, पहले ये बता। अरे भाई तुझे दिमाग में क्या गोबर भरा है भाई, क्या ये बता भाई? कितनी भाई बार कहा अल्लाह तेरे ताला इसलिए तेरे अरे सुन, तुम सारे जितने मोमिन हजरात है ना जो इस्लाम को डिफेंड करने आते, तुम्हारे दिमागों में बल्कि दिमाग है ही नहीं, उस खोपड़ी के अंदर जो है वो गू भरा हुआ है। तो हमसे ये मत कहो कि तुम्हारे दिमाग में गोबर है क्या। तुम्हारे अंदर दिमाग ही नहीं है, उसके बदले गोबर डाल के भेजा अल्लाह ने। मैंने आपसे ये पूछा कि जब अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे नमाज पढ़ने या नहीं पढ़ने से, तो क्यों सजा देता है? अगर गलत काम करे कोई, रेप करे, डाका डाले, धोखा दे, तो सजा दे, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नमाज नहीं पढ़ने से अल्लाह को क्या फर्क पड़ता है, उस पर क्यों सजा दे रहा है? ये जवाब देना आपने। इसका जवाब ये है कि जो है कत्ल करने से बड़ा गुनाह अल्लाह के नज़दीक है शिर्क करना, और अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है वमा खलक़तुल जिन्ना व इंसा इल्ला लियअबुदून। पूरा जवाब होने देना, पूरा जवाब होने देना। वमा खलक़तुल जिन्ना व इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जो है इंसान और जिनों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मकसद हमारा है इबादत करना, पैदा हुए हम लोग इबादत करने के लिए। और अगर हम वही नहीं करेंगे जो सबसे मेन है, तो उसके लिए अल्लाह सज़ा देगा। अल्लाह के नज़दीक शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह है, और ये इबादत ना करना अल्लाह के नज़दीक इसलिए जुर्म है क्योंकि उसने उसी के लिए पैदा किया। जैसे कि आपने कोई गाड़ी बनाई, अब आपने गाड़ी बनाई तो गाड़ी आपसे सवाल नहीं कर सकती कि आपने मुझे क्यों बनाया, लेकिन अगर गाड़ी आपके हुक्म के मुताबिक नहीं चलेगी तो आप उसको तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं, फेंक सकते हैं। भाई कायदे से जवाब दे दिया, आपके दिमाग में कुछ पल्ले पड़ा? और मैंने बिल्कुल सही कहा था, दुनिया का सबसे बड़े आप दिमागी अपंग आप हैं। फिर से सुनिए मेरा क्वेश्चन जो मैंने दिया है। हो गया खुश? हो गई बात? अरे यार अब भी नहीं समझ में आया? अरे हो गई बात। बोलने दे बोलने दे। हाँ तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। बोलने में साहिल भाई भाई इसको नॉन स्टॉप इसका दिमाग की अपंग दिख रहा है पब्लिक अरे को। भाई इसको चूतिए को कह दो चुप हो जाए, जो हमें अबे गांडू, पहली एक बात तो समझ के ले, यहाँ पे तुम एज अ कॉलर आए हो, ना कि इधर कोई पैनलिस्ट को चूतिया और ये सब अल्फाज नहीं बोलना, नहीं तो इससे अच्छे अच्छे अल्फाज मुझे आते हैं। अभी बहुत हल्का सा अल्फाज तेरे लिए बोला हूं, इसके बाद जो है ना वो ये वर्ड किसी पैनलिस्ट के लिए यूज मत करना। आपको मैं बहुत सारी मोहलत दे रहा हूं, आपको फटने की जरूरत नहीं है। आपसे अच्छे से बात की जा रही है तो अच्छे से आप बात करें, ठीक है प्यारे भाई? ओके, भाई ने ये कहा कि शिर्क जो है, कत्ल जो करता है उससे बड़ा गुनाह शिर्क है। भाई रेप करने से भी बड़ा गुनाह शिर्क है क्या? सबसे बड़ा अल्लाह के नजदीक गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। अच्छा मुझे ये बताओ आप कि एक एग्जाम्पल देता हूं
एक इंसान है जो मंदिर में जाके पूजा करता है और वो समझिए कि आपकी बहन मुसीबत में है, ठीक है, आपकी बहन मुसीबत में है, उसने आपकी बहन को मुसीबत से बचाया। रुको, मैं एक काम करता हूं, ये आ गया ताकि ये क्या नोट डाउन होते रहे। मैं 2 एग्जांपल देता हूं। फर्स्ट एग्जांपल, एक मोमिन है, नमाज पढ़ने वाला, वो आपकी बहन का रेप करता है, लेकिन अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करता। शिर्क, अच्छा मैं वही बोलूं, शिर्क की स्पेलिंग कुछ तो गड़बड़ लग रही। हाँ, शिर्क नहीं करता। एग्जाम्पल 2, एक मुशरिक है, वो शिर्क करता है, नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन आपकी बहन का रेप हो रहा था, उसने जाके उस मोमिन की पिछवाड़ी लाल की और आपकी बहन को हॉस्पिटल पहुंचाया और आपके घर वालों को इन्फॉर्म किया। ये बता, तेरे अल्लाह के नजदीक एग्जाम्पल 1 वाला मोमिन बेहतर है या एग्जाम्पल 2 वाला मुशरिक बेहतर है? हो गया आपका? जी, इसका जवाब देना है आपके। अल्लाह के नजदीक आपके एग्जाम्पल 1 वाला मोमिन बेहतर है, उसके नजदीक वो बड़ा गुनेगार है, या एग्जाम्पल 2 वाला मुशरिक बेहतर है? कौन बड़ा गुनेगार है? ठीक है, मुझे अब इंटरप्ट को नहीं करेगा जब मैं बोलूंगा। ओके, पहले 2 में से एक आंसर तो दे, उसके बाद अपना डिस्क्रिप्शन देना। A1 वाला या 2 वाला? जी जी, देखिए मैंने पहले ही आपको सबसे पहले कुरान की आयत पढ़ के बता दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना व इंसा इल्ला 1 वाला लियअबुदून। क्या 2 वाला? पहले वो दे, फिर उसके बाद तेरा डिस्क्रिप्शन दे पूरा। अरे भाई, तो पूरा आंसर उसी में है ना, बोलने तो दीजिए मुझे। पहले 1 बेहतर है या 2 बेहतर है, उसके बाद तेरा पूरा डिस्क्रिप्शन सुनेंगे, हम सब सुनेंगे। पहले ये तो बता, 1 नहीं या 2? नहीं, ये तो जो है आपका क्रॉस एग्जामिनेशन, ऐसे जो है आप क्यों? ये बात करते हैं, वो लिख रहे हैं, मुझे पूरा बोलने तो दीजिए तभी तो आंसर। अरे ऐसे तो मैं भी कुछ भी लिखे अबे, उसमें। मैं तुझे सारी चीजें बोलने दूंगा, पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर, कुरान की आयत बता, हदीस बता, सब बता, सब सुनेंगे हम लोग, बहुत इंटरेस्ट से तेरी बात सुनेंगे। लेकिन पहले ये तो बता कि एग्जाम्पल 1 वाला मोमिन अल्लाह के नजदीक बेहतर है या मुशरिक करने वाला अल्लाह के नजदीक बेहतर है? कौन बेहतर है? अल्लाह के कुरान में तो अल्लाह ने फरमा दिया, अल्लाह सारे गुनाहों की माफी करेगा लेकिन शिर्क की नहीं करेगा, बस सीधी बात है, इसका ये आंसर है। एग्जाम्पल 1 वाला मोमिन बेहतर है अल्लाह के नजदीक? जो शिर्क नहीं कर रहा है। हाँ, एग्जाम्पल 1 वाला मोमिन जो तेरी बहन जी का रेप कर रहा था, वो बेहतर है अल्लाह के नजदीक, बजाय इसके सेकंड वाला मुशरिक जो अल्लाह के साथ किसी को शिर्क कर रहा है, लेकिन उसने तेरी बहन को रेप हो रहा था उसमें से मोमिन की पिछवाड़ी लाल की, उसको हॉस्पिटल लेके गया और आपको इन्फॉर्म किया। तो आपके नजदीक फर्स्ट वाला जो मोमिन है वो अल्लाह के नजदीक बेहतर है, राइट? 5 वक्त के नमाजी की हाँ। साहिल भाई अरे भैया, पिछवाड़ी उसको लाल आप, की है तो मैं आपसे अल्लाह बात के नजदीक है ना। अमित बीच में नहीं, सॉरी। हाँ, उमर, फर्स्ट वाला, राइट? मैं आपसे बात करने आया हूँ, सो प्लीज कोई और हाँ कोई ठीक है, ना, मैं बोले मैं प्यार से। मैंने रोक जी दिया। सो फर्स्ट वाला बेहतर है आपके नजदीक, राइट? हाँ, तो हाँ, जो आप कह रहे हैं, वो जो आप रेप की सजा कह रहे हैं, वो उसको मिलेगी, वो उसको जो है जहन्नुम में जाने के हाँ, बाद लेकिन जो बेहतर जहन्नुम में कौन है वो अल्लाह के जाएगा, नजदीक? वो बेहतर जहन्नुम में कौन है उसकी सजा पाने के लिए जाएगा। भाई? ठीक वो है, सब बात सुनूंगा, लेकिन बेहतर कौन है अल्लाह के नजदीक? हाँ, वो फर्स्ट वाला। थैंक यू सो मच भाई लोग।
भाई लोग, आप लोगों के पास अगर एक चप्पल है, चप्पल अगर इमोजी में भेज सकते एक एक चप्पल, आप प्लीज भेजिएगा। कि और जितने मोमिन हजरात और जितनी इसकी जो बहन होगी, अगर वो सुन रही है, सुनना तुम्हारे भाई की सोच। एक ऐसा इंसान जो तुमको रेप कर रहा है, जो तुम रेप से तुमको बचा के हॉस्पिटल लेके जा रहा है, तुम्हारे भाई के नजदीक और तुम्हारे अल्लाह के नजदीक वो बेहतर नहीं है, बल्कि वो मोमिन जो शिर्क नहीं करता और आपका रेप किया वो बेहतर है। मोमिन हजरात, मोमिनो, ये है तुम लोगों का इस्लाम और ये है तुम लोगों का खुदा। अब इस पे गौर करना। अरे भाई बोलने दोगे, कुछ अपनी बो बो करते रहोगे। यार तुम लोगों के अंदर कितनी जहालत है यार, तुम अरे लोगों का अंदर का बिल्कुल मर चुकी है उमर। तेरी तेरी बहन को जो रेप से बचा रहा है, हॉस्पिटल लेके जा रहा है, तेरे नजदीक वो बेहतर नहीं है, तेरे और तेरे अल्लाह के नजदीक? क्या अरे यार भाई तुम बोलने लोग की देगा, इंसानियत इतनी मर गई है। चल तू बोल ले पहले भाई। बोल, अभी तू क्या बोलेगा, अभी बोल। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जो इसका आप वो कह शॉर्ट रहे हो बना कि के जरूर डालना। अगर हमारे एडिटर साहब सुन रहे हैं, ये मैंने जो सवाल किया और इसका जो जवाब है, इसको जरा शॉर्ट बना के जरूर डालना। जी बोल अभी। हाँ सुन, मुंह बंद करके मैं ये भाई बोल रहा हूँ कि ये जो आपने सेकंड वाला एग्जांपल दिया कि एक मुशरिक है, वो शिर्क करता है, नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन आपकी बहन का रेप हो रहा था, उसने जाके उस मोमिन की पिछवाड़ी लाल की और आपकी बहन को हॉस्पिटल पहुंचाया और आपके घर वालों को इन्फॉर्म किया, ठीक। तो जिसने वो जो अच्छा काम किया है भाई, उसकी सजा उसको मिलेगी, उसको अजर उसको मिलेगा, इसी दुनिया में मिलेगा। उसमें जो है उसको इस दुनिया में उसका अजर मिलेगा। जैसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, देखिए शेयर करते हैं। अब जैसे देखिए आप मुकेश अंबानी को ही ले ले, वो जो है शेयर करता है, लेकिन दुनिया का सबसे अमीर आदमी है इंडिया का, तो उसको अल्लाह ताला ने कितना नवाजा है इस दुनिया में। इसी तरीके से जो ये उसने अच्छा काम किया है, इसकी जो है जजा अल्लाह ताला उसको इसी दुनिया में देगा। रही बात शिर्क की, तो शिर्क की माफी नहीं है, इसी वजह से जो है शिर्क के ऊपर जो है अल्लाह ताला उसको जो है आखिरत में जो है मगफिरत नहीं करेगा। और ये जो उसने अच्छा काम किया है, उसने बहुत अच्छा काम किया है, इसकी वजह से अल्लाह उसको जरूर इस दुनिया में सजा देगा, नहीं तो आखिरत में देगा। जैसे कि आप देख लीजिए मुकेश अंबानी है, अब वो जो है शिर्क करते हैं तो अल्लाह ताला ने इनको कितनी दौलत से नवाजा है, भले ही वो शिर्क करते हैं। इसी तरीके से अच्छे काम का बदला अल्लाह ताला उसे इसी दुनिया में देता है। समझ में आया? लेकिन कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया शिर्क की माफी नहीं। तो ये सब जो आप ड्रामेबाजी, ये एग्जाम्पल और ये वो, इन सब में जो आप जो आपके चेले चपाटे बैठे हैं, इन्हीं को चूतिया बनाई है, और यही जो है आपके पाले में आएंगे। समझ में आया? इनसे जो है आपके जो पेट बैठे हैं, जो नीचे भौंक रहे हैं आपसे, यही सब आपके जो है उसमें आएंगे, और कोई मोमिन नहीं आ सकता। अच्छा, इसको कहते हैं मगरमच्छ वाली। अरे रुक रे भाई, ये इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है कि आप लोग इसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। वो भी अच्छे से समझ गया कि मैंने डैमेज कर दिया है। तो उसको ये ज्यादा इंटरेस्ट है बेचारे को कि तुम लोग क्या सोचेंगे। हाँ एलएलबी साहब, हाँ एलएलबी साहब बोलिए ना, आवाज इससे नहीं आ रही ज्यादा आपकी। समझदार तो अपने हजरत याकूब थे। अभी आवाज आ रही है? आ रही आ रही। इससे ज्यादा समझदार तो अपने हजरत याकूब थे। ये तो उनसे बड़ा डंगर निकला। अरे वाह, अरे वाह, कसम से इतनी हंसी आई मेरे को तब आई ना जब इसने आर्ग्यूमेंट दिया, तब नहीं आई। जब इसने पब्लिक के बारे में बोला ना, तब मेरे को ज्यादा हंसी आई। ओके आगे बढ़ते हैं। इस इन लोग की सोच तो इतनी पता चल गई। उमर रियाज साहब, मुझे ये बताओ कि शिर्क करने से अल्लाह की वहदानियत को कोई फर्क पड़ेगा? अरे भाई मुझे पहले ये बताइए, कोई साइकाइट्रिक अच्छा डॉक्टर नहीं उधर दिल्ली में? कहाँ से आप रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं?
हाँ, मैं वहां पे आपके लिए एक बुकिंग कर दूंगा, उसको छोड़ दीजिए आप। ये हाँ बताइए नहीं नहीं, अभी। अब आपको बहुत जरूरत है साइकियाट्री। आप जो हंस रहे हैं, आप अमीन मियाँ मुट्ठू बन रहे हैं, हमने ये कर दिया, आप कह देंगे रात का सफेद। अरे अमित ने तेरा क्या बिगाड़ा? अभी तो उसने कुछ बोला भी नहीं है। ये इसको अमित से क्या प्रॉब्लम है? अमित ने कुछ बोला भी नहीं है भाई तेरे को, क्यों टेंशन ले रहा है अमित का? अरे भाई, अमित भाई को मैं नहीं कह रहा हूँ आपके लग रहा कानों में भी कोई प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूँ आपके मिन मियाँ मिट्ठू बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दिन को रात को कह देंगे दिन है तो दिन थोड़ी हो जाएगा। अच्छा अच्छा आप उमेर, अपना ही बोल ठीक रहे है। हो। अच्छा उमेर, सुनो मेरी बात सुनो, मेरे को एक बात बताओ कि आ, शिर्क करने से अल्लाह को कोई फर्क पड़ता है? शिर्क करने से अल्लाह को हाँ। नहीं। इंसानों को कोई फर्क पड़ता है? इंसानों को हाँ पड़ता है, कैसे? क्योंकि जो है हिदायत वाज़ेह हो चुकी है, अल्लाह का हुक्म वाज़ेह नहीं हो नहीं, चुका है। अरे भाई और मैं वो तुम्हारे, अरे सुनो, तुम्हारे इस्लामिक पर्सपेक्टिव से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि किसी इंसान के शिर्क करने से किसी दूसरे इंसान को कोई फर्क पड़ता है? अरे भाई, आप इस्लाम पे क्वेश्चन कर रहे हो तो मैं इस्लामी की पर्सपेक्टिव तो बताऊंगा या मैं अपनी अपनी मर्जी अच्छा से बता मुसलमान को दूंगा। क्या, अच्छा अच्छा ठीक है, किसी के शिर्क करने से इंसान को क्या फर्क पड़ता है, दूसरे इंसान को? दूसरे मतलब? अरे उसके जो आस पड़ोस में है, जो साथ में रहते हैं, उनको कोई फर्क पड़ता है क्या? जो कुछ शिर्क उनका करते हैं, नुकसान हो जाता है, कुछ फायदा होता है, क्या फर्क पड़ता है? और नुकसान फायदा जो है आखिरत में पता लगेगा जब सबको दोबारा मतलब जिंदा किया दुनिया में कोई जाएगा। फर्क नहीं पड़ता है ना? हाँ, दुनिया में फ्री विल के साथ छूट दी है अल्लाह ताला ने, और अल्लाह हाँ जो नहीं कर पड़ता सको। है, मतलब देखो, बात आपको ये बताना चाह रहा हूं कि शिर्क करने से ना अल्लाह को फर्क पड़ रहा है, ना दूसरे इंसान को फर्क पड़ रहा है, ठीक है? रेप करने का एक एग्जांपल अगर आप लोगे, चलो हो सकता है अल्लाह को फर्क नहीं पड़े, लेकिन हाँ दूसरे इंसान को फर्क पड़ रहा है जिसका रेप हो रहा है। डाका डालने से चलो अल्लाह को फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन दूसरे इंसान को फर्क पड़ता है, ठीक है? कत्ल करने से चलो अल्लाह को फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जिसका कत्ल किया गया और उसके घर वालों को फर्क पड़ रहा है, ठीक है? शिर्क करने से आप खुद बोले कि ना अल्लाह को फर्क पड़ रहा है, ना किसी और को फर्क पड़ रहा है, ठीक है? तो फिर अल्लाह इस पे क्यों सजा देना चाहता है या क्यों देता है सजा, जब ना उसको सजा फर्क पड़ता है ना दुनिया में उससे कोई फर्क पड़ता है? सजा अल्लाह ताला लॉजिक से इसलिए आंसर देगा। दो, लॉजिकल आंसर दो, ताकि ये पता चले कि आप दिमागी अपंग नहीं है। वो तो दुनिया को पता चल गया कौन है दिमागी अकम, अब मुझे बोलने दीजिए। जी, तो जो है मैंने आपको पहले भी इसका जवाब दे दिया, मैं फिर से दे रहा हूँ कि जो है अल्लाह ताला का हुक्म है कुरान में, और अल्लाह ताला की जहाँ तमाम सिफत हैं उसमें से एक मतलब सिफत है आपका अदल अल्लाह की। जो है वो अरे नार्सिसिस्टिक आप है, इंटरप्ट क्यों कर रहे हो? आप इंटरप्ट सैडिस्टिक करके है ये आपका दिखा रहे अल्लाह। हो, एक सेकंड, आप इंटरप्ट करके ये दिखा रहे हो कि आपकी हार हो रही है, आप इंटरप्ट क्यों कर रहे हो? फिर मुझे बोलने दीजिए ओके मेरे उसमें। प्लीज गो अहेड, तू जी जीत जा भाई। जी, वो जीता तो ही हूँ मैं। हाँ, तो मैं ये हाँ कह रहा हूँ हाँ भाई जीत कि जा, कोई मुश्किल नहीं, बोल। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो है आप कह रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्लाह का हुक्म है। अब जैसे कि आप मेरे फ़ादर हो या आपके फ़ादर हो, कोई भी कहना कहे कि बेटा कि जो है आप ये काम कर दो या वो काम, जैसे कि उन्होंने कहा कि जो है आप जो है बेटा बाहर जाके खेल आओ, मैं कह रहा हूँ, तो आप कहें हाँ कि मैं नहीं खेलूँगा, तो जो है अब क्या आपके तो पापा को अल्लाह फ़र्क पड़ा ना आपका मेरे प आपका अरे, बाप अरे! आपको फिर मारेगा? अरे मुझे अच्छा ठीक बोलने है, चल आप एग्जांपल दे इंटर दे, दे 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 हाँ, दे दे, हाँ हाँ, बाप बोलने दीजिए। खेल के आओ, हाँ, हाँ तो बेटा नहीं गया। नहीं गया तो उसमें बाप को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बात नहीं मानी इसकी वज़ह से वो गुस्सा होगा, वो कुछ कर भी सकता है। अब मैं आपको मेन एग्ज़ाम्पल दे दूँ, अल्लाह ताला की तमाम सिफ़तें हैं और अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दे दिया। अब अल्लाह ताला की तमाम सिफ़तें, तो उसमें से एक सिफ़त है अदल, यानी इंसाफ़। इंसान कब इंसाफ़ कब होगा? जब अल्लाह ताला के हुक्म की एक खिलाफ़ वर्ज़ी करे और एक अल्लाह ताला के हुक्म को माने। जो अल्लाह ताला के हुक्म को मानेगा, उसको अल्लाह ताला जज़ा देगा, और जो अल्लाह ताला के हुक्म को नहीं मानेगा, उसको अल्लाह ताला सज़ा देगा। सीधा-सा और लॉजिकल आंसर है, लेकिन आपके दिमाग में नहीं आएगा क्योंकि आपका दिमाग है दिमागी अपंग। दैट्स हो माय गई तेरी आंसर। बात? ठीक है, ये आपको लास्ट मौका है, क्योंकि मैं आपने अभी जो आर्ग्यूमेंट दिया उसको भी ब्रेक कर देता हूं, ताकि मोमिन हजरात जो भी आर्ग्यूमेंट लेके आएंगे ना,
हम बैठे हैं उसको ब्रेक करने के लिए। और ये जो टॉपिक है ना भाई इतना इम्पोर्टेंट है, इससे ही जो समझदार इंसान होगा, अकल वाला होगा, इससे समझ में आ जाएगा कि कितना इलॉजिकल मजहब इस्लाम है। आपने एग्जाम्पल दिया कि एक बाप है, उसने बेटे को पानी लाने के लिए कहा। पहले आप एग्जाम्पल आपने इसने ये दिया, फिर आपने कहा बेटे को खेलने जाने के लिए कहा बाप ने, ठीक है। जब बाप बेटे को पानी लाने के लिए कहता है तो यहां पे बाप का फायदा है, बाप की प्यास बुझती है, बाप को फर्क पड़ता है उसके पानी लाने से। उसी तरीके से बाप जब बेटे को खेलने जाने बोलता है, वहां पे बच्चे को फर्क पड़ता है कि खेलने जाएगा तो हेल्दी रहेगा, या और भी जो भी फायदे हैं खेलने के। और दूसरा, बच्चे के खेलने ना जाने पे बाप मारता नहीं है, सजा नहीं देता, ठीक है। और अगर सजा दे भी दे, उसका कुछ खान पान भी बंद करा दे, सजा नहीं देगा। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, चल बेटा तुझे चॉकलेट नहीं दूंगा, सिर्फ चॉकलेट नहीं देगा, उसको कहेगा कि तुझे ये नहीं दूंगा, उसको सजा नहीं देगा, उसका खाना पीना बंद नहीं कराएगा। अगर कोई बाप ऐसा करता है तो वो निहायत बेशरम और बेकार बाप है। जो बच्चा खेलने में, पापा मैं खेलने नहीं जाना है, मुझे मेरा मूड नहीं है, अच्छा बेटा छड़ी ला मारा, अच्छा बेटा तेरा खाना बंद। खेलने पे जो है बाप जो है इस तरीके से करे, वो बेगैरत बाप है, ठीक है। लेकिन यहाँ बच्चे को फर्क पड़ रहा है, दोनों एग्जाम्पल में किसी ना किसी को फर्क पड़ रहा है। तो ये वाला एग्जाम्पल उस चीज से मैच नहीं होता जो आप शिर्क के लिए दे रहे हैं, क्योंकि आपने शिर्क के लिए कहा कि ना अल्लाह को फर्क पड़ता है ना इंसानों को फर्क पड़ता है कोई अगर शिर्क करता है। तो ये इलॉजिकल बात है कि किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, उसके बावजूद आप उसको ऐसी सजा दे रहे हो कि आप हमेशा हमेशा के लिए जला रहे हो, हालांकि उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा। तो आपका आर्ग्यूमेंट एकदम बेकार, फ्लॉप और सबसे घटिया आर्ग्यूमेंट है। इस आर्ग्यूमेंट के साथ आप अपने अल्लाह को नहीं बचा सकते। अरे कुछ बोलने देंगे या आप नहीं? अरे यार बोलो सर। यस बोलिए, अभी ये लास्ट चांस है आपके पास डिफेंड करने के लिए अल्लाह को। अरे मुझे भाई वाकई लगता है कि आपको बहुत ज़रूरत है जो है साइकेट्रिक डॉक्टर की। उसकी मैं भी आपको प्रूफ दे रहा हूँ कि जब मैंने कहा कि बाप पानी मंगाता है तो हाँ, तो आपने जो है यहाँ पे ये अपनी तरफ से ऐड कर दिया कि बाप का फायदा है, बाप की प्यास बुझती है। मैंने कब कहा बाप पानी? मैंने एक सेकंड, आप वीडियो रिवाइंड करके देखिए। मैंने कब कहा कि जो है बाप मंगा रहा था पानी पीने के लिए? मैंने ये कहा, किसके लिए बस ऐसी उसने बस ऐसी अपने उसने बस ऐसे ही कहा कि पानी यहाँ रख दो, बस उसने हुक्म दिया है, उसका एक हुक्म था, उसने हुक्म दिया। लेकिन अरे भाई पानी यहाँ रख दो, किस लिए रख दो? अरे नहीं किसी लिए नहीं, ऐसे रख दो उसने कहा, उसने बस कहा तो उठा के रख दो उसको। नहीं ये बाप तुम्हारे सुनो, फिर ये बाप तो तुम्हारे अल्लाह जैसा पागल है जो कुछ वजह नहीं है पानी मंगाने की, उसके बावजूद बोले कि पानी लाके रख दो इधर। तुम समझ भाई आप नहीं पा रहे हो। आप मेरे उसको अरे रे 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 ये बाप एग्जाम्पल वाला जो बाप है वो भी इनकी अल्लाह की तरह ही है, इलॉजिकल। मतलब उसको कुछ पानी से लेना देना नहीं है, बस वो ऐसी बोल रहा पानी ला के रख दो, और नहीं लाने पे उसको हमेशा हमेशा के लिए सजा दे रहा। अरे मुझे बोलने आप इंटरप्ट भाई क्यों कर रहे हो? सर क्यों डर रहे हो इतना? मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? बोल दे भाई, बोल दे। क्यों आप बोला आगे भाई? मैंने आपको इंटरप्ट किया था, ये बताइए बस। आप इतना एग्जांपल मुझे जवाब दीजिए, तो आप क्यों मुझे इंटरप्ट कर रहे हो? इसका मतलब आप डर रहे हो और आपके पास कोई वो नहीं रहा, आप खाली मिठे में बन रहे हो। अब मुझे बोलने दीजिए। तो आपने कहा कि जो फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा ये उसका हुक्म हो सकता है, उसको अच्छा ना लग रहा है, नीचे पानी का गिलास रखा है जमीन पे, वो कह रहा उठा के रख दो। ये मैंने बोला, और ये मैंने एग्जाम्पल मेन नहीं दिया था। मेरा एग्जाम्पल जो मेन था वो तो आपने कैच ही नहीं किया। मैंने कहा अल्लाह ताला की तमाम शिफ्तें हैं,
उसमें से एक सिफत है अदल की। हाँ, और अदल जब होगा जब अल्लाह ने हुक्म कुरान के ज़रिए उतार दिया इबादत का। अब अदल जब होगा जब अल्लाह के हुक्म की एक खिलाफ वर्जी करे, सुनना है नहीं, इस एग्जाम्पल को तो नहीं सुनना है, और एक जो है उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी करे, एक उसके हुक्म को माने। जो उसकी हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा तो अदल के लिहाज से अल्लाह ताला की जो सिफत है उसको जो है सजा दी जाएगी। और जो अल्लाह ताला के हुक्म के एतबार से उसकी इबादत करेगा तो अल्लाह के हुक्म के एतबार से जो उसकी सिफत है अदल की, उसके ही एतबार से उसको अल्लाह ताला जन्नत देगा। इसलिए जो है अल्लाह ताला उसको देता है सजा व जगह, उसकी एक सिफत है अदल, उसकी बुनियाद पे। ठीक है, ये आपके दिमाग में घुसा भाई या नहीं घुसा? मैं आपसे जो है मोहब्बत से पूछ रहा हूँ, बताइए। ठीक है, आपका अल्लाह जो है इस चीज से बिल्कुल एक नार्सिसिस्ट और सैडिस्टिक खुदा साबित हो रहा है। वो इस वजह से कि जो ऐसी चीज जो उसको फर्क नहीं पड़ती किसी के करने या ना करने से, उसके बावजूद उसको उस बात के लिए सजा दे, तो ये एक सैडिस्टिक और नार्सिसिस्ट और एक खुद मुंह मियां मिट्ठू नहीं, दूसरे के मुंह से तारीफ सुनने का जो शौकीन होता है ना, ये वैसे वाला आपका अल्लाह है। ऐसा खुदा आपको मुबारक। हम जैसे लोगों के लिए ऐसे खुदा की कोई अहमत नहीं है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाई उमर रियाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं तो भाई आपको एग्जांपल दे दिया, अल्लाह ताला की जितनी दे दिया, अभी सिफत है लोग अदल डिसाइड की, कर लेंगे। आ गई उसको मैंने जाहिर बोला ना, होना जरूरी है। हाँ, वो तो बोल आपके दिया ना। कुत्ते पले हैं, वो तो आपके पेट्स पले। अब फिर आप जो हरामीपन कर रहे हैं, इसका जवाब आपको मैं दूं? आपको जवाब दूं इसका? आपको आप चाहते हो कि आपकी माँ बहन को मैं उस पोजीशन पे लेके आऊं, कुत्तों की पोजीशन पे? नहीं लेके आऊं ना, तो ऐसा नहीं करते प्यारे भाई। मैंने जब आपको बोल दिया कि आपकी बात आ गई, हम ऐसे नार्सिसिस्ट और इलॉजिकल और नॉनसेंसिकल खुदा को नहीं मानते। जो डिस्कशन सुनेगा वो देख लेगा। जब आपको बोल दिया तो आप जो है वो व्यूअर्स पे, ऑडियंस पे गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? आपने अपना मुद्दा रख दिया ना। अगर आपका मुद्दा सॉलिड होगा तो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ऑडियंस जज है ना साहिल भाई, और इसको मालूम हाँ, है जज इसको सजा देगा इसकी बातों के, इसके लिए नाराज हो रहा है बेचारा। पर कॉन्फिडेंस का लेवल जबरदस्त था भाई का। बहुत 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 कॉन्फिडेंस जो है ना वो आला मकाम पे पहुंचा हुआ था। लेकिन आप सोचिए कि इनका अल्लाह भी इतना ही इलॉजिकल है जितना कि ये मोमिन हजरात इलॉजिकल है। ये अपना दिमाग लगाना ही नहीं चाहते। और सबसे बड़ी बेशर्मी की बात तो मुझे वो लगी कि जो मुशरिक, जो हिंदू, जो ईसाई, जो सिख इसकी बहन को रेप होने से होता है और उससे बचा रहा है, इसके और इसके अल्लाह के नजदीक वो बेहतर इंसान नहीं है, बल्कि वो बेहतर इंसान है उसके कंपैरिजन में जो मोमिन है, शिर्क नहीं करता है लेकिन इसकी बहन का रेप कर रहा है। आप सोचो, इनकी ऐसी मेंटालिटी है। ऐसी मेंटालिटी के साथ जो है ये, आप सोचिए कि इनके साथ इनको किसी भी तरीके से मौलवी हजरात जो है वो इस्लाम के नाम पे यूज कर सकते हैं, जिनकी सोच ही इतनी घटिया है। ऐसे यार हर स्ट्रीम में एक कॉलर आता रहेगा ना तो इस्लाम अपने आप लोगों का दूर हो जाएगा। खत्म हो जाएगा ये नतीजा ये। है इस बात का। हाँ, मैं तो चाहता हूं कि जो मोमिन हजरात सुन रहे हैं, आप बताओ। चलो, आप अभी तक मोमिन है, कोई मुश्किल नहीं। आप बताओ कि ऐसे खुदा को, ऐसे अल्लाह को आप खुदा मानते हो? ऐसे ऐसे मुसलमान को आप अपना भाई बनाना पसंद करोगे? लड़कियां मोमिन आए? आप बताओ, कमेंट में बताओ। चलो, आप स्ट्रीम में नहीं आ रहे, कमेंट में बताओ मोमिन हजरात। हमें मालूम है आप सुन रहे हैं। मोमिन हजरात बताइए ना, आप भी सहमत है इनसे? सर देखिए, क्योंकि कहां से सहमत होंगे? नहीं सहमत हो सकते ना। कौन समझदार इंसान ऐसी वाली बात को जो है वो एक्सेप्ट करेगा? है कोई मोमिन हजरात है? बोलेगा अरे कम से कम बोलो ना, हाँ हम भी एक्सेप्ट करते हैं।
ये देखो, मैं अब्दुल्ला मेरानी साहब कह रहे मैं तो उसका सामान ही तोड़ दूंगा। चलो कुछ सुपर चैट लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मिस्टर डीके कह रहे हैं एडम होता तो मुंह की खोलता इसके पर्सनल अटैक्स पे। कोई नहीं यार, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। तेनु अम्ब दा नहीं पता तू अम्ब छुपन जा। भाई थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। बिंदास बंदा कह रहे हैं सबसे बड़ा मुंह मियां मिट्टू तो अल्लाह है। भाई बिल्कुल सर, ये भी बात सही है आपकी। अपनी तारीफ खुद भी करता है और उसके बाद फिर वो चाहता है कि दूसरे भी उसके साथ उसकी तारीफ करें। बिहार वाले बाबा जी कह रहे हैं अलादीन गेट ट्रांसलेटर एंड सी फॉर योरसेल्फ, दे आर मोमिन्स। एग्जैक्टली, उनको सुनना चाहिए ये बातें। नमन वट साहब कह रहे हैं ये क्या अपंगता है, ऐसे को तो मार देना चाहिए। और बिहार वाले बाबा जी आज बड़े एक्टिव है, कह रहे बाय द वे आई एम 1 hour बिहाइंड इन दिस स्ट्रीम एंड स्टिल अलादीन, थैंक यू सो मच। बिहार वाले बाबा जी कह रहे अलादीन नीड टू नो वी आर इमोशनल बट नॉट ब्लाइंडेड बाय हिज प्रेजुडिस ऑफ बीइंग राइट cause you are Arabic. I am not sold to waste my click to subscribe. Kudos Sahil for handling the biased set of brain cells. Thank you so much बिहार वाले बाबा जी। ठीक है, हमारे गेस्ट है और उनकी एक सोच, उनका एक विचार हो सकता है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। वी ट्राइड आवर बेस्ट टू क्लियर आवर स्टैंड एंड आवर व्यूअर स्टैंड। नाखून से खतना भाई ने 10 मेंबरशिप गिफ्ट की है, बहुत बहुत शुक्रिया। जेआर साहब कह रहे हैं बंदे पर ही नहीं टाइम पे भी डिपेंड है तो अमर कैसे। बिल्कुल सर। अबू ताहिर अल जन्नाबी साहब कह रहे हैं भाई चैनल अनबैन पे क्या अपडेट, ऑल्सो स्ट्रीम ऑन मी। आपके ऊपर तो स्ट्रीम ऑलरेडी किया हुआ है भाई। बैन के लिए देखिए बड़े बड़े लोगों के साथ मेरा डिस्कशन है, अगर बैन नहीं हट रहा है तो वी विल, जो मेरी डिस्कशन हुई मैं एक्चुअली खुल के यहाँ बता नहीं सकता हूँ, विल इंश्योर के हिंदुस्तान और पूरी दुनिया को इस एक्टिविज्म और मेरे बारे में पता चलेगा कुछ ही महीनों में, मे बी कमिंग ईयर। तो इतने बड़े लेवल पे काम हो रहा है, मैं यहाँ पे हर चीज बता नहीं सकता। अगर से चैनल अनबैन नहीं हुआ, लेकिन चैनल पे मिलियंस में हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे, थोड़ा सा इंतजार करिए, काम चालू है। JR साहब कह रहे हैं arguing with peacefuls is like playing chess with pigeons, irrespective of how good your moves are, pigeon will still manage to knock your pieces down. सब एक साथ नॉक करके उड़ जाएगा वो। हजारी प्रसाद कह रहे हैं थोड़ा और जलो डीके, थैंक यू सो मच हजारी प्रसाद भाई। और ऑनलाइन लर्निंग कह रहे हैं प्लीज शो दिस सुपर चैट टू डीके स्पेशल फॉर हिम। सर जलने दीजिए इनको। राजन मांजरेकर भाई ने आज कई सारी लाल मिर्ची भेजी है, कह रहे हैं भाई तीसरा सुपर भेज रहा हूं, एक मौका मिलेगा क्या एएम से बात करने का, स्पेशली ऑन क्वेश्चन ऑफ ओवरलैप, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू नॉट टू ब्रेक योर। राजन साहब वो तो चले गए हैं, बट व्हाट यू कैन डू इज उनके चैनल पे वो कॉलर्स लेते हैं, है ना। और बल्कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमारे जो व्यूअर्स है हु आर वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, वो लोग अलादीन के चैनल पे ज्वाइन करके, बिकॉज ही टेक्स कॉलर्स, तो आप जाके आप ये ओवरलैप या हिंदूज या हिंदुइज्म के बारे में जो भी सवाल उन्होंने उठाए, हालांकि मैंने पूरी कोशिश की मेरे नॉलेज के हिसाब से जवाब देने की, आप लोग जो है उनके लाइव में जुड़कर यू कैन जस्ट गिव रेफरेंस ऑफ द स्ट्रीम और उसके बाद आप अपना आर्ग्यूमेंट रखें उनके सामने, नो प्रॉब्लम, ही इज अ नाइस गाय, आई एम श्योर। और चाहिए भी कि आप लोग जो है ना वो उनको बताए, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मुझे जो फीड किया जा रहा है, या फीड वर्ड रॉन्ग होगा, मुझे जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है दूसरे लोगों से, मैं उस हिसाब से आपसे सवाल कर रहा हूं, है ना। तो उनकी कोई गलती नहीं है, तो आप जाके वहां पे अपनी बात रख सकते हैं, ही टेक्स कॉलर्स। हिंदू सनातनी भाई कह रहे साहिल के चैनल का आप कोई बनाए फंड कोई बनाए, आप क्या कह रहे हैं हिंदू सनातनी भाई, मुझे ऐप होगा शायद, ऐप कोई बनाए, फंड मैं दूंगा ऐप। हिंदू सनातनी भाई एक ऐप जो है वो इस्लाम के ऊपर आ रहा है, हमारे एडम साहब और पूरी टीम काम कर रही है। लुकस भाई कह रहे साहिल इज अलादीन रियली एक्स मुस्लिम और इज प्लांटेड बाय, नहीं तो मुझे नहीं लगता प्लांटेड होगा, इज रियली एन एक्स मुस्लिम। विकास सिंह बहुत बहुत शुक्रिया। रॉन्ग आंसर कह रहे हैं दिस क्रिसमस 200 क्रिश्चियंस स्वेयर इंक्लूडिंग चिल्ड्रन इन लैप ऑफ मदर्स बाय बोको हराम।
तो यार ये न्यूज जो है वो अभी तक न्यूज चैनल पे क्यों नहीं आई है? अगर ये क्रिसमस की बात है और 200 क्रिश्चियन, ये स्मॉल नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ा नंबर है, तो ये तो पहुंचना चाहिए यार। क्यों नहीं आई है? आपका सोर्स क्या है? रॉन्ग आंसर भाई, जरा वो भी बताइएगा। विकास सिंह कह रहे साहिल भाई आई लव यू, थैंक यू सो मच। और जेआर भाई कह रहे भाई अभी तो हारिस एस भी सीधा हो रहा। अरे वाह, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट मोमिन साहिल साहब जुड़े हैं। नॉन मोमिन हजरात छोड़ दो यार, ह्यूमैनिटी भाई नहीं ज्वाइन करो। अरे रे रे रे, ये क्या हो गया? अच्छा भाई चले गए। ओनली गेमिंग साहब, मोमिन नहीं है साहिल भी? नहीं है मोमिन? नहीं, इनका कोई वो नहीं था ना, नाम नहीं है कोई। नहीं, प्राइवेट में पूछ लिया था पहले। अच्छा, ओनली गेमिंग साहब आप स्टूडियो छोड़ दीजिए यार। 10 साल से इस्लामिक डिबेट कर रहा हूँ, कुरान की नॉलेज रखता हूँ। ओके ठीक है ह्यूमैनिटी भाई, आप एक अपना चैनल खोलिए और उस पर आप डिबेट्स करिए, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा अमित साहब, वो जरा वीडियो जो आपको भेजा था ना पिंकी वाला, हाँ हाँ, वो लगाओ जरा, ताकि कोई मोमिन हजरात जो है ना वो मेरे पे फतवा ना डाल दे कि मैंने पिंकी वर्ड लेके आया। बराबर है। एक मिनट सैम इंस्टीट्यूट ऑफ एएमएल स्टडीज कह रहे अगर शिर्क करने से अंबानी बन सकते हैं तो सब लोग शिर्क कर लो। व्हाट अ स्टूपिड आंसर ही गया। हाँ यार ये भी बात है, अल्लाह ने दिया बोला ना, अल्लाह ने नवाजा। मतलब वो अंबानी साहब ने जो किया वो अंबानी साहब की मेहनत नहीं थी, उनका दिमाग नहीं था, तो वो अल्लाह ने उनको नवाजा है क्योंकि अच्छा काम करते हैं वो। सब लोग जो है भाई वो शिर्क करो ताकि अल्लाह जो है आप लोगों को भी अंबानी जी जैसा बना दे। और 3-4 ट्राई मैं भी कर लेता हूँ शिर्क करने का, कोई आसपास मंदिर विंदिर में जाके, ताकि मैं भी अंबानी जैसे बन जाऊं। भाई लोग पिंकी जी का वीडियो कितने लोगों को देखना है? लेके आ रहा हूँ 2 मिनट में। हाँ इधर आवाज नहीं आ रही उस पे। अच्छा नीचे कॉलर देखना नाम। अच्छा गया गया वो। अरे सबको देखना है इधर तो दिखाओ। अरे इंस्टा पे आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो गया। और वो डाउनलोड इंस्टा ने डाउनलोड कर लो ना। हाँ डाउनलोड किया हुआ था, वो दिख नहीं रहा, वापस कर देता हूँ। कर लो कर लो। फिजा खान, आज तो इस्लाम से इंसानियत तक का एपिसोड था, अगर आप मोमिना है तो आप आके कोई भी टॉपिक पे हमसे बात कर सकती है फिजा खान। आजा भाई वीडियो आजा। हाँ हाँ साहिल पठान साहब, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है तो मैं आपको नहीं ले पाऊंगा। डिवाइस कनेक्ट कर ले ताकि मैं आपको स्ट्रीम में ले सकूं। कौन गया फिर से? आ जाओ मोहन प्यारो। संदीप आरआर कह रहे साहिल तुम्हें सुनने के बाद अब तो फेक मोमिन बनने का दिल भी नहीं करता।
आओ मोहन प्यारे। दूसरा मोहब्बत का नाम रखना ये भी तो सुन्नत है। इस सुन्नत पे हमने कितनों ने अमल किया। हाँ, गाली में कहेंगे मोटी, अंधी, लंगड़ी, लूली, ये सेकंड नाम रखते हैं, गुस्से में गाली देंगे, लेकिन वो प्यार भरा नाम जिसके उसके दिल के अंदर गुदगुदी हो जाए, वो नाम भी रखें। ये हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार भरा एक दूसरा नाम रखा था, जिसको हुमैरा कहते हैं। हुमैरा के माने है सुर्ख सफेद, जिसको अंग्रेजी में उसका तर्जुमा पिंकी से किया जा सकता है। मालूम हुआ मियाँ बीवी मोहब्बत के साथ, इत्तिफाक के साथ अगर आपस में कोई प्यार भरा दूसरा नाम भी रख लें तो ये भी हुजूर की एक सुन्नत है। ये लो भाई, पिंक, गुलाबी, गुलाबी बुलाते थे। अच्छा, अब कोई ये कहेगा कि भाई आप जो है हुमैरा को गुलाबी क्यों कह रहे हो? तो भाई तुम भी तो यही हरकत करते हो। तुम ओम को अल्लाह बना सकते हो, शिवा को जो है वो क्या कहते हैं, कोई नहीं, कौन थे यार वो, आदम को किसको बनाया था? मनु को तुम आदम बना सकते हो, ओम को अल्लाह बना सकते हो, एलोहिम को तुम अल्लाह बना सकते हो। तो फिर हम हुमैरा को जो है वो गुलाबो या गुलाबी क्यों नहीं बना सकते, या पिंकी क्यों नहीं बना सकते? तुम ही तो ये हरकत करते हो ना। जब तुमको तुम्हारा डोज दिया जाता है तो तब तुम्हारी अकल चलती है कि भाई वहां हुमैरा है, पिंकी नहीं है, गुलाबी नहीं है। तो तब जब तुम्हारे मोमिन हजरात, तुम्हारे मौलवी हजरात जब ओम को अल्लाह कहते हैं और मनु को आदम कहते हैं, तब तुम्हारा दिमाग नहीं चलता कि ऐसे आप नाम के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। एक नाम वाले को जो है वो दूसरा उसका माना ना आप नहीं ले सकते, नाम का आप माना नहीं ले सकते। नाम होता है, चाहे आप उसको कोई भी लैंग्वेज में जब आप बोलोगे तो नाम को आप नाम ही बोलोगे, जो प्रॉपर नाउन होता है। अभी जैसे किसी का नाम टाइगर है, टाइगर, यार टाइगर को वाघ बोलते ना, वाघ, टाइगर है किसी का नाम। टाइगर इज अ गुड मैन। अब जब उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो क्या करोगे? टाइगर एक अच्छा इंसान है, ये नहीं बोलोगे बाघ एक अच्छा इंसान है। ऐसा बोलोगे बाघ एक अच्छा इंसान है? टाइगर जिंदा है ना। तो इस चीज को आप समझिए, जो प्रॉपर नाउन होता है जब आप उसको ट्रांसलेट करते हो, मतलब वो कोई स्टेटमेंट में अगर आप ट्रांसलेट करते हो तो जो प्रॉपर नाउन होता है उसका ट्रांसलेशन आप नहीं डालते हो, आपने उसको एग्जैक्ट वैसे ही रखना है। लेकिन चूंकि तुम लोग ये काम करते हो तो इस वजह से फिर हम बोल सकते हैं कि भाई वो जो है रसूलुल्लाह, हजरत आयशा जो है वो पिंकी थी, गुलाबी थी, गुलाबो थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके आलिम कह रहे हैं। फरीदा जी, फरीदा जी अनम्यूट कर ले। और एक लाल मिर्ची विनी भाई की तरफ से कह रहे हैं, आई विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर, थैंक्स फॉर योर एक्टिविज्म एंड होप योर एफर्ट्स कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर। बिल्कुल विनी जी, थैंक यू सो मच साहिल भाई, लाल मिर्ची के लिए जी। हाँ, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस हम भी अच्छे हैं। हम हस्बैंड वाइफ दोनों थोड़े टाइम से आपका चैनल देख रहे हैं। अरे वाह, और एक कब से मैं देख रहे हैं फरीदा जी? एक्चुअली आप मुझे फरीदा बोलो कौन है, मैं एक्स मुस्लिम हूँ आपकी तरह। ओके। और हाँ, 6 साल से शादी में आई, तब से मैं, उससे पहले से ही एक्स मुस्लिम में हूँ, लेकिन फिर मैंने शादी कर ली जिससे मुझे करनी थी। 18 साल अच्छा, के 18 साल के रिलेशनशिप के बाद शादी की। 18 साल के रिलेशनशिप के बाद आपने शादी की और 6 साल पहले ही आप
एक्स मुस्लिम बन चुकी थी? नहीं, एक्स मुस्लिम में 10-12 साल पहले ही बनी, जब से मैं मेरे हस्बैंड के कांटेक्ट में आई तब से। हाँ। अरे और कितना मेरा महान हस्बैंड है आपके, जिन्होंने आपको एक्स मुस्लिम बना दिया है आपके साथ अभी। हाँ है ना। यार आप तो एकदम महान निकले, आपने इनको एक्स मुस्लिम बना दिया। सर जनरली मेरा बड़प्पन आप मत कीजिए, दिस इज गॉड्स ग्रेस एंड ये प्रभु की एक पेशेंट है, धीरज है, जो मुझे एक बाइंड अप में रखा है मुझे। तो इसके लिए मैं ऐसा नहीं हूँ कि एक को छोड़ के दूसरी कर सकता हूँ। जिससे प्यार किया तो उसको प्रभु में लाने का और उसके बाद ही उससे शादी करना का, ये मेरी फितरत थी। ठीक है ना। अब क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट में, ये फिर हम कभी बात करेंगे इस टॉपिक पे। मुझे ठीक है, फिलहाल मैं इस्लाम की जर्नी जानना चाहूंगा फरीदा जी से। तो फरीदा जी, आप मतलब कितनी मुसलमान थी, नमाजें वमाजें पढ़ती थी, क्या क्या मामला था? एक्चुअली कैसा है, मेरे फादर जो थे वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। तो वो मतलब हम चार भाई बहन थे, 2 भाई है 2 बहन है। और मेरी मदर जो है वो भी एक्स मुस्लिम में से ही मुस्लिम में आई है। आपकी मदर एक्स मुस्लिम थी पहले, फिर मुसलमान बनी? हाँ, फिर मेरे पापा के साथ शादी की, फिर मुस्लिम में आ गई। ठीक है। मतलब एक्स मुस्लिम नहीं, पहले दूसरे रिलीजन में थी, कन्वर्ट हुई, वैसा कहना? हाँ, हिंदू थी, पहले हिंदू थे वो। अच्छा, ओके। ब्राह्मण हिंदू थे। ओके। बराबर। ओके, वैसे वो आई। फिर मेरे जो ग्रैंडफादर है, जब मेरी मम्मी शादी करके आई तब मेरे ग्रैंडफादर जो एक रेलवे में थे और जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब में। तो वो मतलब एक ऐसे माहौल में रहे हैं कि जहाँ सब बस्ती वाले हिंदू मुस्लिम सब रहते थे। तो उन्होंने पर्टिकुलर जो कट्टर मुस्लिम होते ऐसा उनका बिहेवियर नहीं था। मेरी मम्मी शादी करके आई तभी उन्होंने मेरी मम्मी को बोल दिया कि तुझे ये अपनाना है, हमारा तो अपना, नहीं अपनाना है तो कोई बात नहीं है। तो मेरी मम्मी इतने डीप में नहीं गई उसमें, इस्लाम में। और पापा भी कई हद तक सेक्युलर ही रहे हैं। उन्होंने भी कभी हमें इतना फोर्स नहीं किया है कि भाई आपको, छोटे थे खास करके तब तक फोर्स नहीं किया है। लेकिन जैसे हम बड़े हुए और जो खास करके मेरे बड़े वाले भाई हैं, वो जैसे वो सबसे बड़े थे घर में और काफी हद तक पापा के बाद उनका ही सब घर में चलता था, मतलब में, क्योंकि वो जॉब करने लगे थे, घर में भी सपोर्ट करने लगे थे फाइनेंशियली। तो चलता था, मतलब हम भी ऐसी जगह पर रहे हैं जहाँ जो कॉलोनी बोलते हैं, प्राइवेट कंपनी की जो कॉलोनी, वहां पर ही हम रहे। तो वहां भी सब लोगों के, सब धर्म के लोग रहते थे, क्रिश्चियन भी थे, पारसी भी थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, कम ज्यादा थे पर थे। मतलब हमारे दोस्त वगैरह भी सब हिंदू ही रहे हैं उस टाइम पे। तो वो सब मतलब हो गया। फिर जब मेरे हस्बैंड मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे, तब से फिर वो तो आए। आपने फिर नमाजें नहीं पढ़ी कभी? इतना हमें फोर्स ही नहीं किया गया। जब तक कि मैंने तो ज्यादातर कुरान, तो शायद मैं बोलूंगी कि मैं आपकी चैनल से अभी सीख रही हूँ एकदम डीप में, ऐसा बोलूंगी तो चलेगा। आज तो भाई लोग, मतलब ये मतलब क्वार्टर मोमिना थी, इन्होंने इस्लाम को कभी ढंग से फॉलो ही नहीं किया, ना इनका जो घराना था वो रिलीजियस था, इस्लामिक रिलीजियस जो कहते हैं जिसको हम, वो बिल्कुल नहीं था। तो आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट खाली एक नाम की मोमिना थी आप। नहीं, मतलब मैं पापा का ये बोलना था कि हम स्कूल में बाकी लड़कियां जो कपड़े स्कर्ट टॉप पहन के जाती थी, हमको अलाउ नहीं था। हमको पंजाबी सूट, दोनों बहनों को पंजाबी सूट और दुपट्टा डाल के ही जाना है, मतलब में। और कहाँ भी जाना है मम्मी के साथ ही जाना है, अकेले फ्रेंड्स के साथ नहीं जा सकते, ऐसा सब था। मतलब में इतना नहीं था कि नमाज पढ़नी है, हाँ कुरान पढ़ना है, रोजे रखना है, वो सब भी कहते थे, पर इतना नहीं कि मार पीट के बातें मनवाई जाती थी, ऐसा नहीं था। मैंने अभी इसके लिए कॉल किया है कि अभी एक किस्सा मैं आपको जो सुनाने जा रही हूँ कि ये आप, इससे पहले एक भाई जो बोल के गए ना कि ये आपका जो चल रहा था कि हाँ वो जो हिंदू या जो भी होगा वो अगर बचा लेगा बेटी को तो चलेगा, लेकिन अगर नमाज नहीं पढ़ता होगा तो उसका फैसला फिर अल्लाह करेगा। ऐसा कुछ अभी आपके इसके ऊपर थोड़ी देर पहले ही बोल के गए हो। जी जी। उनको ऐसे मैं इनकी सोच दिखा रही हूँ कि मेरे जो बड़े वाले भाई थे, जब उन्हें 2002 में
मेरे और मेरे हस्बैंड के रिश्ते का पता चला, तब उन्होंने क्या किया, अपने 2-4 हिंदू 4-5 हिंदू फ्रेंड, मुस्लिम फ्रेंड जो भी थे 15-20 लोगों को लेके मेरे हस्बैंड के घर गए, उन्हें बाहर बुलाया और उन्हें बाहर बुला के फिर बोला कि मेरी बहन के साथ तेरा ऐसा-ऐसा सुना है, ये सब चलेगा नहीं, ऐसा-वैसा। फिर वो क्या बोलते हैं, ये वर्ड्स तो इतना खराब है, मुझे ये स्ट्रीम पे बोलना भी नहीं चाहिए। उन्होंने मेरे हस्बैंड को क्या बोला, वो सब दोस्त खड़े हुए हैं, वो मेरे हस्बैंड बीच में अकेले हैं, 15-20 लोग उधर खड़े हुए हैं, रोड पे आने-जाने वाले लोग सब सुन रहे हैं और ये जो मेरा भाई जो पूरा मोमिन है, शायद वो कुरान पढ़ा हुआ है, आज तो पूरा ही हो गया है। अभी उसकी वाइफ के आने के बाद तो वो पूरा ही इतना कट्टर हो गया है कि उसे मेरे सामने देखना भी पसंद नहीं है। तो वो उतने सारे लोगों के बीच में वो क्या बोल रहा है मेरे हस्बैंड को कि मेरी बहनों के लिए मैंने हमारे घर पे 2 रखे हुए हैं बंदे, तेरी ज़रूरत नहीं है। अच्छा। अब आप ये 2 बंदे सोच, रखे हुए हैं। हाँ, अब 2 बहनें थी हम, तो ये लोग वो क्या कहना माँगता था कि हमारी बहनें, अब इतना मैं गाली में मसीह में हूँ ना, तो मैं ये गंदे वर्ड्स यूज़ भी नहीं कर सकती हूँ। वरना दूसरा कोई होता ना तो गलती के साथ बात करता कि ये लोग ऐसा बोलना चाहते कि हमारी कौम के लोग हमारी माँ के साथ कुछ भी करेंगे हमें चलेगा, लेकिन आप आवाज कट गई थी आपकी। हेलो। हाँ, आवाज कट गई थी जी। ये लोग ऐसा कहना चाहते कि हमारी कौम के लड़के, हमारी कौम के बंदे, हमारी माँ बहनों बेटियों के साथ कुछ भी करेंगे, हमें गवारा है, लेकिन आप नॉन मुस्लिम, आप क्रिश्चियन हो या कोई भी हो, अगर आप आंख उठा के भी देखते हो तो हमें अलाउ किया गया है अल्लाह की तरफ से कि हम आपको चीर दे, फाड़ दे, मार दे। ये उनकी मेंटालिटी है जी। और उसी तरीके की मेंटालिटी जो है अभी वो जो इससे पहले आया था, लगभग वैसी ही मेंटालिटी थी उसकी। हाँ साहिल भाई, उनका सुन के ही फिर मैंने आपको तुरंत कॉल किया कि भाई ये तेरी तुम लोगों की फितरत ही ये है। आपकी माँ बहन, अगर आपकी माँ बहनों के साथ आपके ही कौम के कुछ भी करेंगे तो आप चला लोगे, लेकिन गलत है, वो फिर कोई भी करे। बिल्कुल सही बात है। चलिए, अभी जो है आप उस जंजाल से निकल गई, आप अपने हस्बैंड के साथ खुश है, ये बड़ी बात है। और आप हमारा चैनल देख रही है, आपको अच्छे से इस्लाम समझ में आ रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। आपने अपने बाकी जो दोस्त है या आप रिलेटिव्स है या जो कम्युनिटी है, वहां पे भी हमारे स्ट्रीम आप लोग शेयर करिए। हाँ श्योर। मेरे फादर का अभी रिसेंटली इंतकाल हो गया है और मुझे इतना वो बुरा लग रहा है कि मैं उनको उसमें से बाहर नहीं निकाल पाई, लेकिन अभी भी वो लोग मेरी बहन है, मेरे जो भाई है, मेरे जो रिश्तेदार है, कोई मेरे साथ, किसी का मेरे साथ कुछ भी रिलेशन नहीं है। अभी सिर्फ मम्मा पापा ही मेरे साथ रिलेशन रखते थे। पापा चले गए हैं, मम्मा है, मम्मा अभी मेरे साथ रिलेशन में, मतलब मैं बातचीत करती है, मिलने आती है। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा फरीदा जी, आप जुड़ी और आपने ये इंसिडेंट्स बताया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ओके, थैंक यू साहिल भाई, थैंक यू। अब्दुल्ला मिरानी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। अब्दुल्ला साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। अच्छा, नीचे एक वापस सुन्नत है भाई, अपने डिवाइस को परमिशन दो। नॉन मोमिन हो ना, बाप पे सुनना, कैमरा बंद कर लो। नहीं, मोमिन हजरत बाप पे सुनना नाम नहीं रखेंगे। ये पता नहीं, ये या तो एक्स मुस्लिम होगा, चला गया। अब्दुल्ला साहब, क्या हाल चाल? कॉलर जो नाम था ना उसका अंदर। जी साहिल भाई, बढ़िया। आप सुनाए क्या हालचाल? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। क्या कहेंगे आज इस साल की आखिरी स्ट्रीम? हाँ, थोड़ा मेरे को वो अलादीन साहब का थोड़ा मिजाज थोड़ा ऑकवर्ड लगा मेरे को, थोड़ा उनका। और इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि पहले फेसबुक पे जब मैं एक्टिव रहा करता था तो एक ग्रुप था इंडियन एथिस्ट का। हाँ। तो उस पे कुछ एक्स मुस्लिम्स भी थे और उसमें एक एक्स मुस्लिम था मुंबई का। तो उसका मैंने मिजाज ये देखा था कि जब भी मुसलमानों के साथ कुछ भी जैसे मॉब लिंचिंग वगैरह ये सब इस तरह का हादसे होते थे,
तो उसका जो है एक्स मुस्लिम होने के बावजूद उसका इस्लाम जो है मुसलमानों के लिए उसका जो मोहब्बत है वो सरफेस पे आती थी। तो वो मिजाज जो है अलादीन साहब का है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इस्लाम से तो हो सकता है ये बाहर हो चुके हैं, लेकिन बट हिज सिंपैथी विद मुस्लिम्स हैजंट फेड अवे। रहता तो है वो शायद मेरे जब को पर्सनल झटके लगेंगे तब शायद आंखें खुल जाए। हाँ, वो डेट माइट बी, बट साहिल भाई इस तरह के जो लोग रहते हैं, मतलब आई वोंट कॉल देम एक्स मुस्लिम्स, क्योंकि वो दो नावों में सवार लोग हैं। अब जैसे आप हैं, आप यूनिलेटरली जो है आप एक्स मुस्लिम है, आपका एक ही नाव में आपका पैर सवार है। हाँ। एडम भाई हैं, तो आई थिंक मुझे आज के स्ट्रीम में मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे मजा नहीं आया। और उनके जो ऑब्जेक्शन थे हिंदूज को लेके, वो भी थोड़ा मेरे को बायस लगे। हाँ, वो तो मैंने पहले ही कहा ना कि वो बाहर से जो आसपास के जो लोग हैं वो उनको डाल के भेजे थे कि भाई आप जाओगे तो फिर इस तरीके के आप सवाल करना। हाँ, बट और जैसे आप कमेंट्स के अंदर भी जो सुपर चैट्स के जरिए भी जो लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, he was calling them stupids। खैर इसमें भी तो भाई, हाँ हाँ बोलिए। अब्दुल्ला मेरानी साहब, बात आप सही कह रहे हैं। इस तरह का जो एक्टिविज्म है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस्लाम पे। और जो साहिल भाई, एडम भाई अपने इंडियन जो एक्स मुस्लिम कर रहे हैं उससे इस्लाम को भयंकर चोट लग रही है। हाँ, इसी वजह से तो साहिल भाई जो एक्टिविज्म आप कर रहे हैं, एडम भाई कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली ट्रू एक्टिविज्म। ये रिफ्लेक्ट करता है कि यू हैव टोटली डिस्कार्डेड इस्लाम, और जो है आप मुसलमानों की रेशनलिटी के लिए काम कर रहे हैं। बट अगर आपके अंदर अगर कोई सिंपैथिक अगर आपके अंदर सिंपैथी रहती है मुसलमानों के लिए, देन यू कांट बी ए प्रॉपर एक्स मुस्लिम। मतलब एक्स मुस्लिम हो ही नहीं सकते आप। क्योंकि जब इनिशियली मैं भी जब एक्स मुस्लिम हुआ था, तो एक मेरा सॉफ्ट कॉर्नर था मुसलमानों के लिए, तो वो मेरे को कई बार ऐसा लगता था कि दैट विल पुल मी अगेन टुवर्ड्स इस्लाम। लेकिन धीरे धीरे आप लोगों को सुनते 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 मेरा एक बिल्कुल हार्डकोर एटीट्यूड ये हो गया कि नाउ आई एम एन एक्स मुस्लिम, और मुझे मुसलमानों से सिंपैथी है, उनके साथ जो मतलब रिलीजन के ताल्लुक से जो होता है उसके लिए सिंपैथी है, बट मेरे को इस्लाम के साथ कोई सिंपैथी नहीं है। एग्जैक्टली, ये आपने यही करेक्ट करने वाला था कि इस्लाम के साथ हमें कोई भी सिंपैथी नहीं है। जी बिल्कुल सही है, और किसी भी लिहाज से हम इसको सही नहीं कहेंगे, और हम कहते भी नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। बिल्कुल सही है। और साहिल भाई जो मैं आपको जिक्र करा था जिस एक्स मुस्लिम का, वो मुंबई का ही है। तो मेरे को जब है ना उस समय ताजुब, पहले जो एक्स मुस्लिम मतलब वर्ड मेरे लिए नया था उस समय, और वो बंदा जो है जब भी कुछ भी जैसे वो सीए एनआरसी का जो इशू हुआ था, शाहीन बाग का जो इशू हुआ था, उस पे वो जो है ही वाज स्पीकिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। फिर कुछ भी अगर हिंदूज जो हैं कुछ भी उसके अगेंस्ट कुछ भी एलिगेशन लगा के उनको बोलना, तो मुझे ये समझ नहीं आता था कि ये बंदा जो है वेदर इज एक्स मुस्लिम और जस्ट एक्स मुस्लिम इन डिसगाइज। मतलब उसके अंदर का इस्लाम पूरा नहीं निकला था। हाँ, और यही मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा पर्सनल अभी जो आज मैंने सुना उसके बाद मुझे लगता है कि ये अपने अलादीन साहब जो हैं इनका भी इस्लाम जो है क्या पूरा की पूरा ये उससे बाहर नहीं आए हैं अभी। और आपके जैसे एक्टिविज्म के ताल्लुक से, जैसे स्लेवरी के ताल्लुक से आपसे उन्होंने एक क्वेश्चन करा था कि इस तरह से मोमिनों को क्वेश्चन करना सही है या गलत है। तो आप एक चीज बताएं मेरे को, आप कि अगर आप जो है उनकी रूट्स पे अगर आप रूट्स को इरेडिकेट करने की कोशिश नहीं करेंगे तो पेड़ कैसे गिरेगा? सही बात है। जस्ट आप अगर एक नॉमिनल जो है डायलॉग करेंगे जिसमें आप वो रिफ्लेक्ट होए कि आप जो है यू आर नॉट हार्श टुवर्ड्स देम, और आप रियलिटी फाइट कर रहे हैं, हार्श नहीं होगे। जरूरत पड़ने पे सर्जरी करनी पड़ती है ना, कभी कभार नॉर्मल दवा से काम चलाना पड़ता है, कभी कभार जो है वो कड़वी दवा से काम चलाना पड़ता है, उससे भी काम नहीं बन रहा तो फिर सर्जरी करनी पड़ती है। तो अब जहां रिक्वायर्ड है वहां सर्जरी तो करनी पड़ेगी।
अच्छा, इवन मैं बोलूँ आपको, जब एडम भाई स्टार्टिंग में मैंने एडम भाई को सुनना चालू किया तो मेरे को ऐसा लगता था कि मतलब जो एडम भाई का जो तरीका है थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगता था। देन स्लोली मेरे को जब मैं उनको सुनते गया तो मेरे को सब समझ में आया कि द वे ही इज स्पीकिंग वो तो बनता है, वो ज़ाहिरी तौर पे मोमिनों को समझाने के लिए पोलाइट भी होना पड़ता है और हार्श भी होना पड़ता है। हाँ, दोनों चाहिए, दोनों कॉम्बिनेशन चाहिए डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। और साहिल भाई एक चीज मुझे जो लगी है कि व्हाट ही इज डीलिंग विद, जो वो डील कर रहे हैं वो दैट इज मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ वेस्ट, जो कि लिटरेट है, जिनका वे ऑफ थिंकिंग अलग है। हिंदुस्तान का जो मुसलमान है उसका सोचने का तरीका अलग है, और वेस्ट का जो मुसलमान है उसका सोचने का तरीका अलग है। बहुत फर्क है भाई। फर्क है, तो सही बात है। हाँ, इसलिए ऑडियंस जो आपको हिट कर रही है, जो वहाँ पे जो मुस्लिम मोमिन आ रहे हैं उनके पास में और अपने पास जो मुदर मोमिन आते हैं, उनमें ज़ाहिरी तौर पर फर्क तो होगा ना। सही बात है, बहुत फर्क रहता है। तो वहाँ के थोड़े एजुकेटेड होते हैं ना, लेकिन इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि वो डम नहीं होंगे। एजुकेटेड हो या कुछ भी हो, वो तो डम ही होंगे। हाँ, लेकिन जिस तरीके से यहाँ के लोग बात करते हैं वैसा वो बात नहीं करते, वो थोड़ा अलग अंदाज से बात करते हैं। यहाँ वाले जो है वो थोड़ा अलग अंदाज से बात करते हैं, तो हमको जैसा इंसान आता है उस हिसाब से अपना टोन चेंज करना पड़ता है। बिल्कुल सही। नहीं, आप देखें ना, आपके चैनल पे भी मेरे हिसाब से 2-3 बार जो है वेस्ट से मोमिन आए हैं जिनसे एडम भाई और आपने इंटरेक्ट किया है, तो उनका जो बात करने का सलीका था काफी अच्छा सलीका था उनका। हाँ, सही बात है। होता है, कोई नहीं। हमको जो है बहुत अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे, और उनको अगर लगता है कि वो इस तरीके से काम करके लोगों को बाहर निकाल सकते हैं तो लेट देम वर्क। हमारे पास तो मैंने कहा था ना कि हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वी हैव द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ पीपल। तो वी नो कि वी आर गेटिंग रिजल्ट, पीपल आर कमिंग आउट ऑफ इस्लाम। अब वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं उनको करने दीजिए, और उनके बाद उनको खुद एसेस करने चाहिए कि हमको कितना रिजल्ट मिल रहा है। तो दैट इज फाइन, आई एम वेरी ओके विद दैट, क्योंकि आपको मालूम है अब्दुल्ला भाई कि मैं कितना ज्यादा लीनियंट हूँ। तो सही, बिल्कुल सही। हाँ, दैट इज फाइन, इट्स ओके। अच्छा, आज हाँ, बोलिए। बोलो, आप बोलो। साहिल भाई, एक चीज और जाहिर होती है इस चीज से कि अगर एक हिंदू जो है, अगर वो एक किसी मुसलमान को अगर चांटा भी मार देता है तो उसकी गूंज कहाँ तक जाती है, और एक मुसलमान अगर एक हिंदू का कत्ल भी कर दे तो वो आपको वेस्टर्न मीडिया में उसका कुछ भी प्रोपोगेशन नहीं मिलेगा, जो आज अलादीन साहब की बात से रिफ्लेक्ट। सही बात है। जी बोलिए, आप पूछ रहे थे। इसी वजह से मैंने उनको कहा था ना कि ये आपको उतना ही मालूम होता है जितना प्रोपेगेंडा किया जाता है, जितना फीड किया जाता है आपको उतना ही वहां पे मालूम पड़ता है। बिल्कुल सही। नूपुर का केस पूरे दुनिया में चला गया। नूपुर के टाइम पे कन्हैया लाल जो टेलर था उसका मर्डर हुआ, उसको ये इस बंदे को पता ही नहीं था। और वहाँ एक ये कोई चोर था, उसको पकड़ के पीट दिया था तो वो मर गया बाद में। उसके वेस्ट में सबको पता है। चलिए, खैर, और कुछ कहना चाहेंगे अब्दुल्ला साहब? फिर उसके बाद हम स्ट्रीम क्लोज करेंगे आज की, इस साल की स्ट्रीम। एक चीज और कर रहा था मैं कि आपने एक बढ़िया एक उनको हिट किया है कि मैं साहिलिज्म नाम का नया जो है आइडियोलॉजी लॉन्च कर रहा हूँ। हाँ, वो बहुत सरप्राइजिंग वो बंदा जो है बिल्कुल पूरा कंफ्यूज हो गया था। बोला मेरे को मतलब ऐसा लगा कि हाँ, उसको पहले लगा कि मतलब आपने ना उसको डिलेमा में डाल दिया। वो ये समझ नहीं सका कि वेदर यू आर जोकिंग और वेदर यू आर सीरियस। ये असल में ना, अभी ये कोई समझो अगर न्यूज चैनल पे जाता हूं मैं, वहां पे कोई मुल्ला मौलवी जब बोलेगा ना तो उसको भी ऐसी शौक में डालता हूँ, रुक जाओ थोड़ा मौका मिलने दो। एक क्वेश्चन पूछो साहिल भाई आपसे।
हेलो। हाँ हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए ना। जैसे आप कहते हैं कि इट डजंट अफेक्ट यू वेदर यू बिलीव इन गॉड और नॉट, से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे मैं पर्सनली मेरे बताता हूँ, अभी मेरे बाबा को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, उनके बाउल मूवमेंट्स थोड़े इरेगुलर हो गए थे, तो उनकी कोलोनोस्कोपी हमें करवाई थी, इन्वेस्टिगेशन सीटी स्कैन वगैरह सब हो गए थे उनके। तो उस समय मेरे को मतलब आई वाज फीलिंग जैसे कि मैं मतलब दुनिया में मतलब अकेला हो गया हूँ। आई वाज नॉट एबल टू कनेक्ट टू गॉड, मतलब मैं क्योंकि मैं किसी रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहा था, तो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, और मैं ऐसा लग रहा था कि मैं किससे दुआ करूं। तो मुझे बड़ा ऐसा लग रहा था कि जैसे आई एम हेल्पलेस। तो लेकिन अब्दुल्ला साहब, मैं समझ गया आपका सवाल कि वो एक स्टेज आता है जहां पे आप एकदम अपने आप को मजबूर, मायूस समझते हैं, और उसके बाद यू नीड सम काइंड ऑफ आसरा, एक आसरा चाहिए होता है कि भाई किससे दुआ मांगू जो मैं सिचुएशन से निकल जाऊं। लेकिन उसमें मेरा काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि जिनके पास ये खुदा नामी आसरा होता भी है, तो बहुत से बार वो आसरा लेने के बावजूद भी आपका जो अपना है वो चला जाता है दुनिया से, या वो और बुरी सिचुएशन में फंस जाता है। आप बहुत बोलते हो, बहुत दुआ करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन वो और बेकार सिचुएशन में चले जाता है। तो आपके उस आसरा लेने से उनके सिचुएशन में कोई बेहतरी नहीं आई। आप समझे मेरी बात अब्दुल्ला भाई? ठीक है, फॉर टाइम बीइंग जो है वो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं किसी से दुआ मांग लूं, तो कभी कभार जो है वो आसरा, जैसा मेरे लिए वो आसरा एक दोस्त भी हो सकता है जिसके सामने मैं रो सकूं, जिसके सामने मैं अपनी तकलीफ को जाहिर कर सकूं। हालांकि मैं इसको भी प्रीफर नहीं करता हूं, क्योंकि आप जिसके सामने भी रोगे, जिसके सामने अपना दुख जाहिर करोगे, सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक्सपीरियंस अक्सर लोगों का ये होता है कि आप जिसको अपनी कमजोरी बताते हो या अपने दिल का हाल बताते हो, वो जाके आपका फायदा उठाता है कोई ना कोई स्टेज। ठीक है, तो मैं प्रीफर नहीं करता हूं, लेकिन मेरे लिए आज की तारीख में कुछ ऐसे लोग हैं जिन पे मैं बहुत ट्रस्ट करता हूं, तो मुझे अगर वो आसरे की जरूरत है तो वो मेरे लिए वो इंसान होगा जिसपे मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूं। उसको मैं सारी चीजें, अपने दिल का हाल बता के मैं आंख से आंसू निकाल सकता हूं या रो सकता हूं। वरना मेरे लिए वो जो आप आसरे की बात कर रहे हो, सुपर पावर या सम अदर बीइंग, तो मेरे लिए वो कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए बात कर रहा हूं, अगर किसी के लिए रखता है तो आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। देखो साहिल भाई, जैसे आज आप अपने दोस्त से आप उनको अपना आसरा मान के आप उसके सामने मतलब आप रो लेते हैं, ठीक है, बट आपके दोस्त की लिमिटेशन है। हाँ, लेकिन when you pray to God, you know you are praying to an entity which is limitless. हाँ, लेकिन तो लिमिटलेस होने के बावजूद आपको उस सिचुएशन से नहीं निकाल पा रही है ना वो, बहुत से एग्जांपल्स में। अब साहिल भाई देखे, अब जैसे मेरे बाबा का जब अभी कोलोनोस्कोपी हुई थी, मतलब मैं इतना डर चुका था, क्योंकि बिकॉज सिम्टम्स जो थे दे वर मिमिकिंग लाइक कैंसर। तो मैं इतना हताश हो गया था, तो फिर मैंने कुछ दुआएं जरूर पढ़ी। मैंने वो दुआ मतलब मजबूर हो गया था मैं कि मुझे जो दुआ जो हिस्टोरिकल मुस्लिम के अंदर जो दुआ दे रखी है, मैंने उसमें से दुआ पढ़ी। उसके बाद रिजल्ट मतलब पापा का कुछ तकलीफ नहीं निकली, कुछ प्रॉब्लम नहीं निकली। मेरे बहुत नजदीकी में किसी को कैंसर हो गया था, हमने दुआएं पढ़ी, हमने सब कुछ पढ़ा, हमने क्या कहते हैं वो सारी चीजें कर दी, सदका खैरात, गरीबों को खाना खिलाना, अल्लाह से मांगना, सारी चीजें कर दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो फिर भी तो जो है वो इतनी तकलीफ के साथ वो इस दुनिया से गए। तो हमारे केस में तो वो काम नहीं आई दुआएं। उनको कैंसर हो गया था, ठीक, फिर जब गए तो सबने दुआएं मांगी कि ये फिर से वो नहीं होना चाहिए, फिर से कैंसर नहीं होना चाहिए, सबने दुआ मांगी। लेकिन उस लिमिटलेसनेस बीइंग ने कुछ उनका कैंसर खत्म नहीं कर दिया। जो था वो आया इसमें जो टेस्ट करवाए,
उम्मे शाम आई थी, उन्होंने बताया था ना कितनी दुआएं पड़ी थी। हाँ हाँ, उनके हस्बैंड का एग्जाम्पल जो है वो क्लासिक एग्जाम्पल है। क्लासिक एग्जाम्पल। नहीं, जैसे पर साहिल भाई मेरा जो तजुर्बा, जाती तजुर्बा, जैसे मेरी वालदा जो हाँ है, ठीक है, आपके साथ अभी अच्छा तजुर्बा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि हमेशा आपके साथ अच्छा ही तजुर्बा हो, आपके साथ हमेशा अच्छा ही हो, लेकिन रियल वर्ल्ड में सब लोगों के साथ ऐसा नहीं होता भाई। उसके बारे में मैं क्या बोलूं साहिल भाई, बट मेरा जो जाती, जैसे मैं छोटा सा ये एग्जांपल मेरी देखो, वालदा और का देता जैसे हूँ। कि कल अवैस भाई ने आर्गुमेंट रखा था, कल नहीं परसों, अक्षय भाई ने भी बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। लिमिटलेस जो है वो हाथ पैर वापस नहीं देता। किसी के हाथ पैर कट जाए, उसका हाथ पैर वापस नहीं आता, कुछ भी कर लो आप, रो रो के सर पटक लो वो हाथ थोड़ी ना वापस हो जाएगा। ये बात तो सही है। तो हाँ, तो लिमिटलेस जो है उसको, उसके लिए लोगों को इतना पता है कि यहाँ काम नहीं करेगा, जहां पे गुंजाइश है वही उस पे मांगो। आप बोलो ना कि अगर किसी का हाथ कट जाए, ठीक है, और वो प्रूव हो जाए कि भाई ये हाथ अभी कुछ काम का नहीं है, क्या आप दुआ भी मांगेंगे कि इसका हाथ वापस आ जाए? नहीं, इसमें साहिल भाई एक चीज है ना, हमको हद मालूम है कि ऊपर वाले ने जो है शिफा देने की क्या हद मतलब मुकर्रर कर रखी है। अब जब, जहां तक आपने लिमिट लेस कहा था, अब आपको उसकी लिमिट पता चल गई है कि हाथ कट गया तो ये उसके लिमिट के बाहर है। आप समझ रहे क्या मेरी बात? हाँ हाँ, बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। अभी तक आप जिसको लिमिट लेस कह रहे थे, उसकी लिमिट आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यहां पे काम नहीं आएगा। यू कैन। तो ये पूरा असल में कैसा है ना अब्दुल्ला भाई, ये दिमाग का गेम होता है। सारी चीजें साइकोलॉजी से कनेक्टेड है। मैं इस बात से आपके एग्री करता हूं और 110% आपके एग्री करता हूं, और इसी वजह से मैं किसी के साथ उसका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है गॉड के साथ, मैं वो कभी छीनना नहीं चाहता हूं, क्योंकि बहुत से लोगों को साइकोलॉजिकली वो एक कनेक्शन की वजह से वो बहुत जल्दी बीमारियों से रिकवर भी करते हैं। सही सही कहा है ना? वो ये इस वजह से नहीं कर रहे कि भाई वो खुदा ने कुछ कर दिया, वो एक सूडो इफेक्ट होता है, व्हाट यू कॉल्ड, अरे वो टर्म क्या है यार, नकली गोली खिलाते हैं उसको असली समझ के, उसको वो ठीक होने लग जाता है। व्हाट इज दैट इफेक्ट? कुछ तो उस दिन बोला भी था, याद नहीं आ रहा। हाँ, इट्स अ वेरी कॉमन टर्म। कौन सा इफेक्ट होता है यार वो? प्लेसिबो इफेक्ट। थैंक यू। प्लेसिबो इफेक्ट होता है। तो इट्स गुड, ठीक है, अगर उनको वैसा स्पिरिचुअल कनेक्शन की वजह से इफ देयर बॉडी रिकवरिंग फास्ट, इट्स गुड। साहिल भाई, मैं तो लिटरली कह रहा हूँ कि आई विल सैल्यूट योर कॉन्फिडेंस, कि आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप ऐसे आइसोलेशन में रह के एंड बिना किसी डिवाइन अथॉरिटी के, मतलब उसके ऊपर आप बिलीव करें, आप मतलब इतना कॉन्फिडेंट है। इट इज अमेजिंग फॉर मी, लिटरली इट अमेजिंग फॉर मी। बहुत कुछ देखा है ना लाइफ में, तो अच्छे से हर एक चीज जो है वो ज़हन में बैठी हुई है। सही सही। चलिए ठीक साहिल भाई, अच्छा, थैंक यू सो मच अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला मेहरानी साहब, जाते जाते थोड़ा एक मजेदार चुटकुला देख लो। बताइए। हाँ ठीक है, औरतों की असल जिम्मेदारी, उड़ाने वाली को पायलट जिसको कहते हैं, वो एक औरत, जिस फ्लाइट से हम आ रहे थे उसे उड़ाने वाली को पायलट जिसको कहते हैं, वो एक औरत थी, एक लड़की थी। मैंने शेख से सवाल किया, कहीं हम मुसलमान लोग बच्चियों को नीचे करते 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 ऐसा तो नहीं है कि हमने इनको बहुत ज्यादा नीचे कर दिया है, और दूसरी कौम अपनी बच्चियों को ऊपर उठाते उठाते इतना ऊपर उठाए हैं पढ़ाकर लिखाकर कि आज उनकी बच्चियां प्लेन चला रही हैं। मैंने ये सवाल किया, ये समझ में आया क्या भाई? ये समझ में आया क्या? अरे भाई आया नहीं आया जी, आगे सुन लो।
अब शेख का जवाब, शेख ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, मुझे दिल को लगा जवाब। ये बच्ची अगर प्लेन नहीं उड़ाएगी तो दूसरा कोई रहेगा जो आएगा ये प्लेन उड़ाएगा, इसका नुकसान नहीं होगा। यहां तक आया ना समझ में? लेकिन अल्लाह ने इस बच्ची को औरत होने के हिसाब से इसे एक जिम्मेदारी दी है। अगर एक माँ है इसकी एक जिम्मेदारी है, अगर एक बीवी है उसकी एक जिम्मेदारी। अगर वो जिम्मेदारी इसने नहीं निभाई तो दुनिया में कोई और उसकी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, वो जगह हमेशा खाली रहेगी। जिस फ्लाइट से हम आ रहे थे उसे दूसरा कोई निभा नहीं सकता। इनके कैसे कैसे अजीब अजीब लॉजिक रहते यार, इतने दिमागी अपंग होते हैं। ये वीडियो अभी भेजा था मेरे को इन्होंने, अपने हाफिज कारी साहब ने। हाँ चलो दिखाता हूँ। और एक और मजेदार, साहिल भाई अपनी जमात की है ये। अच्छा ये चीजा क्या? हाँ आप देखो ना, आपसे मालूम पड़ रहा है इनकी दाढ़ी से भी और उनके बात करने के सेंस से। ये कौन है अभी दिखाओ ये। ये बहुत मजेदार है, इसको ध्यान से सुनना। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सर्दी लगी। अल्लाह यार कैसे हैं भाई? बहुत ये बहुत सर्दी मजा आता है। इतनी भी तो सर्दी नहीं है भाई। बस यार हमारे पास सर्दी है ना, क्या करें। किसी मौलवी के गोद में बैठ जाते ना, बड़े मौलवी के गोद में बैठ जाते, गर्म हो जाते हैं। क्या ख्याल? अरे बहुत खतरनाक, ये सुन्नियों की बहुत खतरनाक बजाता है हंसते हंसते ये शिया ये। सही है, चलो खैर जाते जाते नाखून से खतना। अच्छा नोमैड भाई ने 10 मेंबरशिप गिफ्ट की है और नाखून से खतना भाई ने 2 मेंबर क्या हो गया मेरी आंख को 10 मेंबरशिप गिफ्ट की है। और मूवी समरी भाई ने कहा है वर्किंग वुमेन क्या मदर नहीं होती क्या? बिल्कुल सर, इनके नजदीक कुछ नहीं होती वो। नाखून से खतना भाई कह रहे हैं अरे साहिल 2-3 जोक्स तो मारने दो, कितनी जल्दी लगी रहती है स्ट्रीम एंड करने सोने की। एडम साहब होते तो अभी और 1-1.5 घंटा कहीं नहीं जाना था। एडम और साजिद ये आते ही लोग पूरी कोशिश करते हैं कि स्ट्रीम जल्दी बंद नहीं हो, बल्कि होता ये है कि 7 घंटा हो गया, अब मैं फिराक में हूं कि यार बंद करना है, तो वहां पे साजिद शुरू हो जाएगा, जानबूझ के कोई टॉपिक छेड़ देगा साजिद एडम के साथ। अब एडम साहब को टॉपिक मिल गया तो एडम साहब कहाँ खत्म होते बंद होते, एडम साहब लिए उसको और पौना घंटा खींचे। उसके बाद साजिद क्या करेगा, जानबूझ के और एक उस पे 2-3 सवाल डालेगा कि भाई लो और 2-3 क्वेश्चन। वो जो स्ट्रीम 7 घंटे में क्या कहते हैं उसको खत्म होने वाली थी, उसको हो जाते हैं 9 घंटा, 10 घंटा, 8 घंटा, 7 घंटा, ऐसा हो जाता है। तो भाई लोग मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि स्ट्रीम जो है वो बहुत ज्यादा लंबी ना करते हुए 5 घंटा 4.5 घंटा इतने पे रखा जाए, ताकि आप लोगों को भी देखने में तकलीफ नहीं हो, हमको करने में भी तकलीफ नहीं हो, और जो है ना वो हेल्थ इश्यूज आप लोगों को भी नहीं हो, मुझे भी नहीं हो। तो हालांकि 5 घंटा आप सोचो ये कोई कम टाइम नहीं है भाई। यहाँ पे कई सारे लोग सोचते हैं 5 घंटा इतने जल्दी बंद कर दिया। अरे भाई 10-10 मिनट के वीडियो देखने में लोग बोर हो जाते हैं। आदत ही ऐसी लगा दी है साहिल भाई, 8-10 घंटा नहीं होता, ऐसा लगता है छोटी स्ट्रीम हुई है बहुत। वही तो देखो ना, यहाँ पे कोई वीडियो भेज दे तो 10 मिनट वीडियो देखने में बहुत से बार जो है ना आदमी बोर हो जाता है, बीच में से आधे में से खत्म कर देता है। और यहाँ हम लोग 5-5 घंटे के बाद भी हमको लग रहा है कि यार ये क्या है, मुसीबत इतना जल्दी खत्म कर रहा है, अभी ये रात कैसे कटेगी। और अब ये वेकेशन का सीजन चल रहा है, छुट्टियों का टाइम है, फिर भी 3000 लोग देख रहे हैं आज भी, और वो भी रात के नहीं, और वो भी 3000 इस वजह से है क्योंकि इंग्लिश स्ट्रीम थी। हाँ। इंग्लिश स्ट्रीम स्टार्टिंग में थी और मोमिन हजरात भी। हाँ नॉर्मली 5-1 हजार होते थे, और लेकिन आज न्यू ईयर भी है और इंग्लिश स्ट्रीम भी थी, इस वजह से। और दूसरी चीज कैसा है कि मोमिन हजरात जो है वो भी इंग्लिश स्ट्रीम थी करके फिर वो ज्यादा जुड़े नहीं, है ना, तो ये मसला होता है। तो अभी जो है वो आगे की स्ट्रीम जो नॉर्मल हिंदी स्ट्रीम होगी उसमें हम मोमिन हजरात को और मौका देंगे। वो स्टार्टिंग से आते तो फिर एक लाइन लगी रहती है उनकी
तो आराम करो। अच्छा, किसी का बर्थडे था ना आज, आप बोले थे बाद में सेलिब्रेट करेंगे, नाम याद है? हजारी प्रसाद जी का कर दिया था ना विश? हाँ, हजारी प्रसाद जी का कर दिया था, और एक किसी का था शायद, वो 1 तारीख को है। अच्छा ठीक है। नाम ध्यान नहीं है। तेनू अंब दा नहीं पता, तू अंब चुपन जा भाई। थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई लोग थैंक यू सो मच। व्हाट्सएप देख लो एक बार। क्या देखो? व्हाट्सएप देख लो एक बार। अच्छा एक मिनट, कौन है ये? अच्छा, अवैस इकबाल भाई लाइव है क्या? हाँ हाँ हाँ, तो लिंक शेयर कर दो, जो लोग हैं यहाँ से वो अवैस इकबाल भाई के स्ट्रीम में आप लोग जो है जुड़िएगा, उनको भी सपोर्ट करो, उनको भी लगे कि यार मैंने इंटरव्यू दिया था साहिल के पास, अभी जो है वो लोग मुझे भी देख रहे हैं, क्योंकि ही इज वेरी वेरी लर्नड पर्सन। मैं उनकी बात करने की स्टाइल, उनकी नॉलेज से काफी इंप्रेस हुआ उस दिन। तो आप लोग जो है वो अवैस भाई के चैनल पे जरूर जुड़े। तो भाई लोग थैंक यू सो मच। और फिर से मैं कह रहा हूं कि ठीक है, कोई जो एक्स मुस्लिम आता है, स्पेशली जो बाहर से आता है, वो थोड़ा अलग होता है, उनकी सोच अलग होती है, उनको हिंदुस्तान का इतना नॉलेज नहीं होता है। जो थोड़े मोड़े लोग जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, जिस तरीके से उनके चैनल्स पे जाके कमेंट करते हैं, तो वो उसको रियलिटी समझ लेते हैं। यहाँ पे आए, हमको मौका मिला अपनी बात रखने का, हमने अपनी बात रखी, तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। अपने को ज्यादा दिल पे लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक्स मुस्लिम है, एक्टिविज्म पे काम कर रहा है, इंडिया के खिलाफ अगर नहीं बोल रहा है तो वी विल सपोर्ट देम। एनीवन हु इज अगेंस्ट इंडिया, हमारी कंट्री के खिलाफ है, ऐसे किसी को भी हम, चाहे वो कोई भी रिलीजन से हो या भले से एक्स मुस्लिम हो, इंडिया के खिलाफ जो भी बोलेगा हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके अलावा हाँ, इसमें इंटरप्ट कर रहा हूँ, जी माफी चाहूंगा। मैंने देखा है काफी एक्स मुस्लिम जो इंडिया के जो एक्स मुस्लिम्स है, दे आर वेरी लॉयल टू देयर कंट्री, मतलब उनकी लॉयलिटी में इजाफा ही होता है आफ्टर लिविंग इस्लाम। बट मैंने देखा है कि जो एक्स मुस्लिम्स हु कम फ्रॉम पाकिस्तान जो हैं, उनका एक्स मुस्लिम होने के बाद भी उनका जो नजरिया है हिंदुस्तान के लिए, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आते। आप हैरिस सुल्तान को भी देख लें आप, या हम किसी का नाम नहीं लेते अब्दुल्ला भाई, किसी का भी हम नाम नहीं लेते। हाँ, आप चलिए ठीक है, अपन जनरल बात करें आप, तो ये एक्स मुस्लिम्स के अंदर मैंने एक थोड़ी प्रॉब्लम देखी है कि इंडिया के ताल्लुक से जो है उनके व्यूज जो हैं, इवन खास करके रिगार्डिंग हिंदूज, वो चेंज नहीं होते। और ये बड़ा मेरे को ताज्जुब भी होता है कि न हिंदुस्तान और न हिंदूज, ये मुल्क और ये कम्युनिटी ऐसी है जो मेरे हिसाब से विच इज वन ऑफ द मोस्ट टॉलरेंट नेशन एंड वन ऑफ द मोस्ट टॉलरेंट कम्युनिटी। तो फिर के लोगों के अंदर इतना क्यों हिंदुस्तान के लिए और ये सनातनियों के लिए इतनी नफरत है, मुझे समझ में नहीं आती। बचपन से और मैं एक्स मुस्लिम की बात कर रहा हूँ। अब्दुल्ला मेहरानी साहब, बचपन से जो चीज फीड गई है वो निकलते निकलते टाइम लगेगा ना। अब हिंदू शिर्क करता है, इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, लेकिन वो नफरत बनी रहती है ना कि शिर्क कर रहे हैं ये लोग, शिर्क कर रहे हैं, वो चीज नहीं दिमाग से जाती। अच्छा अमित भाई, एक बात बताया मेरे को, इस्लाम छोड़ना, तर्क करना ज्यादा मुश्किल है कि हिंदूज के लिए, इंडिया के लिए अपने एटीट्यूड को चेंज करना ज्यादा मुश्किल है? ये बताएं आप मेरे को। लेकिन बचपन से जो फीडिंग है वो नहीं निकल रही ना। इस्लाम आपने छोड़ा है, वो आपकी जो थिंकिंग है वो चेंज होने में बहुत टाइम लगेगा। स्पेशली अब्दुल्ला भाई, स्पेशली जो तो पाकिस्तान रीजन से आता है ना, तो उनको कैसा है, बचपन से ही एक हेट फैलाया जाता है हिंदूज के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, तो वो एक असर रह जाता है। अच्छा, वो ओवैस भाई भी जैसे कह रहे थे, मैं आपको बताता हूँ, ओवैस भी कह रहे थे कि जो है पाकिस्तान के लोग इंडिया के अमूमन जो है मेजोरिटी जो है वो हिंदुस्तान के लोगों से मोहब्बत करते हैं। आप देख लें, पाकिस्तान का बच्चा भी, उसके जहन में हिंदुस्तान के लिए नफरत उसके पेरेंट्स डालते हैं। आप ढेरों वीडियो, साहिल भाई ढेरों वीडियो में मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब उनके बच्चों को देखता हूँ पाकिस्तान के,
मुझे समझ में नहीं आता, हमने तो हमारे बच्चों को कभी सिखाया नहीं कि इवन नॉन मुस्लिम्स के लिए कुछ हमने तो कभी इस तरह के जुमले या सिखाए नहीं। वो हिंदुस्तान मतलब बच्चे को हमने देखा था, वो कह रहा है कि हमारे पास एटम बम है, मेटम बम फेंक देंगे, मार देंगे मतलब। और अभी एक इंडिया के बच्चे को भी मैंने देखा तो बड़ा ताज्जुब हुआ, उसको बोला कि हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलो, तो वो बच्चा बोलता है, बोले आप मेरे को मार भी दोगे तो मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोलूंगा। तो इस तरह की अपब्रिंगिंग तो मतलब इंडिया में तो बहुत मतलब आपको कम मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बच्चों के अंदर इस तरह की अपब्रिंगिंग होती है, मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि औलादों को आप ये सिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक आपको देखना चाहिए कि जैसे कि एडम ने खुद बताया था कि किस तरीके से नफरत उसके दिल में भी डाली जाती थी, लेकिन उसने जब देखा, उसने जब समझा, हिंदुस्तानी लोगों से बात किया, आज एडम साहब भी जय हिंद बोलते हैं, है ना। तो एक हाँ, हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं कि ठीक है, आज अगर आप नहीं भी समझ रहे हैं तो आगे जाके जरूर समझेंगे अगर आप थोड़े भी लॉजिकल हो। हाँ सही हो तो सही है, बिल्कुल सही बोले आप। एक ऑनेस्ट और एक लॉजिकल तो फिर सवाल ही नहीं उठता कि आपकी ये थिंकिंग चेंज ना हो। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एक छोटी सी और अर्ज करूंगा साहिल भाई, अभी मैं लेटेस्ट जो है मैंने पाकिस्तान का एक पॉडकास्ट देखा था मैंने, उसमें एक पाकिस्तान का हिस्टोरियन बैठा था। वो लिटरली मैं कह रहा हूँ कि वो इस्लाम को फॉलो करता नहीं है, बट उसने जो है सिखों के ताल्लुक से जो लफ्ज यूज करे, मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ कि मतलब पाकिस्तान को तो बोल रहा है, वो पाकिस्तानियों को बोल रहा है, मुसलमानों को बोल रहा है। वो तो खैर मुसलमान होने के कारण उसका हक बनता है बोलना, लेकिन सिखों के ताल्लुक से मतलब वो जो वर्ड्स उसने यूज किया, हिस्टोरियन ने, वेल नोन हिस्टोरियन है, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैंने इतना इंटेलेक्चुअल दानिश्वर होने के बाद भी अगर ये सोच है दूसरी कम्युनिटीज के लिए, आप इस्लाम को करीब करीब तर्क कर चुके हो, तो फिर आपके अंदर से रैशनैलिटी डेवलप कहाँ हुई? सही बात है। चले खैर, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल भाई, अमित भाई बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला मेरानी भाई। तो भाई लोग, जितने लोगों ने फिनेंशियल सपोर्ट किया है, आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। और आप लोग सिर्फ वीडियो को देखें नहीं, बल्कि उसको लाइक और शेयर भी करें अपने सारे दोस्तों के साथ, सारे लोगों के साथ। एक बड़ा धमाका होगा, हमारी बातें हर एक घर तक पहुंचेगी। कुछ बड़े लोगों से मेरी बात हुई है, डिस्कशन हुई है, लेट्स सी हाउ वी प्लान दैट। होगा जरूर, चैनल बैन होने के बावजूद भी लोग हमको देखेंगे, लोगों को पता चलेगा। किस तरीके से करेंगे वो अभी डिस्कशन करना बाकी है, लेकिन इतना तो है कि करना जरूर है। तो थोड़ा सा सब्र रखिए आप सभी लोग, और सभी लोगों को, जितने हमारे व्यूअर्स है, सारे फैमिली मेंबर्स है इस यूट्यूब के, सभी को इस नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। खूब एंजॉय करो, मस्त एकदम कल 31 मनाओ, सेफ रहो, दूसरे को परेशान मत करो। आने वाले साल में अच्छी अच्छी बातें जो है वो क्या क्या आप करने वाले हैं, वो अभी से प्लान करके रखो। फिटनेस को लेके, आपके एटीट्यूड को लेके, आपके करियर को लेके, बहुत सारी चीजें हैं। प्लान वेल जो नया साल आने वाला है, और उस हिसाब से फिर उसको इम्प्लीमेंट करिए, एक्शन में लाइए। थैंक यू सो मच वंस अगेन, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। और इसके बाद जो है आप लोग, अवैस भाई का लाइव चालू है, वहां पे जाके उनका डिस्कशन सुने। अपना ख्याल रखे, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा, कोई फिजा खान